and article intelligence, article influence. And here is a, for example, I have taken accounts of review, and here the percentile, this 87 is eigenfactor, and AI is 95. Well, anybody simply can put into this and go on for that. Google Scholar metrics, I'll be going online. SNIP, uh, FWCI, article level metrics, alt metrics, available alt metric sources. I'm sorry I'm running, but anyway, I'll be coming back to it with demo sort of thing. Plum metrics, so you should know about this plum metrics. Uh, this is a very comprehensive item level metrics that provide insights into the ways people interact and individual pieces of research output. There are 5 categories in that. How many times it has been mentioned in blog posts or news, etc., and social media, how many tweets, etc., citations in Web of Science or Scopus, usage, clicks or views, and library holdings, downloads, etc., capturing bookmarks, etc. Altogether, this plum metric, of course, is a commercial product. Uh, Skip this as well. Here is an example of nature, particular article. If you, quite a good number of publishers have started putting the different metrics concerned to that particular item, at item level, that article level. Here is an example of nature, for example. So many the article accesses, so 10,000 accesses. Web of Science 681 and Crossref 710. And this is the online attention is out of 1392, 643 tweets and so many blogs, etc. This also, reason why this is getting attention is to get an citation for any article. It takes an average about 6 months to 3 to 4 years, sometimes even more time. So just to have have the assessment of an impact of an article, these are the things which really contribute a lot. Book impact factor, author level metrics, like you yesterday you heard about H index and I-10 index. I'll be also going online and showing them as well. How do you improve the researchers H index, and how do you give the visibility to your research that you have, that Neeraj has already told yesterday. I will skip them, but I'll be spending more time with you people when I go online. Okay. And this also is called faculty scientist program, that is Irin's project of implement people. And one request to all of you is, if your institute is not included in Irin's project, please approach implement people. They will help you to create your profile. There, your institutional profile, department profile, individual author's profile, etc. You can have it. This is one way of giving better visibility for your research as well. Now let me spend some time on the research output of Rajiv Gandhi PV, that is RGPV, publication citations in the H index, as covered in Scopus and Web of Science. Please note that the Scopus as well as Web of Science, they use institutional IDs. For example, Rajiv Gandhi Technical University has got a Scopus ID of this one, and probably it has got one more, because somewhere I also found that it's also indexed as RGPV, and also it's indexed as RGTU. Here is the citation report of RGPV in Web of Science. In no way I claim that whatever I have done for RGPV is very exhaustive. True that I need to spend more time, I need to work only for RGPV. I'm using this data basically to explain you the concept, the way you can generate the reports, etc. That's all the purpose. Okay, you can see here RGPV publications, 634 publications have been included in index in Web of Science. In its H index, please remember it's 35, and average number of citations per paper is 9 points. This is pretty good. There's so many citations from so many. This is without self citations and citing articles. That means these many articles have cited these many times. Okay,
And here is the graph of citations year-wise. Here citations received by RGPU um, articles year-wise. You can see here 2020 is the highest. Of course, 2021 still they have to get. Even 2020 may go up. That's because 2020 citations are still getting accrued. This is the RGPV citation report as generated by Scopus. Yeah, it is from 2016 I have taken. You see here, beautiful graph is there. Uh, and here is the H index graph of RGPV. That is H index of RGPV is 40. Okay, that's nothing but the number of citations are graphed against the number of documents. That means the number of documents, that is number of documents published by RGPV and number of citations received by RGPV publication. Wherever it crosses, that is in between, that is nothing but H index. Yesterday, Dr. Neeraj tried to uh, uh, explain you what you mean by H index. Anyway, today what I will do doing is think that you have heard from here and you have heard left it from this side. When I go online, I will try to make it much more clearer. When I go visit Web of Science, there I will be really explaining what do you mean by H index, etc. RGP publications 851 year-wise as per the Scopus. This is the year-wise publications of RGPV. And these are the citations, 7,630 citations received by so many publications of RGPV, the same graph. Okay. Uh, Here are the top authors of RGPV, Trivedi P, and the top, Karthikeyan, etc. You can see here, it also includes co-authors. You can't distinguish. The only thing is I need to visit this fellow's site and then decide that it is not RGPV author, I have to remove it. So instead of that, I have put a co-authors list as well in that. RGPV collaborating countries. These are the that 851 publications uh, are uh, published in collaboration with many other authors serving in different institutions in the world. For example, United RGP has published 22 articles as per the Scopus in collaboration with some authors in US. You can see here, that is US 22, Portugal 11, Saudi Arabia 8, etc. One thing you can see here, I'm not finding China here. You can see here, US, Portugal, Australia, South Korea, Ethiopia, Indonesia, etc. I didn't find China at all. Now you see the next slide. These are the citing countries to RGPV publications. Who is number one here? China. So China is number one user of RGPV research. This is something which probably RGPV authorities and the research director and the concerned authors, HODs, chairman, etc., have to look into it and see why China is leading user of RGPV publications. If I go online, probably yeah, I can as well click onto this and take out the list of the articles published by China authors who are citing RGPV publications, and that can be made use basically to establish further relation, not just China, but it could be other countries as well. You can as well try to see for what purpose they have cited RGPV publication, whether it's a new area they are running into it, or whether they are making use of my own work and it's just continuation of our own work. In that way, you can have an assessment and try to establish links with them for collaborative research. And that's one way of increasing your research output. It could be any university, an individual, or a department, or anything of that kind. Now, the same thing holds good for the institutions. These are the institutions collaborating with RGPV for publishing. Maulana Azad, the National Institute. Uh, this is some Barkatullah University, Govindram, so something of that kind. Different institutions who are collaborating with RGPV for publishing.
These are the institutions citing RGPV publication institutions. Earlier, you saw the countries citing. Here, you are finding the institutions citing. And if you feel that there is some institute which is good, wherein we can have links with them, we can try to have the top authors within that and try to establish links with them and try to go for collaborative work with the concerned author or the concerned department or the concerned institute as well. Funding sponsor. This is RGP funding comes from CSIR, AICTE, etc. How many? 13 of publications of RGP has received CSR funding, the 10 from AICTE, etc. Well, this may not be exactly correct because unless the authors mention the funding source for that particular research work, it will not be depicted here. But these are the citing documents for of the funding sponsor. Suppose you are working in a particular area and you feel that it's difficult to get the funding within the country. You can as well go for international funding agencies like National Natural Science Foundation or something like that kind. You can approach those as well. It, just because it is a foreign funding agency, it doesn't mean that they will not give funding for Indian work. No, that's not the case. There are quite a good number of international funding agencies who are ready to support anybody's research work, irrespective of the country. One should try to tap that sort of sponsoring agencies. And yesterday, Mr. Mohit asked one question: what's the impact of publications of the COVID? I don't say, but certainly I can say that COVID-19 had a big impact, not just on review process, but as well on the uh, research work as well. It has uh, given a big momentum related to the COVID-19 research, be it medicine, be it virology, be it biochemistry, be it economics, be it any other discipline for that matter. It really it is more. But the some of the problematic aspects as well I can see. Uh, Rapid review process is taking place. It has been assessed that almost the uh, review process is taking place just 20% of its earlier timing. That means it doesn't mean that quality is let down. There could be some such cases as well. But definitely, predatory publishers are taking the undue advantage of this COVID-19 situation. We have to be a bit careful. To conclude, uh, an Albert Einstein's statement, evaluating research is difficult. Not everything that counts is countable. Not everything that is countable counts. Albert Einstein. But this is my statement. But is a partial portrait an invalid portrait? See, what we use for evaluation the publications, the citations, H index, etc. It is a partial portrait. But in the absence of these, it's very difficult to evaluate any quality or the impact of research. So in that way, it's difficult question to answer. So this particular slide, I have been using it for the last, say, 25 years or so. Just to put you on the lighter side, the definition of conference report. Conference, a gathering of important people who singly can do nothing, but together decide that nothing can be done. Read alone. Thesis. The average PhD thesis is nothing but a transfer of bones for one from one graveyard to another. Well, this is not hold. This doesn't hold good in anymore now because UGC has taken a lot of steps to curb this sort of transference of bones from one graveyard to another graveyard, especially making it compulsory for undergoing the plagiarism checking, similarity checking. And college definition, college is a place where a professor's lectures notes go straight into the students' lecture notes without passing through the brains of either.
I'll be giving demos of this immediately after the presentation. Uh, so that ends the um, this one. Uh, Mohit, how much time I got now? Sir, this was so interesting. I just could not interrupt you. So Yeah. I know you asked me to tell you, but I was hooked on to your presentation. Mm. So Okay. we still have time, sir. We are at around 11:25. Let's spend next 10-15 minutes on the demo. It will be nice for Demos. everyone to see, sir. Okay. Good. 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 Uh, I'm. I'll be starting the Simago journal ranking. You can see here. Uh, you simply put Simago, you'll get into this site. This is open access. You don't need anybody's credentials. Simago and journal ranking as country ranking. Journal ranking, I will click onto that. You can see here. Uh, hmm, the all subject journals are listed, and not just journals. It also covers all types. So I will restrict it to journals. Okay, so it has listed 26,201 journals. You can make it to restrict it to open access. You can make it only Web of Science journal, but let's not do that. Let us concentrate on the subject areas. So here are, you can see here, these many journals, 26,000 journals are arranged in the decreasing and decreasing value of SGR. SGR is the same thing, whatever Dr. Neeraj mentioned yesterday. SGR value, if this SGR value is this CA cancer journal is 88 point something, and that of this one is 41, like that it is in the decreasing order of this. It also can be arranged in the decreasing order of H index by if I simply click on to H index, it rearranges the entire list of these 26,000 journals in the decreasing order of H index. And other criteria are here. Here is one criteria, that is sites per documents per 2 years. The definition of H index is almost the same thing, but still the way Web of Science takes these citations and is a bit different. Sometimes, for example, Web of Science will not cover the editorial and obituaries and that sort of things, but other people, they may use it. That sort of things. That's why there will be slight difference of impact factor, whatever I see out of this. So what I will do is I will go for engineering journals. I know quite a good number of you are from engineering background, so I will select engineering. Okay, I am selecting the engineering subject. So uh, there are how many journals? Uh, 2,906 journals, but all aspects of engineering. Then I can restrict to aerospace engineering, architecture, or automotive engineering, or some other one, civil engineering. Okay, let me start with civil and the structural engineering. How many are there? 299 journals are there, which have been listed with the SGR value. You can see here, applied energy, then transportation research, etc. They have got better SGR value. And suppose you want to publish in any of these 299 journals, you can select any of them, and then if you click on to this, it will give the biodata of that particular journal. So now what I will do is I will click on to H index. Now you can see here applied energy is on the top. I will click on to H index. It will rearrange that list. Now on the top, water research came up with the 285 H index. Likewise, if I click onto this, it's almost like H index impact factor itself. It's not impact factor because it is a copyrighted thing, so we can't say impact factor, but almost we should say it's impact factor only. Okay. Now, what I will do is this is 299 journals covering all the regions and all the countries. So what I will do is I will click on to this.
and you can select any Asian region or any country. For example, I'll go to India itself. Okay, uh, India. How many journals? It has listed 6 Indian journals which have been included in SIMACO journal ranking list. That means these are all covered in Scopus. That's very clear. So you can see Indian map here, Indian flag. So if suppose if I want to, I came out from 26,000 to 299 to this list. Okay. Now I want to see whether I can publish in this. So what I can do is I simply uh, click onto this. This will give the biodata of this particular journal. You can see here. Uh, International Journal of Civil Engineering and Technology. It is of course discontinued. You will have to go for some other journal. Anyway, just for the sake of demo, you can. This is IAME publishers, and if you can also, there will be a link for the website as well. If you see a link, see the other title. Okay, that's then you can visit that website and see whether that journal suits your requirement, whether it suits your requirement from the point of view of quality of your journal, your article, or from the level of your article. Sometimes if you are a researcher, a PhD student, you may like to go for little lower level. Or if you are an experienced teacher, you can go for still higher level. You can go for international journal as well. Okay, that's what happens. Okay, this is about SIMACO. Now I will go for Google metrics. Okay. Mm. Uh, I have come to Google Scholar. You can see if you can create your profile. Yesterday, he was Neeraj was mentioning about you can create your profile. If you click, it will do that. But unfortunately, I came out of my this one. Okay, I'll do that uh, so that it will throw up a ready profile as well. I have logged on to my email so that I can make use of that. So I'll just click on to my profile. You see here what it does. It has thrown up my research profile. The IRN is a pretty old one. When I was at the University of Mysore, my publication history is there. Number of articles, number of citations, the H index, the I-10 index, number of citations. All those things are can be find here. Okay. Uh, Anybody can create. Even if you have got one publication, you can create your profile. Then you click on here, you can go for advanced search, or let me explain first metrics. These are Google Scholar metrics covering all subjects. Mm, H5 index, H5 median. I will not explain this. You have to understand that anyway. There's not much time. This covers all categories. You can select the subject categories. Say I will go for say engineering again. Click on to engineering. It will list out the top engineering journal, the top of it, with H5 index of 299, advanced material 273. It goes on like that. So you should go down and down and see where your article can fit into this. Take into account of this H5 index. In that way, we cannot totally undermine the importance of Google Scholar at all. H5 index is also quite good. Okay. And now, what I will do is I will go for advanced search. I'll go for advanced search. Uh, I will search a topic. Mm, Sustainable architecture. I'm searching it. It's as an exact phrase. Okay. I can put any word, but where do I search? Anywhere in the article, or
I can also restrict it for searching only in the title of the article. I can journal, etc. I will not do any one of them. I simply go for searching. See, it has thrown up some 27,000 items. You go on seeing this. I will go for this next page. Uh, One thing I would like to say that whenever you search Google Scholar, if there is a link here, it means that for this item, that PDF, you can have the PDF by visiting this Berkeley EDU. So likewise, you can do that. Uh, this is a book item. I will concentrate on some journal item, whether I can get some journal item. Sustainable architecture. Oh, here is a book only. Mm, okay. Uh, Here is some Wiley publishers, this one. Okay, let me click onto that. Okay, this is um, the Wiley item. If I want to have PDF, probably I may have to shut down some amount. So what I can do is I can simply copy the uh, link address, and now I'm going to talk a little bit about the controversial item, Sci-Hub. Sci-Hub, we have been discussing about Sci-Hub for some time. For the last maybe 2 to 3 months, we have been discussing about that. I'm one of the biggest supporter of Sci-Hub. Uh, this site is created by Elbakin, one young lady at that time when she created. She was just 28. Uh, and it's so popular in the world that it's very difficult to curb this attempt at all. Even quite a good number of US universities are making use of this. And in India, the LCBR, American Chemical Society, etc., they have pulled this Sci-Hub into the court. Still, a lot of things are going on. I don't know what's going to be this thing, but still, it's working. I don't say perfectly. Sometime today morning I was trying. I could out of 5 6 items I could get the full text out of 5 or 6. Some at least 3 full text I could get. Just now I got a Wiley item. I copied the DOI number. I am going to just paste that DOI. Mm, I'm just trying to search that. Yes, this article has come up. This is Wiley item. You would have given 30 to 40 euros or dollars or something like that. I could get the full text free of charge. You can simply download that and have it. That means still SciHub is working. Okay, that's what you can debate on this, but I don't have much time. Like, if there are any questions in the later part of in the discussion part, I will be happy to do that. Now I will go for a most important demo. That is, uh, I'll go to Web of Science. Uh, See, I'm using CSR NAL's credentials, but I was responsible in setting up quite a good number of items at NAL. I was heading this NAL Information Center almost for 19 years. Okay, I'll be, I can as well use Scopus, but I will not do that because I have already shown the details about RGP, PU publication output and Scopus citations, H-index, etc. I'll go to Web of Science. Why I'm using Web of Science is basically I want to explain you the concept of the H-index. I'm sure most of you being from a library side, you are already familiar with the what you call the H-index, but still I thought I should do this. Okay, I'll be doing that. Now I'll be using, I'm using advanced search. I can go for basic search, author search, cited reference search, structure search like that. You know how I will be doing it? I'll be using the CI, that is city equal to Bhopal, Phopal,
I'm using Bhopal. I'm starting from then that, and I can use it my own technique. That somehow I felt that I should start with Bhopal itself. So I'm starting with Bhopal. There are 11,623 items published by different institutions in Bhopal. Let's see what are those. See here, on the left side you have got year-wise distribution, uh, the Web of Science subject categories, then document types, article, proceedings, review, etc. Then organizations enhanced. That's Maulana Azad National Institute of Technology, something like that. SER, then Barkatullah University, and many other things. Okay. Then I can as well go for. Can see here. I'll be coming to this back again, but before that, I would like to show something different thing. Okay, you can see here. View options, all options. Hmm. The countries. See, I'm clicking onto this. Okay, you can see here India, USA, England, etc. If I click on to more options, it will list out the different countries. Um, these are all the countries with whom RGPV PU has published articles. But with USA, it has published so many like that. They are all there. For not RGPU, I'm sorry, it is for the entire Bhopal. Okay. Now I'll go to RGPU and then only come describe other things as well. That would be better. Okay. I'll go for more options. Go for RGPV. I will arrange them in the alphabetical sequence. RG, Rajiv Gandhi Technological University. Okay, I will select this and refine. Rajiv Gandhi Technical University. And this will be the last demo of this particular session. So 632 items it has thrown up. I can further refine it by using so many techniques. That's a different matter, but I'll try to show this. You can see here, say if I use the same view all options and go for country, it will list out different countries with whom RGPU has got Rajiv Gandhi Technical University has got publications as collaborating institutions. Okay, you can as well do that. But I'll show something different here. Create, just here on the right side of that, you will find create citation report. I'll click onto that. See what will happen. See here, it has thrown up the screenshot I showed you later on. The 632 publications, 35 is the H index. Please remember, H index of Rajiv Gandhi Technical University is 35. Remember this is 35. Okay. I'll go down, just see here. I'll go down. This particular item of Rajiv Gandhi University has received 292 citations. 292. If I click onto this, it will list out all those items citing this particular item. In a way, this is also very good way of doing the literature search. You can go on building your literature based on the citing items. I am related to, say, Chowksi. Chowksi is my friend. So Chowksi is related to Mohit. In that way, I go on establishing the link and try to bring the related articles together. In that way also you can build up. Okay, that's a different aspect as well. You can see here these are
These RGPU publications are arranged in the decreasing order of number of citations, which is 292, 218. It goes down, 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 down like that. This is the first page. I will go to third page straightway. Uh, I'm on the third page. This item has received 58 citations. The last item here has received 41 citations. So remember, I have told you the H index of Rajiv Gandhi Technical University is 35. Okay, let me go to the next page. See here, 40, 39, 39, 37, 37. Immediately after this, a line which was not there all along, all of a case, sudden came up. What's the number here? 35. What's the number here? 37. That means 35 out of 800 and some 600 and odd number of publications have received 35 or more number of citations. Always this number should be either equal to serial number or more. This this is 37, but that's not the H index. So H index of Rajiv Gandhi Technical University is 35. Out of say 600 and odd number of publications of Rajiv Gandhi Technical University, 35 articles have received either 35 or more number of citations. The first paper had received 200 and odd. The next paper received 220. Like that it came up. So 35th article has received 37 citations. Suppose in the year, if days to come, this reaches 36, the H index of Rajiv Gandhi University becomes 36. So this comes to the end of this one. Here I would like to say a few things. In case of, if I were to give the demo, I would explain of Scopus, I would explain that, but I will extemper just like that I can. When I search Rajiv Gandhi Technical University for in the Scopus, what it does, it goes one step ahead compared to Web of Science. It gives the value of both covering all the institutions under Rajiv Gandhi Technical University. That means it's affiliated colleges as well. It takes up. In that case, it comes to a few thousand. But if you take only the university campus publications, it comes to somewhere around few hundreds or something like that kind. But the H index as per the Scopus is 40. That probably puts an end for my presentation as well as demo. Mr. Mohit, I think I will stop this one. Yes, sir. If you Uh, could please start your video once, sir. yeah, I will click on to that. I will. Because I stopped your video because there was a little disturbance in the noise, so I thought of saying Okay, fine. Okay, yeah. And after that, the voice was very clear. So okay, fine. this was a really, really good presentation and a live demo, sir. The concept of H index, I'm sure Dr. Neeraj Chaurasi also covered very, very well. But having seen it live in action certainly helps, and I'm sure the concept must be clear now to all the participants on how H index is calculated by these platforms. We are already over time right now. So what I will do is, and you have the next session also, Yeah. right? So what we will do is, we will just, Cut short yeah, the. we will take a very short break of about 15 minutes. So it's 11:50 right now, and we assemble back at 12:05. Okay, so Okay. 5 minutes past 12, we will assemble again. To the participants, please take a short break, have a cup of tea, have a glass of warm water. And if you see in your chat box, I have already posted the feedback link for this session. It is again, I cannot stress it more, but this is very, very important. Please fill out this feedback form and mark your attendance. We saw yesterday also
some participants who even attended the session did mark their attendance. So please mark your attendance. It is important and a part of AICTE guideline. This session was so well delivered. I am sure the participants must be having a few queries. Even I have some. So what we will do is we will come back. We will conduct the next session also, and we will take up queries in one shot for both these sessions. So next session is by Dr. Gaudar, and I am sure in this session you all must have seen how well researched his talks are. So we look forward to having you again, sir, after 15 minutes. So I'm so sorry. So we will start sharply at 12:05. Again, the feedback link is in the chat box. I request all the participants to fill that out. I also going to run for a glass of water and join you back at 12:05. See you later, guys. In the meanwhile, if any of you have any questions on this talk, you can please post them in the chat box. I am opening the chat now for everyone, and you can type in your queries in the chat box, and we will take those questions up after the second session. So you have 15 minutes to take a quick break, fill out the feedback form, and ask whatever queries you have in the chat box. We will connect again in another 13 minutes from now. Okay.
Yep. So we are back. I hope you had a nice
short break, everyone. So let's pay attention to the next talk. We take these breaks so that your attention span is revived and you are able to focus again on the talk. Dr. Gowder, can you just do a mic check with me once? I don't know whether. 1 minute. Yeah, Can you hear me I now? see you. Yeah. Fine. Loud and clear, sir. So, yeah, the platform is yours, sir. Okay. Shall I start the screen? Next screen. Yes, yes, sir. Please go ahead. Let me see the slides. Yes, sir. Okay. Uh, we have lost some time. As a result, probably I'll have to skip quite a few slides at least. Here also, I would like to give stress on the demo aspect of it. As the title indicates, e-resources for academic and the research excellence with special reference to COVID-19. With special reference to, I can take in two sense. One is because of the COVID situation, we are not in a position to open the libraries for some time, or we have to restrict so many things. Because of COVID-19 situation, we have to encourage more and more online access or the remote access on which the present training program is concentrating. That's one thing. The other way of taking it is all of us are working in different institutions. It could be engineering, it could be medical, it could be management, it could be economics, something like that kind. And if we are required to search the literature on COVID, what is that we can do? What are the sources for that? So we can take the topic in two, three manner. So anyway, I'm going to take a combination of all these things. But as I did earlier, I'll be running it a bit fast. Here is a screenshot of MIT research guides, which is put up by libraries. MIT, you can see here. You can go to MIT research guides. You can see subject-wise research guides. This is one very good way of doing it. Only few Indian universities have done that. You can go to engineering. In that, it will list out the databases. It will list out the different kinds of full text databases or anything of that kind. It's a good guide. Okay. Uh, Toronto Research Guide. Naming COVID, yesterday I have spoken, but to just summarize, the COVID-19, that is coronavirus disease, which appeared in 29, it only means that. Uh, See, when we are required to search literature on COVID-19, we can use COVID-19 as well as its virus name SARS-CoV-2. But apart from that, there are a good number of synonym sort of things which I have listed in the next page. But we are not supposed to use this, but whether we use it or not, people have already used quite a good number of publications have come mentioning Wuhan virus, China virus like that. So here is the list of synonyms. I have used actually a search string using the R operator, COVID-19, this one in that way. That's Wuhan coronavirus, Wuhan pneumonia like that. We can use different synonyms and the search string as I mentioned. And novel coronavirus resource directory, this is set up by Elsevier. Resources directory it has set up. Here is the list of different databases listing the number of items on COVID-19 as well as SARS-CoV-2. Google, if I search blindly, it throws up 32 million. Likewise, Google Scholar 3.56 million. Different databases are there. Even for example, Science Direct, uh, which throws up 39,000 items, and out of which 22,400 are select ones, which they keep it open. Quite a good number of
database people have thrown up the literature and COVID open access. In the normal case, they don't usually do that, but it is a special time, a critical time. They want to encourage the research in the COVID area. That's why quite a good number of publishers, they have thrown open even the copyrighted items in under open access. I have given the list. Even the IEEE Explore has listed quite a good number of items. NC-based RCOE resources. This is a very good source for research area. You can see sequence things, nucleotide, these things, records, and PubMed 95,000 PubMed Center, which gives up full text, which gives 99,000 items. If you simply search PMC PubMed Center, you can access these many full text items. PubChem, this is very useful source for pharmaceutical industry people, chemistry people, searching literature on COVID-19. Okay, e-resources for the Indian academic, this also I'll skip. You are familiar with each of the Sindhu resources, I'll skip this as well. These are the, this was the case earlier with Show the Sindhu, but due to the lack of funding, quite a good number of publishers' resources have been discontinued. For example, Elsevier, Emerald, Nature, all these things have discontinued, and other databases are very much available. Science Direct, more than 2,000 titles it used to be there, but more than 1,000, not 2,000. But total number is more actually. I will visit this site and show how in the COVID era, even though we don't have access, what are the options for us. Springer Nature, I will do that as well. ACM Digital Library, IEEE Explore, ASCE. I'm running, but anyway, I'll come to the demos of some of these sources at least. ASME. This is JGate. JGate, you have got access. Those who are in Show the Sindhu, they have got access, access to JGate. See, you can see here it covers something around 52,443 journals, out of which 51,000 and odd are peer-reviewed journals. Indian peer-reviewed journals number is 5,196. See, suppose if you are searching engineering, these are the number of journals world over, and these many journals are open access, covered by JGate. That means if you are accessing JGate Plus, if you are searching JGate Plus, it's as good having access to 2,343 or even more journals at one go searching, because each individual journals is, although it's open access, there could be, it's difficult to have the search mechanism combining so many journals. That way, JGate is very helpful, even Indian journals. So information technology like that. No, Pirate Bay of Science, I have already given the demo of that, so I'll skip that. LibGen, this is another controversial one which is facing the court problem now. Book 5, Jet Library, world's largest ebook library. This year also you can get a good number of ebooks in the open access. This thing. You can search by subject, you can search by many ways. PDF Drive, this is a beautiful source. It has a very good search mechanism. You can as well make use of that. Simply put PDF Drive in the Google and search for the books of your interest. Open access sources for ETDs. Well, yesterday I think somebody spoke on this open access resources. Somebody, I don't know, I attended partially, but anyway, uh, this is a good source. Bilateral Academic Search Engine base. Uh, it covers something around 263 million items, and out of which more than 10.8 million are theses. So that means if you are searching a base, it's as good searching these many items. If you want to search thesis submitted to various universities in the world, more than 10.8 million theses is a very good source. Likewise, our Indian thesis, this Shodh Ganga is there. I don't have to specifically mention, you are all familiar with that. Other sources of ETDs are DART, NDLTD. Then for open access journal, DOAJ,
which covers something around 15,000 journals. Uh, Archive Arc, Google Scholar, already I showed you the demo, Google Books, Project Gutenberg. This is a wonderful source for the books. In fact, the number is more now, more than 60,000. Uh, there are good number of sources for the books as well. But one you should remember is in the pandemic situation, if you want to, suppose you want to help your students with the courseware, the this is a very good source, MIT Open Courseware. Likewise, like our own NPTEL is there, almost it's the similar line, but this is better organized at different level, PhD level, master degree level, and undergraduate level like that. DOAB, Director of Open Access Books, Internet Archive, I will be giving a demo of this as well. eFunda, Engineering Fundamentals. This is a very good source for the students, especially undergraduate students. Very good source. Engineering fundamentals. Go to the materials, you go to the design center, you go to the process, you go to the unit conversion, formulas and mathematics. A lot many things are there in that. For beginners to find what is a particular thing, what is periodic table, or what is plastic design, what is gauges, springs, etc. etc. It's a very useful tool. Uh, Patent databases, USPTO, those who are looking for reports, NTRS is a very good source, and NTIS is also a very good source for that. There is a good source for United Nations data, say country-wise data of different kinds is a very useful one. NDL, yesterday somebody showed about that as well. Indian e-learning platforms in the research facilities. ISTM, this is a source facility available at the Indian Institute of Science. This is Indian Science, Technology and Engineering facilities. So you can search or you can select and log in. You can see what sort of instruments are there, equipments are there, a lot of things are there. You simply visit this ISTMs, you search, and you go to this. You can make use of those resources as well. Swayam already discussed yesterday. eGAN Posh, IGNOU source. NPTEL, you are familiar with that. This is one good tool, engineering virtual lab. See, there are 100 virtual labs and 700 experiments. What sort of things you can have? You can have broad areas of virtual labs. These electronics and communication, computer science, electrical engineering, mechanical, chemical, and a lot many things are there. So, good number of institutions, especially most of the IITs and some NITs have signed an agreement with these people that they will be making their facilities available for you to carry out your experimental work. Vidyamitra, this is a common search engine for most of the Indian uh, e-sources like the Vidwan and many other sources, NPTEL, etc. For example, NPTEL, PG Pathshala, a lot many things are there in that. It's a single search engine for so many sources together. Mendeley is okay. Skip. Okay. I almost come to the end of PowerPoint presentation. Before I end up, I would like to um, give a message. Strengthen your immune system. Your guide to the ultimate 2021 New Year's resolution. That should be your New Year's. In fact, we are a bit late already. New Year has already started. Stay calm. Don't stress. Wash your fruits and vegetables properly. Practice meditation. Take vitamins, etc. Get enough sleep. Eat healthy. Avoid alcohol. Drink water. And thank you for that. What I will do is once again I will go for online. That's the reason I was hurrying. Uh, mm, Google Scholar already I given. I will go for BASE, BASC,
based bilateral academic search engine. Yeah, I'll go for advanced search. I will search for something. Uh, yeah, let me go for digital library. So I told you that it gives access to more than 200 and 2000, 200 and odd million items. Okay, so I am using the digital library in the title area, and I'm not selecting any type of document to be searched. I will go for all. Maybe uh, you can restrict the search to open access. You can go for content provided worldwide or only Indian or year publication year, etc. You can do that as well. So I will not do that straight away. I will go for searching for the digital libraries topic. So there are 1,200, 12,000 odd number of items on digital library. What sort of things are there in that? You can see here, you can limit it to subject areas within that. Okay, library and information science, electrical and electronic engineering, etc. Or you can go restrict it to a particular language or the content provider or document type. Let's go for that. Uh, let's see, unknown book part, report, thesis. So let me click on to the thesis. 186 theses are there out of this 12,000 and odd on digital library. It has thrown up 186 hits. You can see these are all the theses. Thesis, it doesn't mean that it's only PhD thesis. Thesis could be at undergraduate level or postgraduate level or the PhD level. Anyway, that will be clearly mentioned in the part of it actually. So let me try this. Okay. Okay, so this is Brunel University, London. See here, the details are there, abstract is there, and if you want full text also, yeah, here is the link for the full text. Simply click on to that. Other metadata are here. So I will click on to this. See, view open. Yeah, it has started downloading. It takes about 2 to 1 or 2 minutes or even earlier to that. See, this runs to about 392 pages. So you have got access to thesis submitted to various universities in the world. How many? 10.8 million items. So you mention any topic. If you feel that nobody has done research on the area of your interest, you will find something here definitely. Okay, that's about uh, base. Let me go to next item. That's Internet Archive. Internet Archive. This is one of the biggest digital library of the world, uh, which gives access to millions and millions of web pages. It could be uh, the web, or it could be text, it could be films, it could be audios, videos, albums, and children's books, and lot many things. Okay, see, if you go down, you'll see thousands of collections are there, community collections, American libraries, a lot many things are there. Okay, hmm. Uh, so without spending more time on that aspect of it, let me straightway search for a topic. I'm going to search. Let's see, for example, uh, I'm looking for something that history of Mysore, history of Travancore, or I would like to have a look at a book on Origin of Species by Charles Darwin, or I would like to have a look at the Principia Mathematica. Principia Mathematica, you know,
You are familiar with that, okay? Being engineering student, I'll mention Principia. It's already there. Principia Mathematica as a title I am searching. Okay, I will you can search any of the fields for searching. That's a different matter. I make a quick search. Let me see how many items are there. 93 items are there on Principia Mathematica. So English language items are there. Original Principia Mathematica also you will find. I will click this one for example. Um, 1 minute. I'm clicking onto this. I opened the book on Principia Mathematica, that this one. You can flip the pages. See, I can make it a full page. Uh, then I can flip the pages. Okay, I can also read it aloud. Please listen to the reading. I don't know which is the language. Um, Whatever is the language, it may read in the same language or something of that kind. Okay, that's about Internet Archive. Let me go for the other one. I'm going for next source. I'm running because I want to show at least a quick look at a few of the good things which if you are not familiar. So the directory of open access journals. This has got a redesigned website. Some earlier it used to be in a different way. It covers something around 15,000 open access journals and so many articles. And you can search journals or you can search articles. Let's search articles. Hmm. Okay, signal processing systems. Straight away, let me search that. Signal processing systems. Okay, I'll search for that. Topic I have taken as signal processing system. Uh, More than 3027 items are there. You can happily download the full text because whatever you are finding here, because it itself is a directory of open access journal, whatever you are getting here, you are sure to get the full text of them. The subject wise, so you can further refine. You can do many in many ways, you can do that way. So I will not do that. You can select anyone, but straightway let me get into the full text of the first item. Okay, an ML based radical validating. If you simply click on to the DUI here, it will take us to the full text. Further to PDF, etc. There should not be problem at all. Yeah, download PDF. So I will not do that. If I click on, it will throw up the PDF. So now I will go for project Gutenberg. Rather, I will go for Science Direct. Science Direct. Because Science Direct is a commercial database, but still, in the pandemic situation, we can have a lot of items in the open access. Not only that, most of the publishers have got their own open access policy. Recently, Elsevier has thrown up 161 journals in the open access site. But other than that, there are a good number of open access models. It could be gold open access, it could be green open access, depending upon the sort of way they do it. There are hybrid open access journals as well. What happens? Suppose in a particular issue, if it publishes something around some 20 articles, out of that, suppose six are against the article processing charges. So what they do is those six articles they throw open the open access. So what happens? The system will take care of the open access aspect of any of these publishers. Whether you search uh, JGate or whether you search PubMed or whether you search any other databases, automatically the concerned items are listed in the open access listings. So we can do that as well. So Science Direct, what I will do is
I will go for advanced search. Let me go to advanced search. I will search for some topic. I will go for digital signature. Digital signature. I'm searching for digital signature. Being advanced search, you can do many things. So straight away I will search for that. I am not here to teach you the search techniques. You can see here on digital signature, there are 59,689 results. If you go to this entire list, you can see here, this particular item shows up the download PDF. Whenever there is a download PDF, this only means that you got full text access to it without paying anything. Okay, you can do that as well. So I'll go to the, see, there are quite a good number of items which are in open access. You can as well make use of that. But the thing is that we as librarians, we should know that these, even the commercial databases, um, through their database searching mechanism, you can take out the open access items as well and make it available for the benefit of our users. So on the other hand, suppose if I want to have this item, suppose this doesn't have the PDF access, you can just click onto that. Simply, you know, again here, just copy the DOI link and go to SciHub. Or if you want to get access, you click onto that and you end up in paying some amount. For example, if I click onto that, it will show up how much amount access via your institutional email or some other that's way you'll have to pay the amount and get it. Otherwise, simply copy this and paste it on SciHub. If it gives, fine. Earlier, almost the results used to be there almost about 95 to 97%. But now, because of court restrictions, etc., it has come down a little bit. What they do is they give the edited, finally accepted copy they are giving. Even the SciHub throws up many times finally accepted. Otherwise, also you'll find those sort of items in the different institutional repositories as well. Now I'll go for Springer. Sorry, I'm not spending more time on each one of them. Springer link. This is a very interesting site. You can see here. I would like to search on same thing, digital signature itself. Let me search on that. I'm searching on digital signature. You can see here, you can browse by discipline. If I simply click on to engineering without even putting, I'm just copying this. See, for example, if I click on to engineering, okay, uh, I have not selected any types of documents. There are almost nearly 1 million items. Nearly 1 million items. Out of that, is so many chapters are there, so many articles are there, so many conference papers are there, so many books are there. So let us see how many 30,000 books. Okay, let me click on to this 30,000 books. So 30,000 books are there. Okay, these many books are there. They're all Springer books. You just see here, include peer review. This is not known to many librarians. You just you see this. This is very important. You just click onto that. Let's see what will happen. 145. That means out of those many items, 145 books are in the open access. That means you can have full text of all these books. Many times, even there is a 21 books which is also in the open access. Mesoscale analysis of hydraulics. You can happily download these items. You can, if I click onto this, it will throw up the contents page of that.
Then you can download item by item. See, this is how you can do. See, we should know that even the publishers, commercial publishers, have made many things available in the open access. Okay, I'll go back. Um, okay, now I'll go to chapters, for example. I'll click onto the chapters. See, you can again click onto this. Out of 500,000 chapters, let's see how many are in the open access. Ninth, nearly 10,000 items are in the open access. So we should know this sort of things. Okay. Now I will not bother about that. Let me search. You can select the journals. You can select the books. You can set series, protocols, and reference books, etc. But now I will search the topic: digital signature. See, the same thing holds good. These 69,000 items are there on digital signature. Out of that, now I'll click on to the open access content of it. You can see here 19,000 items are open access on digital signature. And out of which so many chapters, so many conference papers, so many articles, so many protocols, so many books. At least one book is in the open access on digital signature. So it's a wonderful thing to make use of that. Being librarians, we should know that we are in a position to give our users these things, the things which are not known by the users, many times not known by us. We should try to make use of that. Now the last, Mohitji, how much time I got? Only one presentation demo I would like to give. Shall I do that? Only. We will take the break at around 5. So after 10 minutes. So No, last demo. Shall I do that? yes, sir. Please, sir. Please, sir. We Last, have time. We have time. last demo. Yeah, please, please. I'm going to JGate Plus now. Most of the people who are attending this program have got access to JGate. If you are having access to e-Show the Sindhu, okay. I am straightway logging on to this one using my own credentials. CK, that's my own credential. You should know that JGate covers 52,000 journals, covering all subject areas. So let me show up how it works. You can see here. Uh, how many items are there? 58,000 items. But it includes all kinds of documents. So let me select only the journals and apply the filter. Let's see how many items are there. 52,000 journals are there. Out of that, how many are peer-reviewed journals? You can as well do that. I can select only peer-reviewed and scholarly journals. Out of that, I can only select only Indian journals. I can as well do that. Uh, I can as well do that. So I am restricting the number of journals to Indian peer-reviewed journals only. So I will apply the filters. So 5,196 items are there, peer-reviewed journals, but Indian, only Indian. And let me see, out of that, how many are in the open access? Okay, I'll put open access, and I will remove Indian. Totally, how many open access peer-reviewed journals are there? Um, See, 28,000. That means if you have got access to JGate Plus, it's as good having a database of 28,000 journals with access to the full text. So these are all searchable. Um, what I would do is I will go and go for advanced search. Uh,
I can select search journal articles, thesis, and a lot many other things. Let me search same digital signature. Let me do that. Digital signature, SIGNATURE. I can use all our title only, our key title, keyword, etc. I'll search title, keyword, and abstract to make it little more relevant. I can select the areas also. Let me not do this. I will go for engineering and social sciences and management, etc. So, uh, and this also has got one special feature of directly, if you click onto this, it will throw up the full text, not full text, the items on COVID. See, COVID coronavirus. If you click onto this, it will throw up all the articles who have been indexed in JGate at one go on coronavirus. Okay. Anyway, that's a different matter. Most of the databases are doing this job. JGate is not an exception. Okay, I'll be searching on digital signature using title, keyword, and abstract area. Let me search for that. Okay. How many items? This can be further refined using the subject categories. Uh, okay. Uh, it has thrown up only those two areas, 3,600 odd items, out of which full text access is there for more than 2,000 items. So as good when you are searching for JGate, it's as good having the access to so many full text items at one go. So you can you are seeing the graph here. These are the journal wise items out of this all these 3,600. If I click on to this one, it will throw up 111 items covered in this journal. So I can as also use this subject wise breakup of these 3,600 odd items. So especially for doing the literature, this you can put this sort of graphs as well. The journal wise or subject wise, you can as well do that. So if I go down, the items are listed. So I will click one of the item here. So the other details are there. Most important is this. You can see here. Uh, the Probably this is the only database in the world which gives SGR value and H index of that particular concerned journal. That means if there is a SGR value along with the metadata given here, it only means that this is a quality item. Having an SGR value itself is a good certificate. It has got H index of this much. So JGate, you can also arrange them in the decreasing order of SGR value, etc. All those facilities are there, but the full text access is not there. You can see it's locked. But if that is not there, it also has got a facility of getting it interlibrary loan, etc. The interlibrary lending, that sort of things are also there. Yes, you can see here the next item I am showing here. It has got access to the full text as well, but quite a good number of the metadata give the author's addresses as well. Uh, you will somewhere you will find the author's address as well. So this is one database giving this sort of things as well. So that would be wonderful to make use of that. So with that, probably I would like to end the demo. Another 4 or 5 items are there, but time is up. Let me have some discussions as well. Uh, so I will end up. Uh, Sir, shall I end up? Yes, sir. Yeah. Yes, Oh, sir. thank you. Thank You, you. Thank you. So you yeah, did my please job. share your video once again, sir. Yeah, I will do that. Yeah. Okay. So that you can also. We can take up queries from participants. Participants, please type in your queries in the chat box. And after you do that, we will share the feedback link for session number 6. This one, the last one. In the meanwhile, I'll also ask a couple of questions to get this started. Sir, as per your experience, which
has a better coverage when it comes to citation index? Is it Google or Web of Science or Scopus? Because Google also doesn't cover a lot of literature, right? Yeah, yeah. Yeah. Uh, that's an interesting question. Naturally, coverage by Google Scholar is more than anything else. And I have made a study also. For example, I showed in the morning session, I showed the Rajiv Gandhi Technical University Yes. citations and H index, etc. What I would do is, what I have done is, in number of cases for the sake of NAC, etc., I have done for some universities, especially when they are getting some big projects. What I would do is, I would download the Excel sheet of the publications of, say, particular university as covered by Scopus. For example, Scopus coverage is more compared to Web of Science. Scopus covers something around to 23,000 journals, whereas Web of Science covers only 18,000 journals. Definitely, Google Scholar covers, I don't know how many times compared to that, because the quality check is a little bit a problem with the Google Scholar because it's open. Okay, so from that point of view, Google Scholar is good, but it also has got certain criteria as well. What I would do is, the Excel sheet what I take, say, from Google Scholar, not Google Scholar, Scopus. I would arrange those references in the decreasing order of number of citations. So what I would do is, suppose the Rajiv Gandhi Technical University H index is 40. So I have already arranged the articles in the decreasing order of number of citations. All those 600 and odd number of items I got Excel sheet. So what I would do is, I'll put another column in the Excel sheet. One column is Scopus column, that's Scopus number of citations. Another column I'll add Google Scholar citations. So what I would do is, I will take simply the title of that article, put it in the Google Scholar, and see how many citations it has received. I'll post it there. So I will arrange all these items in the decreasing order of number of citations as received in the Google Scholar. That will give the H index as covered by Google Scholar. And the I-10 index also can be arrived in the similar way. I didn't talk about I-10 index anyway because uh, Dr. Neeraj had spoken about that. I-10 index is just nothing but out of, say, 60 items, say 25 items have received 10 or more number of citations. That is the I-10 index. It is done by Google Scholar people. Okay. I Okay. hope I am clear. Okay. Yes, sir. Sure. So Google Scholar has a citation index, but it doesn't necessarily have a reporting feature like Web of Science or There Scope. are some. There are some. Okay. Uh, there are some third-party softwares. For example, there is some software called Scalarometer. So Can you please you repeat? Scalarometer, Colorimeter. Okay. Scalarometer. You simply type Scalarometer in the Google. You can download it onto your Chrome. It will sit on the top of your browser somewhere. You can click onto that and arrive at some of these this sort of H index citations, etc., in the form of some graphs, not in a very big way like Scopus or Web of Science. So, if we have to go for a reliable reporting and citation analysis tool, Mm. and both of these softwares are really expensive, as you are aware of, Yeah. and the libraries are already marred by budget concerns. So, if we have to pick one, Mm. I understand. I mean, it is for an academician like you, it's difficult to take a position. But Mhm. still, if we have to pick one, what would be your recommendation? Well, it's a difficult question to answer. Both have got their own advantages. But I would go for definitely for Scopus because Okay. I have got I know how to uh, further take the corrective steps using Scopus data. Okay. But if you put these questions to any of the academicians, professors, Yes. definitely they would like to say we would go for Scopus. They say, but sitting in the panel, decision panel in the
MHRD thing, Yeah. they have gone for web No, science only. yeah, yeah, yeah. So I mean, we all are conflicted when it comes to this question. Yeah, I understand. I mean, even you at times would feel that yeah, Scopus is better, but some problem statements or some questions are answered by Web of Science, and Scopus is not able to answer it. now, It's a Web of Science from quality aspects, somewhere is better than Scopus, definitely. yes, Both have got some yeah, problems. I can talk 1.5 hours only on the problems and advantages of these two comparison way. Can do that as well, but this is not the time anyway. I'm sure, sir. I'm sure. So, IRINS, a wonderful initiative by Inflimed Yeah, Irons, yeah, and Dr. Karan has yeah, played yeah, an yeah, active role in it. And I also heard his demo in Bennett University yeah, last year. And yeah. you have had your institute's profile built there, I believe. So, IRINS, is it only limited to universities and colleges who are part of Isho Sindhu, or is it No, also no, included? no. Anybody can become So even members. private universities for that Yeah, matter? yeah, private universities also can have. For example, in Bangalore, there is an engineering college called Nitte Meenakshi Institute of Technology, NMIT. It's a purely private engineering college. They have got their IRNS done. Oh, okay. And it's totally free. Absolutely, it's totally free. It's Wow. totally free. Only thing is because what has happened recently, UGC has made it mandatory for the faculty members to become part of Vidwan and institutions to become part of IRNS. So because of that, all of a sudden there's a big rush for that. So there's a queue for that. You'll have to wait. Okay. Okay. So one question from our participants. This was by Dr. Jaideep Mehta. He is asking about the authenticity of platforms like PDF Drive or Book SC, and should they be included and promoted in campuses openly, because there have been questions raised and it can lead to copyright violations, and something which we need to be really concerned of. Your thoughts on that? Yes. To tell you frankly, for the last maybe I don't know, maybe about 200 lectures of mine, I would have given the demo of Sai. Yes. This is the question usually I get. Yes, sir. As a researchers, I don't think we should worry about it. You can see there are many academicians who are fighting against these publishers in the court of law also now. Do you mean to say that they are making use of that? And only thing as a precaution, I don't know whether it is really true. If suppose we are working for a company Yes. like G, Okay. I am referring an article using the source Sci-Hub, Okay. and I'll be citing that article as a part of my invention when I take a patent. Yes. I need to worry. And moreover, Exactly. these company people Even are in there not. academic research, I'll add to your example. And I Yeah, saw in one university, the faculty member published an article, and he quoted, let's say, 20 articles from different publishers, yeah, and the university didn't have access to those publishers, and yeah. there was a legitimate line of query from the publisher to the institute: how did your faculty get access to these articles? And it led to a serious line of investigation by the publisher. Obviously, I mean, the author got those articles from Sci-Hub. So I am a supporter of open science, by the way. But just like a researcher cannot plagiarize content from another researcher's work, I don't know whether publishers are probably right in this fight uh, against Sci-Hub. Your thought? Uh, I tell you, if we see the usage part of it, studies have been done. Uh, Many academicians from Harvard University, MIT, etc., have been using it. Uh, Many a times, not that they don't have access to those journals. It's a question of convenience. Simply copy DOI and paste it, and you have that. Whereas you'll have to search and do lot many things. From that point of view, the question of many times convenience for the people, but ultimately something may come up. We don't know. In India,
Indian court may ban it. We don't know. Yeah. Uh, One thing is there. Some few years back, the New York court, she lost the case in New York court, but it's on and on. Even today I searched nearly 6 or 7 items on using SciAp, and in your presence, I searched one item. It is throwing up. So what they are doing is, let's say they set up a server in Russia, Yeah. and publishers go to Russian court and get it banned No, there, no, they don't and have they move the jurisdiction. entire infrastructure to some other country servers. Yeah, Is what I have no, observed. no, Yeah. no, not like that. There are other things as well. You can see here. Initially, what the court did is they banned the domain name providers to this company, Yes. Yes. SciAp. But she went on jumping from one domain name provider to another domain name. And some of the domain name providers are not from US. They are from some Russia. And Yes. she is from Russia. The court rule of New York doesn't carry any value in Any jurisdiction Kazakhstan. in Russian. Yeah. Yeah. That's the thing. That's Yeah. the thing. But ultimately, a day may come where there could be bigger level steps in this matter. It depends upon this open science, etc. That's a different line of thinking altogether. Yeah. And this is a different thing altogether. Yes, yes. So moving on, sir, there's another question from one of our participants who has asked you whether there are any quality open access resources for Hindi or Sanskrit PhD students in India. Any platforms that come to your mind? Now, for example, the one I searched on Internet Archive. Yes. Internet Archive, you have quite a good number of vernacular language, including Sanskrit and Hindi. You can find quite a good number of books there. But I really do not know anything other than that. But some of these well-known open access repositories like Gutenberg, etc., they too may be having. I don't know. I'm not quite sure about it. But one thing I can say that not Internet Public Library, Internet Archive, it's collection of different digital libraries all over the world. A, a lot of lakhs and lakhs books published in India, including books published in something in 1700, 2 centuries back, 3 centuries back, have been taken away by these universities. They're Yeah. all they have been digitized, and I'm sure if you search that Internet Archive, for example, the other day I was searching on Shankaracharya. I found quite a good number, 40, 50 books on Shankaracharya Yeah. in Many Sanskrit manuscripts. and other languages as well, including Kannada. I found quite a good number of books as well. Okay, okay. But to add to your answer, sir, when I was trying to build an e-library platform for the Sanskrit University in Uttarakhand, Mhm. in Roorkee, there's this Sanskrit University, and we were Yeah. trying to do a content mapping of what Yeah. can be included in the library. Okay. I observed that there's not much available when it comes to research or scholarly resources in Sanskrit, because in any case, not a lot of research is being Yeah. done in Sanskrit Yeah. as such, That's right? true. That's So true. that That's was true. my experience. And let me see if there are any other queries from the participants. Not really, sir. One personal query that I have. You in your, I mean, when you were in NALN, you also showed the remote access service available from National Aeronautics Yeah. Lab, Yeah. and I believe it's a part of CSIR. Okay. So, personal query is, I mean, how does acquisition in CSIR labs happen? I mean, are they lab based or are they done at a consortia level? I tell you, it's like this. In fact, there also I should claim my dominance in the sense I was the first person who moved the formation of CSR consortium. The Yes, first yes, first meeting took place at NAL under my leadership. Then at NCL, we had the first negotiation with Elsevier. We finalized the deal. In the meantime, NISCOM and INSTOC came together. They formed a NISCAE. The DG wanted to give one assignment to newly formed NISCAE. That's how either NCL or NAL could lead that, and it was taken away by us, although it was our product.
But good thing that they gave it miscare, because they miscare people did a good job. But like, NCLU. unfortunately, the leadership of NKRC did not do well in the later part of it. Initially, it was okay from the miscare point of view as well. Okay. I should not mention some top level people played spoiling game for NKRC, um, National Knowledge Resource Consortium, uh, and for which DST also joined its hands, but Yeah. it has come down. It is managed centrally, but the sources have come down, and what they are doing is, for example, Scopus. NL has got access to Scopus, but NL pays for it. Many Okay. a times it so happens we pay to NKRC people, many a times it's not paid in time to And publish. the publishers. Sometimes there's a gap of service for 1 or 2 months. That sort of problems are there. In fact, that is the reason you asked in the question beginning, ComSAC, the first consortia Yeah. ever started in the country is called ComSAC, Consortia on Aerospace and Materials Collections, ComSAC. Okay. That was a consortia for giving access to 14 bibliographic databases covering aerospace and materials collection. That is CAP substats. Being the first ever consortia, for me also it was new, first experience for me. Even Yes. the word consortia I had heard first time when I did that. So it so happened, even in the literature, you we search the history of consortia in the country, you will find that reference as well. Okay. So what I did is, we wrote to different directors and the vice chancellors. My director wrote. When the letter went to from the director, some directors, some vice chancellors readily agreed. Yes, we are joining. They sent the letter to the materials HOD. Materials HOD, he simply sent consent. Yes, it is useful. Go ahead. But later I realized that my director's letter went to the vice chancellor or the director, and the consent of the materials division came up, but it did not reach the librarian. That was the mistake. So Yes. when the invoice went, naturally it went to the librarian, and librarian, he said, it's fantastic idea, but no money. So out of some 25 people, only 11 people committed, only 5 people paid. Ah. Okay. Okay. So Okay. that could survive for only 2 years. Ah. Then later on, CSR consortia came next, and then Shoda Sindhu, etc., came a bit later. Okay. 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 So another question by a user asking for any the best open access plagiarism tool. If you have done any analysis and I have not done bigger analysis, but there are quite a good number of open access plagiarism softwares. But the problem, I tell you may find 1 dozen. The real problem comes up with the sources they use. yes. The software, it doesn't mean that there is any inferiority of the quality of the software. See, True. why do we do the similarity check? It is Yes. basically to check against already published literature. Yes. That is the thing. So, however good the software may be, if Coverage is they in. don't have access to the concerned resources, Yes. even comparing or similar doing similar check doesn't carry much meaning. In fact, True. that's a problem with the present. The one. What is the name of the one being used by impregnated people? What is one? Good. Urkun. Urkun is software. It's a good one, but unfortunately, they don't have access to so many resources compared to Turnitin, etc. And Yes. that's the reason when you do the similarity check using the Turnitin and Urkun, the what you call the percentage with Differs. Urkun comes less compared to Turnitin. In Yes. fact, sometimes it's a blessing in disguise for those people who are
not that serious in doing that work, that Okay, way. yeah, yeah. And in fact, to take it a little further, I mean, the publishers are also asking for a report from mostly from Turnitin. So, Yes. so the to answer the user, you Yeah. are doing the plagiarism check, one, to add credibility to your research, but also to as a proof point for publishers. Yeah. So even if you use an open access plagiarism tool, you won't get any credibility, and you won't get green signal from the Yeah. publisher. So at least in this scenario, in this problem statement, it's best to go for a paid tool. And Yeah. Yeah. as per most of the experts, although Urkund and Plag Scan, there are many, Turnitin seems to be leading the race as Yeah. of now. As of now. Yeah. So one more question by the user, and I'll say that this is the last one. Any open source method to provide remote access to users? Uh, there are some open access tools I was told, but uh, the show the Sindhu people themselves has got a particular In source for. fact, Uh, yeah, that's the thing. So yeah. you can make use of that if you are part of show the Sindhu. Yeah, and again, since this is my own territory, my only admission in that is that, yeah, InFed is doing a wonderful job with the eShot Sindhu members. But when it comes to remote access, it's not just a technology solution. And you need to have constant service also, because Yeah, publisher yeah, platforms keep changing. yeah, So there are very, very, very economical solutions available in the market. I'm not going to name any one of them because I am in competition with them, so it won't be right to use this forum to promote myself. But uh, you can have a look on Google remote access solutions yeah. in India, e-library platforms in India, and you will come across 3-4 companies, and all of them with this COVID situation have dropped the prices to at least 50 to 60%, and now they are in easy reach of all the libraries, and it's a One, wonderful and in fact a mandatory service uh, now to have. one thing. Yes, sir. Tomorrow there is a program. Yes, sir. Library Technology Conclave is being inaugurated tomorrow. It's a big event. Yes, sir. Uh, for the last 5 years, it's being done, and I was the program chair for the Library Technology Conclave for all these 4 years. This time it is chaired by Professor Shalini Aras. Okay. Okay. Uh, Tomorrow program, you will hear one new additional items, Indian item for remote access. Uh, Informatics India has come out with its own remote access software. I don't know about it. I only heard from in They the were no, no. I believe they were using Easy Proxy earlier. So yeah, the EJET proxy. In fact, I have been user of EJET proxy for quite some time, but now they were promoting it, but now they have come out with their own product, and okay, that is being launched tomorrow. We don't know where to see the economics of that. We don't know. okay. It will be nice to have a look at that also. Professor Sir, thank you so much for your wonderful talk. I'm sure all the participants have learned a lot from this one. And Uh, to the participants, I am sharing the link for session 6 given by Dr. Godar in the chat box. Please do fill out this feedback form, and we will be considering this as your attendance for the session. We will keep this channel open. We will keep this channel open, and we will resume the next session. We have a very short break now of about uh, 30 minutes. Yeah, Sir, one thing, let them note on my mobile number 9611. I'll type that on your behalf in the chat box also. Yeah, 9611 is my mobile number. Can you Any please of you repeat once again, sir? 96111. 65781. Okay. They are free to talk to me. They are free to send me an email. Even if they don't remember this, they let them search Gowder IRN on the in the Google. They'll find good number of hits. Where somewhere you'll find my address and other details as well. Okay. Okay. Thank you so much, sir. And I personally request you to please attend this session on RGPV e-library. Mm. Have a look at our implementation, which includes remote access, mobile app, and we'd love to have your guidance on how we can take it a little further.
When is that session? Sir, the session as per schedule is on. Just give me a second. I lost track of things. Yeah. So the session is. Yeah, so sir, it's session number 19 and 28th. So day after tomorrow, it's Okay. the last session Okay. around 4 to 5 p.m. Okay, I will do that. I will attend that. And another thing, morning I discussed with Dr. Chaupse, that morning presentation, what I did, that's on Rajiv Gandhi Technical University, Scopus. Yes, yes, yes. I did only the PPT part of it, only that too, only 25% of what I would have spoken about Rajiv Gandhi Technical University. Yes. Probably that would be an extended talk on the only that part of it, going live, etc. It could be very useful For discussion the from the management. point of view of NIRF and NAC, etc. Yes, and I'm sure I mean VC sir being so pragmatic in his approach would love to have a look at that report also Yeah. to see. Mohit, hello. Yes, sir, we can hear you. Yeah, Godar Sahab, I have discussed with the Vice Chancellor, Yeah. and Vice Chancellor is too much interested to talk with you, and one talk for our faculty members and you for NIRF special ranking of an NIRF ranking. That's why he's given a date after the 30th. Okay. Okay, We 30th, should we will see my have one convenience. session. We should see my convenience as well, because I have some schedules. On first I got one, second I got one. There could be some more in the Okay, February. okay, Should be my convenience. Thanks a lot, Dr. Chaukse. okay. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank Very, you. very thanks. Thank you. To Thank all you. the participants, thank you so much, sir. Thank you so much. We will connect again, sir. Okay. Thank you. And, Bye. sir, to all the participants, the channel is open, and please do fill out your form. Mohit, Mohit, one Just thing is more. please Mohit, hello. go ahead, sir. Go ahead, sir. Mohit, all the expert is interested to send a link and they join all the sessions. Please share all the links to all the expert. Sir, the link was sent to all the experts, sir. Yesterday Okay. also, and yeah, at 9 p.m. yesterday, it was sent to all the experts. We will keep sending the joining meeting link to all the experts. Why, In why, fact, why morning yesterday I session attended 3 sessions. participants is less? Sorry, sir. Why morning session participants are very less? Sir, there were about 76 participants. So if 76 could join, then I believe all the 144 could join. But we have sent the link to all 144 yesterday in the morning and in the WhatsApp group. And we can only bring horse to the water. We can't force it to drink it. So I believe we have done our job, and we will keep sending the links to all the participants and to all the experts. Uh, Okay, okay, yeah, we will continue doing that. So we will take another short break of 30 minutes. okay. 150, we will join back, and we have a very, very nice talk coming from SS Chandel sir and You Dr. have, Neeraj Chaurasia also. okay. So, I will inform to Chandel Saab to join. yes, sir, 150 is the time when we will resume the session. After 30th minutes, na? 30 minutes, yes. Okay, okay, okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, Godar sir. Once again, it was a pleasure listening to you. Thank you. We will keep this channel open, everyone. You can mark your attendance, and you can leave if you have any comments. Please do leave them in the chat box. Thank you.
Hello, Moiji. Hi. Audible? Yep. So we are back. Yeah. So thank you. And sir, just give me 2 minutes and I'll. Yeah. Yes, sir. Yeah. We'll begin. Take your own time. Sure, sir. Okay, friends. So we will begin with session 7, a talk by Dr. Sunil Singh Chandel sir from MPSSR, and he is going to talk on various tools, techniques, and software that can be used to do research more efficiently. As the role of librarian is changing from merely a bookkeeper or an information source provider, I think we must give full attention to this talk, as the researchers, be it academic research or even scientific research in an R&D lab, the scientists, the academicians are looking forward to more assistance from the librarians in terms of how the librarian can help in the entire research process, the entire research ecosystem. So I'm sure Dr. Saab will touch those points and will be explaining the different softwares and techniques that can be used. Dr. Saab, the platform is all yours. I request you to please share your screen and enlighten us. Ji. Thank you, Moiji. Good afternoon. And my best wishes to all of you. A very happy Republic Day to all of you. At the outset, I would like to thank Dr. S.S. Chokse, Program Coordinator for the short-term training program under the joint coordination of AICTE and RGPV on the topic of bringing library services to remote users during COVID-19 pandemic. It gives me immense pleasure to be present among learned scholars, speakers, and other colleagues to express my view. I very much appreciate Honorable Vice Chancellor of this university who gave such a wonderful vision for academic development. Now, before coming to the point on the use of innovative tools and techniques and research, I would like to say that I will try my best to give you some input to everyone to enhance their knowledge. I believe that everybody will definitely be benefited and enhance their existing knowledge. I would like to share my views in Hindi as it is comfortable to me and I think it is acceptable to you people also. So actually मैं कल एक जो ग्रुप बनाया अभी वो उस ग्रुप में जुड़ा हुआ था, तो एक महाराष्ट्र से एक मैसेज आया जो ग्रुप के अभी तक के जो अर्लियर स्पीकर थे उनके बारे में, तो कुछ वर्ड यूज किया जो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो मैंने फिर उनको फोन किया सज्जन को, मैं नाम नहीं लेना चाहता पर मुझे लगा कि जो हम इंग्लिश में स्पीच देते हैं और अगर हम वो चीज अगर संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा वो यूजलेस हो गया बोलना। तो मैंने देखा, आपकी लिस्ट देखी, पूरी लिस्ट में देखा कि कुछ लोग पीएचडी किए हुए हैं पर मोस्ट ऑफ द पर्संस आर नॉन पीएचडी एंड
मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी स्पीकिंग इटसेट्स हैं, जो इनको की हिंदी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी और वो अपने विचारों को सही दिशा दे सकते हैं हिंदी में सुन के। तो इसलिए मुझे लगा मोहित जी कि मैं इसको जो आगे जो फर्दर जो है हिंदी में ही करूंगा, ताकि वो हमारी बात को सही ढंग से आत्मसात कर सकें और अगर किसी को संप्रेषित करना चाहते हैं तो वो संप्रेषण योग्य हो। अदरवाइज हमारे बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और हम भी बोल के चले जाएंगे, बहुत सारी आपको पीपीटी दिखाएंगे और दिखाने के बाद चले जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी चीज दें जिससे कि आप कुछ सीखें और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी कुछ आप इनपुट दे सकें। ये मेरा मोटो है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको हिंदी में यूज करूंगा। यूज ऑफ इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च। तो जब हम टाइटल देखते हैं तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। जी विजुअल है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। या सो व्हाट वी सी इन आवर टॉपिक, द यूज ऑफ इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च। तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी एक टॉपिक को देखते हैं तो उस टॉपिक को अगर हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसमें ये आता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह का सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं। तो ये कि जो हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें यूज ऑफ इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च, मतलब हमको अनुसंधान करना है तो उसमें टूल्स और टेक्निक्स जो है वो जो नवीनतम टूल्स और टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करना है हमको, उनका उपयोग करते हुए रिसर्च करना है हमको, ये हमारा वो है। तो अब हम जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में एक एक वर्ड को हमारी उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए और हर चीज जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में हर वर्ड जो है वो आपको समझना होगा, उसका क्लेरिफिकेशन आपको आना चाहिए, तभी आप सही ढंग से रिसर्च को सही इनपुट दे पाएंगे जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम सामान्य तरीके से जब एक किसी लैंग्वेज या एक लेमैन की तरह किसी सेंटेंस को तोड़ते हैं तो उसमें हमको क्या मेन जो कीवर्ड्स दिखाई देते हैं। अगर हम ये अभी सोच लेते हैं कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमको लाइब्रेरी या किसी स्पेसिफिक फील्ड से कोई हमारा लेना देना नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम जो ब्रेकअप करेंगे, इसका जो इसकी चेन बनाएंगे वो ये होगा कि रिसर्च एक पार्ट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया कि मुझे रिसर्च करना है, तो किसके माध्यम से करना है, वो उसकी हेल्पिंग मटेरियल हो गया उसका। इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से हमको रिसर्च करना है और इनोवेटिव टूल्स टेक्निक्स का उपयोग करना है। तो हमको ये समझना होगा कि कौन से टूल्स हैं जो हमको पहले टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हमको रिसर्च में यूज करना है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का एनवायरनमेंट क्या है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। फिर उसका उपयोग कैसे करेंगे ये भी मुझे हम सभी को मालूम होना चाहिए जो भी हम लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। तो जब हम इसको ब्रेकअप करते हैं सेंटेंस को पूरे का, तो रिसर्च, टूल्स टेक्निक्स, इनोवेटिव टूल्स टेक्निक्स और यूज उसका कैसे करते हैं, इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स का उपयोग हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उस सेंटेंस में समाहित हैं। अब रिसर्च एक्चुअली क्या, रिसर्च तो बहुत छोटा पैकेज होता है, बाकी सारी चीजें तो हम लोग उसमें इंसर्ट करते हैं, उसके बेस पे रिसर्च तैयार करते हैं। तो रिसर्च का जो पार्ट रहता है बहुत छोटा होता है। अगर इसी को हम अगर लाइब्रेरी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका लाइब्रेरी साइंस में एक चेन प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग चेन इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो उस चेन इंडेक्सिंग में हम लोग इसको पूरा सेंटेंस को ब्रेकअप करते हैं। तो ब्रेकअप इस तरह से करते हैं कि एक होता है फॉल्स या शार्ट और अनशार्ट लिंक, दो तरह से होता है। तो इसमें जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं उनको हम लोग कैप्चर करते हैं, जबकि सामान्य तरीके के जो लोग हैं वो मीनिंगफुल वर्ड कैप्चर करके जब भी कोई आगे हम बात करेंगे कि हमको क्या रिसर्च करना है तो उसमें वो कीवर्ड्स उसका यूज करते हैं। तो बेसिक चीज हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे कि कीवर्ड्स हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। और या अगर हम इसको लाइब्रेरी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो इस सेंटेंस को समझने के लिए इसको उसकी स्पष्टता क्या होगी, उसकी शब्दों का सही चयन क्या होगा,
ये लाइब्रेरी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो चेन प्रोसीजर से हम लोग करते हैं। जैसे रिसर्च हो गया, रिसर्च मीनिंगफुल है कि इसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिसर्च में क्या करना है क्या है, ये तो एक पॉइंट हो गया, और ये जब अनफोल्ड किया जाएगा तो इसकी बहुत सारी परतें खुलेगी। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से यूज होंगे, इसके बाद में इनोवेटिव टूल्स टेक्निक्स कौन से यूज होंगे, फिर इनोवेटिव टूल्स टेक्निक्स का रिसर्च में कैसे उपयोग करेंगे, ये हो गया। तो जब ये हम अगर चेन प्रोसीजर से या चेन इंडेक्सिंग से इसको तोड़ते हैं तो रिसर्च, टूल्स टेक्निक्स, इनोवेटिव टूल्स टेक्निक्स एंड इनोवेटिव टूल्स टेक्निक्स यूज्ड इन रिसर्च, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। रीडिंग रिसर्च करने से पहले हम लोगों को एक चीज और समझ में आना चाहिए कि हमारा रीडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। रीडिंग और राइटिंग इंटरेस्ट अगर नहीं है तो रिसर्च करने का इतना फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिल पाते हैं जो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी विषय पे हमको रिसर्च करना है, किसी विषय पे हमको रिसर्च करना है, तो सबसे पहले हम उस के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि वो क्या चीज है ना, कौन कौन सी चीजें मिलके उनको डेवलप करती हैं, ये सारी चीजें रिसर्च में हम लोग करते हैं। तो जैसे एक लड़का है, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट होता है वो हम देखते हैं कि एक लड़का है, स्कूल में जाता है, सबसे पहले उसको ABCD सिखाते हैं, हिंदी की वोकैबुलरी सिखाते हैं, इसके बाद में फिर मैथमेटिक्स का 1 2 3 4 इस तरह का सिखाते हैं उसको। धीरे धीरे करके सेकेंड क्लास में आता है, थर्ड क्लास में आता है, फिर उसके सब्जेक्ट बनते जाते हैं कि सोशल स्टडी करता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है, और जैसे जैसे स्टेट डेवलप होती जाती है। अब हम लोग क्या उसमें देखते हैं कि वो लड़का किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी में बहुत कमजोर हो सकता है। या कमजोर से मेरा मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने में कमजोर है, वो उसका इंटरेस्ट जो है ना एक साइड में डेवलप हो जाता है। तो जिसमें डेवलप हो जाता है उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसमें डेवलप नहीं हो पाता है वो उसमें उसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। ये इंटरेस्ट डेवलप होने का एक तरीका होता है। तो जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है वैसे वैसे हम समझने लग जाते हैं, चीजों को पकड़ने लग जाते हैं कि हम इस विषय में हमारी पकड़ अच्छी है। तो रिसर्च के लिए हमारा इंटरेस्ट सबसे पहले उसी विषय पे डेवलप करना चाहिए जो हमारा, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी। तो समझने के लिए जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट पहले हो। जब इंटरेस्ट होगा तब आपको कोई बात उस पर करेगा तो आपको उसमें अच्छा भी लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। फिर रीडिंग, जब आप बार बार किसी चीज को रीड करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। तीसरी चीज हम आते हैं रिसर्च में कि जो सिलेक्शन है वो टॉपिक और लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप टॉपिक का चयन करेंगे या लैंग्वेज का करेंगे। तो लैंग्वेज, मुझे लगता है कि कई लोग मेरे पास PhD के लिए आते हैं कि सर मैं तो इंग्लिश में करूंगा, पर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो पर फिर भी वो करते हैं। अब वो करते हैं तो ये वही समझते हैं कि वो कितना उसको सही दिशा दे पाएंगे, उसकी उसको कितना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो चिंतन होता है, जो थॉट्स होते हैं, वो आपको जो जो आपकी ओरिजिनल भाषा है उसमें बहुत अच्छे आ सकते हैं, उसमें आप अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और फिर उनको आप फिल्टर भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और जिस भाषा पे आपका कमांड नहीं है, अगर आप उस भाषा का यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए शब्द आप जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी सही शब्दों का चयन आप नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सिलेक्शन और टॉपिक सिलेक्शन, अब हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा और जब डीप में जाएंगे कि टॉपिक पहले चुनना चाहिए या और कुछ चुनना चाहिए, चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में और टाइटल के बारे में। फिर दूसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च, कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आप MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिसर्च पेपर कर रहे हैं, सर्वे आर्टिकल है आपका, या कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो रिसर्च में शामिल होती हैं। तो ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपका निर्धारण करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं इन सब चीजों में। तो जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी। अगर आप प्रोफेशनल रिसर्चर हैं तो आप किसी चीज के लिए प्रपोजल तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब सिनॉप्सिस और प्रपोजल में डिफरेंस क्या है। सिनॉप्सिस एक प्रीलिमिनरी स्टेज है रिसर्च की। प्रपोजल क्या है, जब आप मेच्योर हो जाते हैं तब आप किसी एजेंसी के
दो लोग ए और बी, दो एजेंसी होती है, दो लोग होते हैं जिनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है, तो उस समय की स्थिति होती है। तो अब मैं सामान्य शब्दों में बोलूं कि सिनॉप्सिस और प्रपोजल में वही अंतर है जो गाइड और स्टूडेंट का होता है, कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आपको प्रपोजल लिखने की अहमियत आ जाती है आपको। जो थीसिस, जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस को फॉर्म करते हैं डिसर्टेशन और थीसिस में, जबकि प्रपोजल का जो क्रियान्वयन है वो रिसर्च रिपोर्ट में होता है। तो एक तो ये बेसिक क्वेश्चन हुआ कि क्या सिनॉप्सिस और प्रपोजल सेम है, तो अब ऑब्वियसली बोथ आर डिफरेंट। दोनों की टाइमिंग्स अलग है, दोनों की मैच्योरिटी का लेवल अलग है ना, सो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम उसके कंटेंट को डिफाइन करेंगे तो लगभग सेम वे में जाएंगे, क्योंकि रिसर्च का प्रोसेस तो सेम ही होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो which one should be chosen first, language or title? So language, I think language should be chosen first, then title. Research creates new knowledge. Knowledge is the sum of past, present and future. जो रिसर्च तो ओपन है, मतलब उसको हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो फिर उसको डिलिमिट करते हैं, अदरवाइज वो पूरा ओपन है और सारे फ्रंट खुले होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं बहुआयामी है। नॉलेज जो है वो जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का जो समागम है वो एक ज्ञान के रूप में समाहित होता है, जो रिसर्च कैरी आउट करता है। दूसरा ये कि एक सिंगल आइडिया होता है, सिंगल आइडिया मिल के जब सिमिलर आइडिया कई एकत्रित हो जाते हैं तो उसको एक कंपाइल करके एक सब्जेक्ट का फॉर्म करते हैं। उसके बारे में अलग अलग ओपिनियन है, मैं बात करूंगा उसकी। तो जब अगर हम बात करते हैं कि जो पास्ट इवेंट है, नॉलेज में जो आता है कि जो भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं वो भी एक नॉलेज का पार्ट है। और लेकिन जो भूतकाल की घटनाएं हैं उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने विचार दे सकते हैं, उस पर क्रिटिक कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके फर्दर एजम्पशन दे सकते हैं कि भाई इस घटना का मतलब ये हो सकता है। उस पर जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है उस पर अपनी बात रख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसको। प्रेजेंट सिचुएशन में जो है या एक्टिविटीज हैं उनको हम देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उस अनुभव के आधार पे हम लोग आगे फर्दर फ्यूचर के लिए भी कुछ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पास्ट की इवेंट है कि इवेंट्स पे हम लोग एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं। जबकि जो प्रेजेंट स्टडी है उस पे फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए अपने अनुभवों को साझा करके और एक नया आइडिया दे सकते हैं, नया सुझाव दे सकते हैं, नई थीम दे सकते हैं और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं अगर हम लोग अच्छी रिसर्चर हैं और सही टूल्स टेक्निक्स का यूज करते हैं। सो फॉर लाइब्रेरी साइंस बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइब्रेरी साइंस का भी लिया जाए। तो नॉलेज इज द सम ऑफ टोटल इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड बाय सिविलाइजेशन, रंगनाथन ने कहा। और अगर हम इन सामान्य बात उसमें कहें तो नॉलेज जो है वो ज्ञात और अज्ञात दोनों का एक समागम है। दोनों के ज्ञात सत्व भी हैं और अन्य अज्ञात सत्व भी हैं। दूसरा ये है कि ये रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंडिवर्स, जो मानवीय प्रयास हैं उनका, उनके अनुभवों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचित किए गए परिणाम है। ये जो नोवर और नोवी के बीच में इंटरेक्शन है, जो जिज्ञासु है और ज्ञाता है दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, जिसके कारण नॉलेज प्रोड्यूस होता है और उसी को हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में। यूनिवर्स नॉलेज क्या है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के ज्ञान का समागम है और उसी को फिर आगे हम अगर यूज करते हैं लाइब्रेरी साइंस के टर्म में तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। अगर हम इसको वैदिक सिस्टम में मानते हैं तो वैदिक सिस्टम में ये कहते हैं कि पराविद्या और इस तरह की दो चीजें यूज हुई हैं।
वैदिक सिस्टम में कहा गया है कि सर एक काम करिए, एक प्लीज हेल्प करिए, मैं आपका 1 मिनट के लिए ये स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग कर रहा हूँ, एक बार शेयरिंग फिर से करिए प्लीज। शेयर फिर से करिए। और आपके शेयर बटन के साथ में आप देखेंगे एक मोर का बटन भी होगा। मैं डिलीवर करता जाऊंगा, जो भी स्लाइड होगी आगे पीछे होती जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो एनोटेशन एक बार हम रोक ले लोग, नहीं तो उस पे वो एनोटेट करते हैं स्क्रीन पे। वो बस मोर का एक बटन है, आपके शेयर स्क्रीन के बाजू में एक मोर का बटन होगा, उसमें 3 डॉट्स बनी होगी, अगर आपको मिल गया है ना। नहीं मुझे, नहीं, वो शेयर स्क्रीन करने के बाद ही नजर आएगा सर। अच्छा जी, आप टॉप पे देखेंगे, वहां व्यू ऑप्शंस लिखा होगा शेयर स्क्रीन के बाद, उसमें आएगा। इसमें तो होम चैट मीटिंग कांटेक्ट ये लिखा हुआ है। नहीं सर, पहले शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, आपने बंद कर दी स्क्रीन शेयर। अच्छा, पहले बंद करके फिर से शेयर करें? नहीं, शेयर स्क्रीन करिए, आपने अभी बंद कर रखी है स्क्रीन शेयरिंग। शेयर स्क्रीन कीजिए सर। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हो गया। इसके आपके स्क्रीन शेयर के साथ में ही एक अब बटन होगा सर मोर का। हाँ जी, हाँ है। मोर में देखिए डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन होगा। एनोटेशन फॉर अदर्स, हाँ, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर, ये कर दीजिए बस, एक बार इसको क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप कंटिन्यू करिए सर प्लीज। थैंक यू जी। सो पराविद्या, जब हम वैदिक नॉलेज की बात करते हैं तो परा और परा दो तरह की विद्याएं उसमें बताई गई हैं। तो पराविद्या मतलब उस लोग की, और अपरा विद्या जो है वो हमारे यहाँ की है। तो वैदिक स्कीम, हम कहना ये चाह रहे थे कि वैदिक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 भागों में विषय को उन्होंने विभाजित किया है। तो जो धर्म है उसमें रिलीजियस, सोशल और लॉ को इंक्लूड किया गया है। जो अर्थ है उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल विद नेचुरल साइंस को इंक्लूड किया गया है। और कर्म में जो है वो काम में जो है वो फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक है और साइकोलॉजी है। मोक्ष में स्पिरिचुअल है, एक्सपेरिमेंटल है और लॉजिक है, एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। अगर हम अपने इस टर्म में आते हैं कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, अगर लाइब्रेरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मैन और नेचर, सबसे पहले व्यक्ति आया और उसने नेचर के बारे में जाना, तो इसलिए नेचुरल साइंस प्रोड्यूस किया। मैन और स्वयं के बारे में ह्यूमैनिटीज को डिफाइन किया। फिर मैन सोसाइटी आया तो सोशल साइंस को डिफाइन किया। इन तीनों को मिला के यूनिवर्स ऑफ नॉलेज किया। सो नॉलेज इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट इज नोन एंड अननोन नॉलेज इज टोटल नॉलेज। So research is a systematized effort to gain new knowledge. एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है जो हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं। अब एक चीज और है कि SW लून ने कहा था, इसलिए हम लोगों को तीनों ज्ञान जो है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों के आना चाहिए। कि लून ने कहा था कि ए कंट्री विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट इज लाइक ए शिप विदाउट ए कंपास। जिस व्यक्ति को, जिस राज्य को, जिस देश को उसके भविष्य का ज्ञान नहीं होता है, वो उस देश की स्थिति एक ऐसे जहाज की तरह होती है जिसमें दिक सूचक नहीं होता है, मतलब वो दिशा विहीन सूचक जैसा होता है। जी चंदेल सर। जी
कुछ हाँ। परेशानी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा था कि कुछ स्लाइड्स जी इसको डाउन कैसे करना है? सर बस आप एक काम करिए, जी। एक सेकंड आप मेरे को ये रिमोट कंट्रोल का एक्सेस दीजिए, आपके स्क्रीन पे आया होगा अभी, है ना? अप्रूव कर दो इसको। हाँ, एक मिनट के लिए कीजिए। जी। ठीक है सर, अब आप नेक्स्ट एरो दबाते जाइए। जी, एक मिनट एरो मैंने दबाया तो आया नहीं इसमें। अब करिए। अब से भी नहीं हुआ। चलिए मैं 1 बाय 1 करता जाऊं मैं। हाँ आप करते जाइए सर, नेक्स्ट करते जाइए आप, इसको आपका चलेगा ये स्क्रीन आगे। देखिए, एंटर दबाइए तो भी चलेगा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? ओके, मैं लेता हूं आपसे कंट्रोल, आप एक बार मुझे दीजिए। बताइए सर, कहाँ रुकना होगा बताइएगा। नहीं, अब हो रहा है, मुझसे भी हो रहा है। अच्छा, आपसे भी हो रहा है? ठीक जी। है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ कंट्रोल। ठीक आप ठीक ठीक ठीक। जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी सर। So if we go to DVD सिविल क्लासिफिकेशंस, तो उन्होंने सब्जेक्ट को जो है ना वो 10 भागों में बांटा है। वो जनरलिटीज है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, नेचुरल साइंस है, टेक्नोलॉजी है। इस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। तो ये सब्जेक्ट फॉर्मेशन हो गया। ये सभी आप लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो हमने रेंडरिंग की थी कि टेक्निक्स क्या होती है। टेक्निक्स एक आपको सबसे पहले एक स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको, आप इस पे देखिए और थोड़ा चिंतन कीजिए कि ये एक फिगर है। ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो गूगल से क्लब करके और यहाँ पे इकट्ठा कर दिए कि जो वाटर सोर्स था वो किस तरह का पहले था और कैसे लोग पानी पीते थे, ड्रिंक वाटर का, तो और किस तरह से यूज करते थे। इसको हम लोग अपने फॉर्मेट में कैसे इससे सीखेंगे। तो देखो, पहले क्या था इसमें कि व्यक्ति जो पानी पीने का जो था नेचुरल रिसोर्सेज, अभी हम ये नहीं बात करते कि उसकी रिसर्च में नहीं जाते हैं। पहले पानी पीने का तरीका क्या था कि उसके बाद जब रिसोर्सेज फुल थे तो पानी इस तरह से पी रहा था, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल थे और वाटर लेवल ऊपर था। अभी हम उसकी रिसर्च में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं। दूसरा, जब उसके बाद में दूसरा ऑप्शन खत्म हुआ थोड़ा सा, तो ये सेकंड स्टेप आया। उसके बाद तीसरे स्टेप, पानी की और कमी हुई तो पानी को फिल्टर लेता, वहां से अच्छा पानी लेके लाता है और फिर घर पे स्टोर करता है, फिर करता है। फिर इसके बाद में जब वाटर लेवल डाउन हुआ तो ये हुआ। फिर इसके बाद में ये इस स्टेप पे आया। इसके बाद में फिर ये नई नई चीजें इसमें डेवलप हुई कि भाई आदमी को और ज्यादा लग गया, इसमें ताकत ज्यादा लगती थी, उसके बाद लेवर ज्यादा लगता था तो उसने पुलिस सिस्टम यूज किया। फिर एक नया सिस्टम डेवलप किया कि अगर ज्यादा है कि उसको पीने के अलावा भी दूसरी चीजें भी जरूरत पड़ गई, तो सिंचाई के लिए भी वो बड़े कंटेनर्स यूज करने लग गया। फिर एक नया सिस्टम करने इस तरह का यूज हुआ, फिर नल यूज करने लग गया, ठीक है ना। और यहाँ से आते थे फिर ये पंप यूज किया इलेक्ट्रिक का, फिर इसके बाद में ये जो सबमर्सिबल है वो यूज किया। इसके बाद में ये अपना जो फिल्टर पानी है वो यूज कर रहा है। तो आप देखिए ये क्या है, क्या मैं समझाना क्या आपको चाह रहा हूँ कि ये टेक्निक है। जो टेक्निक पहले कैसी थी और आज कैसी हो गई। अभी हम रिसोर्सेज की कमी और उसकी अधिकता की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। आप क्योंकि रिसर्च में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिजाइन करना और कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पकड़ना आ गया तो आप सोचिए कि मतलब आपकी आधी रिसर्च हो गई आपकी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है इसमें कि इसमें टेक्निक क्या यूज किया। जो हमारा सेंटेंस था उस सेंटेंस को हम उसी सेंटेंस पे रिसर्च कर रहे हैं। हम ये नहीं मान लिया कि जो आपको मैंने सेंटेंस दिया है उस पर रिसर्च करना और कैसे करना। तो वही हम चीज आपको सिखा रहे हैं कि ये हमने एक सेंटेंस, ये आपको फिगर दे दिए बहुत सारे, और फिगर से आपको देखना कि ये सारी चीजें टेक्निक है क्या चीज। तो अगर वो पानी निकाल रहा है तो निकालने की टेक्निक है। तो रिसर्च में जब आप रिसर्च में काम करोगे तो एक तो रिसर्च चीज हो गई, और जब टेक्निक उसमें लगाओगे तो रिसर्च करने की जो चीज है वो टेक्निक आपको वहां से पकड़ में आएगी कि क्या क्या चीजें टेक्निक में हो सकती है। तो टेक्निक को डिफाइन करना आना चाहिए। जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ना कि वर्डिंग को किस तरह से आप पकड़ेंगे, टेक्निक को किस तरह से आप समझेंगे कि
ये इस टेक्निक को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। टूल्स तो बात अलग अलग चीज हो गई। टूल्स इसमें क्या हो गया, बाल्टी हो गई, रस्सी हो गई, मैन पावर यूज कर रहा है, ठीक है ना, ये सारे टूल्स हो गए। लेकिन टेक्निक क्या है कि पानी जो निकालना है वो ये उसकी तरीका है कि एक टेक्निक ये है, एक वो नल से यूज करता है वो है, दूसरा सरफेस पे है तो कैसे यूज कर रहा है, तीसरा फिर वो एक्वागार्ड का पानी यूज करता है बॉटल में। तो अब ये हम बात करेंगे, रिसर्च में भी यूज इसी तरह से हम जाएंगे कि उसको जरूरत क्यों पड़ गई कि उसको फिल्टर करना पड़ रहा है, पानी फिल्टर पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो गया है। तो ऐसे ही पहले हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं लाइब्रेरी साइंस में, जो लिटरेचर था पहले वो बहुत कम था, अब लिटरेचर बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हमको बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स की जरूरत पड़ रही है नए तरीके की, क्योंकि वो लेबर को कम करना है। तो बेसिकली रिसर्च में भी टेक्निक्स क्या कर रही है, लेबर को आपके कम कर रही है, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जैसे यूज करते हैं, एंटी प्लेगरिज्म यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें भी यही है कि अगर वाटर कंटामिनेटेड हो गया तो हम लोग एक्वागार्ड लगा रहे हैं उसको फिल्टर करने के लिए। तो ये जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, रिसर्च दो तरीके की होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो जब हम क्वालिटी की बात करेंगे कि भाई अब हमारे पास पानी, तो पहले एक तो ये अलग प्रॉब्लम हो गई कि रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, कई जगह हमको ऐसी भी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पानी है ही नहीं। तो हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज है ही नहीं, पुस्तकें हैं ही नहीं, डॉक्यूमेंट सही नहीं पढ़ने के लिए, फिर भी हमको रिसर्च करना है, और रिसर्च कर रहे हैं लोग बाग। कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, पानी गंदा पानी अवेलेबल है, वो भी पानी को पीने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या वो भी पर्पज तो वहां भी पूरा हो रहा है ना। तो आपके पास में टेक्नोलॉजी है तब क्या उसकी जरूरत है, और टेक्नोलॉजी नहीं है तब क्या जरूरत है, तो क्या काम रुक रहे हैं क्या। इसलिए हम जो बोलते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब हम इस बात पे आते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये चीजें नई नई चीजें निकलती चली आ रही हैं, ये रिसर्च का कॉन्सेप्ट है। इसी को आप मन में रखिए, जब हम जितनी भी बातें करते जाएंगे आगे स्लाइड्स पढ़ाएंगे, आप ये जो फिगर हम दे रहे हैं इस फिगर को आप माइंड में रखिए कि कैसे चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। अब हम मेन उस पे आए। So in a manner which technical details are treated or basic physical movement are used। मतलब किस टेक्निक्स क्या है जो हम अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए ट्रीट करते हैं, जो टूल्स को जिस माध्यम से यूज करते हैं, कि रस्सी है तो हम पकड़ के खींच रहे हैं, एक तो ये हुआ, लेबर ज्यादा लग रहा है पर वो टेक्निक है हमारी खींचने की, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन नहीं थे। लेकिन जब टेक्निक दूसरी टेक्निक डेवलप हो गई आई, तो फिर उस टूल्स का उपयोग करके हमने दूसरी टेक्निक यूज की। तो टेक्निक जो है ना वो हर व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करती है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ टेक्निकल मेथड की, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में अगर हम यूज करते हैं, तो फिर अभी हम आगे बात करेंगे कौन सी चीजें, कौन सी टेक्निक्स है, कौन से टूल्स हैं जो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम ये कॉन्सेप्ट आपको देने की तैयारी सोच रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के अपनी रिसर्च में यूज करते हैं, क्योंकि हम सारी बातें वही करेंगे जो हमारे पहले स्पीकर ने की है, लेकिन उसका तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये है कि हमको उनको किस तरह से यूज करना है, ये देखना है हमको, ठीक है। और आप उसमें से कितना एसिमुलेट करते हैं, कितना उन चीजों को आत्मसात करते हैं, ये बड़ा विचार है जो आप लेकर जाएंगे हमारे पास से। तो वे ऑफ डूइंग समथिंग बाय यूजिंग स्पेशल नॉलेज, जो ये टेक्निक जो है ना व्यक्तिगत उस पर भी निर्भर करती है कि आपका जो स्पेशल नॉलेज है, जो स्किल नॉलेज है, उसके आधार पे भी आप टेक्निक यूज कर सकते हो। कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ये चीज, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है खाना बनाने की, फूड प्रोसेसिंग की, इसलिए वो टेस्टी है। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक एक उसकी स्किल है डेवलप करने की, और टूल्स को यूज करने की स्किल है, ठीक है। द वे द पर्सन परफॉर्म बेसिक फिजिकल मूवमेंट और स्किल, जो तरीका है उसको परफॉर्म करने का, कि उस काम को कैसे वो परिणित करे, कैसे वो उस काम को सही आउटकम दे सके, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। मैंने ये लिखा कि सी एग्जाम्पल फॉर द टेक्निक्स, जो जैसे कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम बहुत थक गए हैं और हमको थोड़ा सा आराम करना है, तो उसकी आराम करने की टेक्निक्स अलग होती है। जैसे बहुत थक गए तो बोले कोई कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाता है और थोड़ी सी नींद निकाल लेता, बोले हमने ये हमारी टेक्निक है उसको स्ट्रेस रिलीव करने की। कोई आंख बंद करके, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कोई अपना मेडिटेशन के माध्यम से स्ट्रेस को रिलीज कर लेता, तो ये टेक्निक्स हो गई सारी।
तो आई यूज ए स्पेशल टेक्निक टू मेक द ब्रेड। तो वही मैंने बोला कि कोई प्रिजर्वेशन, फूड का प्रिजर्वेशन करने की टेक्निक करता है और बहुत या फूड कोई नई डिश बनाता है और कहता है कि ये मेरी अपनी टेक्निक है, और वो कहता है ये बहुत अलग तरह का टेस्ट है इसमें। तो ये सब चीजें टेक्निक जो है ना, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निक्स है क्या चीज जो हम रिसर्च में यूज करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि कैसे है। टूल्स क्या होता है कि जैसे जो आपने पिक्चर पहले देखी थी कि उसमें बाल्टी थी, रस्सी थी, या मशीन थी, या जो पंप था नीचे से पानी सक करके ला रहा था, ठीक है ना, इंजन था, ये सारे टूल्स थे। तो हम रिसर्च में भी इस तरह के टूल्स यूज करेंगे। तो हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए हमको कि टूल्स, टेक्निक्स और रिसर्च में अंतर क्या है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या था कि पानी निकालना था, ग्राउंड वाटर निकालना था, पीने का पानी लेना था। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हमको रिसर्च करना है। तो दोनों में सिमिलरिटी समझ में आ रही कि वहां पर आपको पानी लेना है, वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रिसर्च करना है। तो आप अगर सिमिलर वे में समझेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो टूल्स जो है एक सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि हम अपने माध्यम से यूज करते हैं उसका, और किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क के लिए उसका उपयोग किया जाता है। A tool is an object used to extend the ability of individual to modify features in surrounding environments. Tools can be used for many senses, but here we use for research only. ये मैंने गूगल से कट पेस्ट किया है और फिगर आपके सामने दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें लिखा है डेटा कलेक्शन टूल्स, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन के लिए, सर्वे के लिए, यूजेस डेटा के लिए, फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यूज, ये सारे टूल्स बताए हैं इसमें, ठीक है ना। अगर हम इसको क्वालिटेटिव उसमें देखते हैं तो और क्वांटिटेटिव में देखते हैं तो मेल है, फोन है, ऑनलाइन है, फेस टू फेस है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है ऐसे हर स्टेप के लिए कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो टूल क्या होंगे, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो टूल क्या होंगे। ये तो मैंने एक सिंपल आपको दिया कि वहां से मैंने लिए, तो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। टूल्स ये हो सकते हैं। जैसे मेल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं रिसर्च में, कैसे कि अगर हमको किसी से क्वेश्चन भरवाना है, उसके पास टाइम नहीं है, तो हम मेल भेजा और उसने मुझे भर के वापस भेज दिया, तो हमने यूज कर लिया। तो दैट इज ए टूल फॉर आवर रिसर्च। हम फोन से बात कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल टू कैरी आउट रिसर्च you can use for review, analysis, referencing, case study, checklist, interview, observation, मतलब किसी भी तरह n नंबर ऑफ वेज, n नंबर ऑफ वर्क के लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं। तो टूल्स और टेक्निक्स मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि टूल्स क्या है और टेक्निक्स क्या है। अब यह है कि टूल्स और टेक्निक्स का जो है ना, हम लोग राइटिंग पैटर्न पे कैसे यूज करें। जो हम लोग कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वहां पे किस तरह से टूल्स टेक्निक्स यूज करें, हमारे साथ क्या चैलेंजेस होंगे और क्या परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन जो हमने पहले अभी आपसे बात की थी ना कि अगर हम इनोवेटिव की बात करते थे, इसका मतलब ये है कि पहले कुछ था। जैसे हम कहते हैं कि पानी निकालने की अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आज हम एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं कि पहले मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं, फिर नीचे उस पर टंकी में भरा रहता है, फिर उसको एक्वागार्ड फिल्टर करता है, फिर वो नीचे हमारे पास आता है, तब उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो चेंज हुआ, आज नई अगर कोई नई चीज हमारे पास में है तो इसका मतलब पहले कुछ और थी जो चल रही थी। तो इसलिए हमको, अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमको पास्ट का नॉलेज भी जरूरी है और वर्तमान में जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका भी है। उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर उसी पे प्लान करेंगे, फ्यूचर का भी, कि आज पानी की स्थिति कमी होती जा रही है, तो हम लोग एक्वागार्ड का यूज करें। इतना कंटेमिनेटेड हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है कि हम लोगों को एक्वागार्ड यूज करना पड़ रहा है। तो हो सकता है भविष्य में हमको और भी कुछ इस तरह की चीजें यूज करना पड़े जो जिससे कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो ये चीजें इसीलिए रिसर्च के लिए गैप देती हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम चैलेंजेस भी होंगे हमारे लिए, और किस तरह से हम यूज करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लेके। तो दोनों को कंपेयर हमारे पास आना चाहिए, तभी हम रिसर्च को साइड से क्लेरिफाई कर पाएंगे। अब अर्लियर डेज में से लेके और अभी तक का जो हमने देखा है, तो वो ये है कि बेस हमारा होना चाहिए कुछ, और उसी के आधार पे हम रिसर्च बोलते हैं कि भाई रिसर्च में कुछ बेसिक ग्राउंड होना चाहिए, उसके आधार पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रिसर्च तो
कुछ हम नया नहीं करते, मतलब किसी चीज को बेस बना करते, क्योंकि वो तो इन्वेंशन आविष्कार हो जाता है। जैसे अगर हम कहें पानी, तो पानी पर हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, वो उसकी खोज हो चुकी है। तो किसी कोई एक बेस होता है कि पानी है, पानी में हम लोग कितना पॉल्यूशन है ये रिसर्च के माध्यम से निकाल सकते हैं, उसमें कितना कैल्शियम है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको एक बेस की जरूरत होती है, तो बेस जो है वो पास्ट स्टडीज का है। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटी प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं, लैंग्वेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, क्वेश्चनर मेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग ये टेक्नोलॉजी जो है ये टूल्स और इसका टेक्निकली माध्यम से हम लोग इसका रिसर्च में यूज करेंगे, तो हमारी रिसर्च और रिफाइन होगी और बेहतर होगी। अब सपोज अगर आप एक स्कॉलर हैं और आप एक सिनोप्सिस लिख रहे हैं, और सिनोप्सिस लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में पहली चीज आती है, हमने ये मान लिया है कि आप विषय जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर विषय तक पहुंच गए हैं और उस विषय का ज्ञान आप रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लाइब्रेरी साइंस के हैं और आप यूजर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूजर स्टडी में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या लाइब्रेरी अगर बुक्स का यूज करता है तो क्या वो यूजर है क्या लाइब्रेरियन, या उसको एक्सक्लूड करेंगे, या केवल जो पढ़ता है वही यूजर है। तो हमको उस सब्जेक्ट के बारे में हमारी एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तब हम उस पर रिसर्च में जा सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने टॉपिक को ढूंढने के लिए अभी हम एक चीज और डिस्कस करेंगे बाद में कि पहले टॉपिक करना चाहिए, पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहना चाहिए। तो जब हम प्रिलिमिनरी स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो इनफ्लीब्लेड में जो है शोध गंगोत्री और शोध गंगोत्री और शोध गंगा, जिसका खूब लोगों ने जिक्र किया है पहले अर्लियर स्पीकर्स ने, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आप उसमें से आप अपने टॉपिक का देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और सिमिलर उस पर अपना विचार दे सकते हैं कि हम इसमें ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा एक यूनिवर्सिटी न्यूज आता है जो ऑफलाइन है। यूनिवर्सिटी न्यूज में पीछे दिए रहते हैं कि जो थीसिस अवार्ड होती है वो सारी थीसिस आप उसमें इंडेक्सिंग आती है उसकी। तो मुझे लगता है कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी न्यूज आती है, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं कि हम अपना टॉपिक किस तरह से चूज करें। इसके लिए आपके पास में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मटेरियल अवेलेबल हैं। और गूगल स्कॉलर का भी बहुत सारा जिक्र किया गया है, तो मैं बहुत इतनी डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप गूगल स्कॉलर है, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस हैं, रिसोर्सेज हैं, डेटाबेस है। क्योंकि जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं होगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे पानी है तो वाटर एक रिसोर्स है, अगर पानी है ही नहीं तो आपकी टेक्निक सारी बेकार है। टेक्निक्स किस काम में आएगी, काम ही नहीं आएगी, यूजलेस हो गई आपकी। तो अगर आपको टेक्निक यूज करना है तो आपके पास रिसोर्स भी होना चाहिए। तो रिसोर्स आपके चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म में हो या चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो, ठीक है। रिसर्च में लैंग्वेज का मैंने बोला था कि लैंग्वेज जो है ना वो अपनी हमारी प्राथमिकता होती है। तो लैंग्वेज के लिए एक तो हमारे पास में अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारे शब्दकोश हैं, डिक्शनरीज हैं और इंसाइक्लोपीडिया है, इनका यूज कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये, ताकि आप जो है राइटिंग आपकी करेक्ट हो, ग्रामर करेक्ट हो, क्लियर राइटिंग हो, उसमें वर्ड का सही चयन हो, सेंटेंस सही हो, पैराग्राफ सिस्टमेटिक हो, रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि पहला पैरा कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो उनके अंदर आपस में रिलेवेंसी हो। अगर हमको भाषा में दिक्कत आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो यूनिकोड सिस्टम है उसका मुझे लगता है ये सब लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप सिस्टमेटिक उसका यूज करें। तो अगर आपके पास लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, जैसे कल इसमें गूगल ट्रांसलेटर मराठी भी है, तो मराठी आजकल एक मराठी लिटरेचर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। अभी मेरी एक बार सेज से बात हुई थी, तो
इतना डेवलप हो रहा है, तो आप लोगों को अगर हिंदी आती है तो हिंदी से मराठी में अच्छी किताबों का ट्रांसलेशन करके आप लोग अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं गूगल स्कॉलर की मदद से। तो ये आपको यूज कर सकते हैं। और ग्रामरली के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रो राइटिंग एड है, लैंग्वेज टूल है, लर्न इंग्लिश ग्रामर है, पेपर कटर है, और ग्रेड प्रूफ है। अगर लैंग्वेज बैरियर है तो मैंने वही बोला कि आप यूनिकोड का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, और उसका यूज कीजिए। जैसे मैंने ये करके बताया है कि आप गूगल में आपकी कोई Hello. Yeah, we are trying to connect Chandel sir back. I request participants to please wait. Just give us 10 seconds to connect again with Chandel sir. Chandel sir, please unmute your system. क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? हाँ जी sir. We lost you midway. If you could go 5 minutes back to where you were, and please Yeah, continue from there. this is the drawback of technology. Yes, sir. Like everything in life, this is also not 100% Yeah. reliable. हाँ, नहीं, ये वन वे है, मतलब हम बोले जा रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा But है। we haven't lost a lot. तो आप बस 2-3 जी मिनट पहले का एक बार आप प्लीज कनेक्ट करिए फिर से। जी जी जी, स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। जी जी। अभी हम दोनों लेक्चर साथ में क्लब कर लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस,
So I think we have discussed content management software, bibliometric analysis. You have listened that? हेलो मोहित जी, यस सर यही से जी सर, यहीं से स्टार्ट करना है? जी सर टूल्स फॉर रिसर्च से सर पिछली वाली स्क्रीन से शुरू कर लीजिए 17 नंबर से सर प्लीज। 17 से। यस सर, ओके सर, थैंक यू। तो वी फॉर जो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे कि हमने एक जो पहले पिक्चर दिखाई थी कि पानी जो है ना वो किस तरह से टेक्निक्स में यूज किया जाता है, कि पहले बाल्टी से पानी निकालते थे, फिर ऐसे जिस तरह से। तो हमने समझाने का प्रयास किया था कि टूल्स उसमें क्या क्या थे, कि जैसे उसमें बकेट थी, रस्सी थी, है ना, मेन पावर था। इसीलिए अगर हम इसको सिमिलर अगर रखते हैं कि रिसर्च में, तो हमने कुछ कट पेस्ट किया है गूगल से ये फिगर लेके। तो जो साइटेशन आप लोग बोलते हैं ना, अभी बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं साइटेशन पे, तो ये हमने वहां से लिया है, पर हमने साइट नहीं किया कहाँ से लिया, तो पिकअप किया वहां से सिर्फ इसलिए कि समझाने के लिए। तो इसमें डेटा कलेक्शन टूल्स जो है, इसमें जैसे फोकस ग्रुप है, यूजिंग डेटा है, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज है, दीज आर द टूल्स, है ना। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स की बात करते हैं तो मेल है, फोन है, ऑनलाइन है, फेस टू फेस है, ठीक है। अगर हम किसी को क्वेश्चनर भरवाना चाहते हैं और उसको मेल भेजा है और मेल के माध्यम से हमारा क्वेश्चनर वापस आ रहा है, तो दिस इज द टूल, ठीक है। अब वो हमारी आगे फर्दर हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल टू कैरी आउट रिसर्च, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और अलग अलग स्टेजेस के लिए, अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे रिव्यू के लिए है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए है, एनालिसिस के लिए है, रेफरेंसेस के लिए है, केस स्टडीज, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चनायर, इन सभी के लिए टूल्स अवेलेबल हैं रिसर्च में। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और बताएंगे कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे उसका। लेकिन ये हमको डिसीजन लेना है कि किस टूल का उपयोग कहाँ करना है, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस होना जरूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कि कुएं में पानी है, अगर पानी ही खत्म हो गया तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रहेगी। तो टेक्नोलॉजी तब काम करती है जब आपके पास रिसोर्सेस हो। सिमिलरली अगर आपके पास में रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास में रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो नहीं है, आपके पास में संसाधन नहीं है, जो बुक्स है आपके संसाधन है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो ई फॉर्मेट में हो या ऑफलाइन अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो, पर आपके पास में संसाधन तो होना चाहिए। संसाधन होंगे तभी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। सो ये है। दूसरा ये है कि माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम के लिए आपको दूसरा ये है कि जो भी आपके पास में संसाधन है उनका हमको समझना होगा कि उनका राइटिंग पैटर्न क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं, ठीक है। जैसे चेंजेस का टेक्निकल चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हुआ, क्या हमको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे। जैसे पानी है, तो पानी की जो अवेलेबिलिटी अगर सरफेस पे है तो उसको जरूरत नहीं होगी टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना। या अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो कितनी जरूरत है, या उसके पास में फाइनेंशियल उसके पास में वो नहीं है, या उसकी अप्रोच नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए वो यूज नहीं कर पा रहा है। तो कई सारी चीजें होती हैं जिसके कारण यूज और अनयूज हो सकता है उसका, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे आगे अगर हम कहें कि भाई हमको रिसर्च में टेक्नोलॉजी यूज करना है, लेकिन अगर हम गाँव में जाएंगे तो बोले वहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है, तो हमारी टेक्नोलॉजी अब वहाँ पे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे तो आप यूज कर सकते हैं, आपके पास में एक्वागार्ड है तो आप फिल्टर पानी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक जो रिमोट गांव में है उसके पास तो वो वही पानी है जो उसको पीना है कुएं का, चाहे उसमें मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, फ्लोराइड हो, वो बाध्य है उसको करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में जो चीजें हैं वो आप सभी जगह इम्प्लीमेंट हो सकती है वो। तो यही एक रिसर्च का एक मेन वो होता है कि, और ये भी नहीं डिनाई कर सकते हैं कि वहां के लिए वो चीज जो है ना वो यूजलेस है, ठीक है। उनके लिए वही टूल्स सफिशिएंट है, एडिक्वेट हैं, जो जिस एनवायरनमेंट के लिए हैं वो। तो you can use online resources, offline resources,
गूगल स्कॉलर और बहुत सारे डेटाबेस जो हमारे अर्लियर स्पीकर्स ने बताए हैं वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो इम्प्रेशन, एक अर्लियर स्पीकर हमारे पहले बोले थे कि इम्प्रेशन जो है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत लास्ट इम्प्रेशन, तो इस तरह का जो बोले तो वो इसके लिए भी यही है भाई कि अगर आप एक पेज लिखते हैं और वो अगर अच्छा पेज लिखा हुआ है, आपकी वर्डिंग अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो निश्चित है आपका पैरा अच्छा है, तो उसका इफेक्ट जो है ना रिसर्च की क्वालिटी पे पड़ता है, निश्चित पड़ता है। तो अब उसको करने के लिए आपके पास में कुछ टूल्स हैं। दूसरा ये कि हर जगह टूल्स काम नहीं आता, कुछ आपको रिलेवेंसी भी यूज करना पड़ेगी कि जो पहला पैरा है और दूसरा पैरा, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आपने 2 पैरा लिखे, दोनों पैरा में आपस में रिलेवेंसी है कि नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपकी टेक्नोलॉजी कोई मदद नहीं करेगी। ये टेक्नोलॉजी आपकी गैप फाइंडिंग्स में मदद करेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको सेल्फ डिसीजन लेना है। तो आप क्लियर राइटिंग हो आपकी, इफेक्टिव हो, वर्डों का जो वर्ड है वो सही चुने जाए, सेंटेंस का फॉर्मेशन सही हो, पैराग्राफ सही हो, आपस में रिलेवेंसी हो, और राइटिंग आपकी इफेक्टिव हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अगर आपको इन चीजों में दिक्कत आती है तो आपकी थोड़ी बहुत मदद गूगल ट्रांसलेटर कर सकता है। जैसे आप अगर, ठीक है, आपके पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, आप हिंदी में करना चाहते हैं और लिटरेचर सारा इंग्लिश में अवेलेबल, बहुत सारे लड़के आते हैं, बहुत सारे मुझे लगता है कि एपी असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लोग आते हैं और बोलते हैं सारा मटेरियल इंग्लिश में आपके यहाँ, बोले हमको तो दिक्कत आती है तो हम नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये है कि आप उनको समझाएं आप कि आप इसको ऐसा कीजिए, स्कैन कर लीजिए, या आपके अगर अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में है तो कट पेस्ट करके इसका गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए। इवन गूगल में तो आजकल लोकल लैंग्वेज भी अवेलेबल है, आपके पास में मराठी भी है ना, जो भी लोकल लैंग्वेज है वो भी अवेलेबल है, तेलुगु है, तमिल है, सारी अवेलेबल है। तो आप उनको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी से उसमें कर सकते हैं, तेलुगु को इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये अलग मैटर है कि वो पूरा सही नहीं करता है तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज तो आपको आती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब बात शुरू की थी तो मैंने यही कहा था कि आप वो लैंग्वेज लो जिस लैंग्वेज पे आपका कमांड हो, क्योंकि अगर आपके विचार जिस भाषा में आते हैं, अगर वो उसमें आप काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। लेकिन जिसमें आपको विचार नहीं आते हैं और फिर आपने वो भाषा का चयन कर लिया तो आप गलत शब्द यूज करेंगे, है ना, फिर आपको किसी की प्रशंसा करना है और आपने उसको गाली दे दी तो ऐसा काम हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके बीच में कंटिन्यूटी होना चाहिए, इसके बीच में रिलेवेंसी होना चाहिए, इसलिए इसका यूज करना चाहिए। अब एक और चीज है कि लोग क्या बोलते हैं कि हमको तो सब कुछ मालूम है ना, तो केवल जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसका अनुप्रयोग भी करना चाहिए। केवल इच्छा प्रकट करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हमको कुछ काम भी करना चाहिए। तो ये आपको सब कुछ मालूम है कि गूगल ट्रांसलेटर है, ये कर देता है, लेकिन आप करते नहीं। तो अगर आपको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है और आती है तो आपका काम चल जाता है, लेकिन अपनी भाषा में आप सोच सकते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, या इंग्लिश, सपोज आपके पास में इंग्लिश में लिटरेचर अवेलेबल है और आप हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप उसके भाव समझ सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश में आपका कन्वर्ट हुआ है उसके भाव आप समझ सकते हैं और अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए गूगल ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी रिसर्च में। ठीक है, तो अब ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर है। अगर आपको बैरियर है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप चूज सबसे पहले वही करें जिसपे आपको कमांड है। अगर आपका कमांड नहीं है तो उस लैंग्वेज को आप छोड़ दें, वो केवल संप्रेषण के लिए ठीक है कि आपको कहीं मजबूरी हो गई तो आप अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। जिससे बात तो अपनी गूगे और बहरे ये भी करने का तरीका आ गया, वो भी अपने इशारों से कर लेते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बात एक्सपर्टाइज की आती है तो आप वही लैंग्वेज चुने जिसमें आपका बेहतर कमांड हो, दोनों में से। और कुछ फिर रेक्टिफिकेशन के लिए दिए हुए हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, ग्रामरली है, जिंजर है, रिवर्सो है, ये बहुत आपको ऐसी मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको कोई वर्ड चेंज करना हो, कोई ऐसा वर्ड जो इफेक्टिव लाना हो, तो वो आपको देगा कि इसको ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो आप उसमें से जो इफेक्टिव हो वो चूज कर लेना। मेरी एक आदत है कि मैं सुबह गुड मॉर्निंग का एक कोटेशन भेजता हूँ। तो कोटेशन पहले मैं, कई साल हो गए मुझे भेजते हुए इसको, 5-6 साल हो गए मुझे लगता है।
तो पहले मैं इंग्लिश में भेजता था तो बहुत सारे लोग उसको देख लेते थे लेकिन कोई जवाब नहीं देते थे। फिर एक दो लोगों ने हिम्मत करी और मुझे लिख के भेजा कि सर आप मुझे हमेशा ये इंग्लिश में भेजते हैं और ये मुझे तो समझ में नहीं आता क्या है। तो और बोले मैं भी ऐसे कैसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। तो बोले एक सीनियर व्यक्ति हैं जो बॉम्बे के थे, उन्होंने कहा कि तुमको तो इंग्लिश नहीं आती और तुम इतने अच्छे कोटेशन कहाँ से लिखते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे एक मित्र है, मैं उनसे लेता हूँ भेजता हूँ। फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहिए। तो फिर मैंने उसका गूगल से ट्रांसलेशन कर देता हूँ, जो क्वार्ट्स भेजता हूँ, जैसे चाणक्य का है किसी का मैंने लिया उसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। तो जब ट्रांसलेशन करता हूँ तो वो ट्रांसलेशन एक्चुअल नहीं करता है, वो क्या है कुछ डिफर करता है कुछ भी। जैसे मैंने कहा ग्रामरली अनुवाद करता है, तो वो ग्रामरली अनुवाद करता है तो ग्रामरली को वो एक नाउन लेता है वो, ठीक है ना, लेकिन वो ग्रामरली सॉफ्टवेयर वो नहीं जानता है। तो इस तरह से अगर आप करने लग जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपको इस तरह की हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं रहा, क्योंकि अगर आपके पास में आपने उसको इंग्लिश में है, आपने उसको ट्रांसलेशन कर लिया, वो मंगल में आएगा, मंगल को आप कृतिदेव में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका कृतिदेव में आ जाएगा, और उसको जहां मर्जी है जैसे मर्जी आप उसको एडिट कर लें, आपके पास में वो मटेरियल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई आपके पास में मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने किया है इसको कि कुछ मटेरियल लिया इंग्लिश का, उसको पेस्ट किया और फिर उसको कन्वर्ट किया, ये इंग्लिश का कन्वर्ट किया। और ये देखो मैंने लिखा व्हाट डज ग्रामरली डू, तो क्या लिखा उसने, ग्रामरली को क्या लिखा उसने, व्याकरण क्या करता है, वो नहीं जानता कि ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, तो वो उसको एज इट इज कर देता है। लेकिन हमको मालूम है कि ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, चूंकि मैं विषय जानता हूँ, इसलिए मैं वो जो पहले सबसे पहले बात कही थी उसी बात पे वापस आ जाते हैं ना, कि रिसर्च में घूम घूम के आते हैं वहीं पर है। तो आपका अगर कमांड है, आप वो भाषा चुन रहे हैं जो आपको जानते हैं। अगर आप फेमिलियर हैं कि ग्रामरली क्या है, आप सॉफ्टवेयर जानते हैं, तो आप तुरंत कह देंगे कि हाँ भाई ग्रामरली जो है ना वो क्या करता है, ये व्याकरण क्या करता है नहीं करेंगे, आप ये लिखेंगे ग्रामरली क्या करता है। Grammarly is a writing tool that helps to check for several types of errors, ठीक है। तो अब वो उसका ट्रांसलेशन उसने कर दिया कि व्याकरण एक, जबकि कहना क्या चाहिए था उसको कि ग्रामरली एक राइटिंग टूल है, लेखन उपकरण है, तो उसने क्या लिख दिया, उसको व्याकरण लिख दिया। तो ये आप अपने विवेक से आप अपना स्वयं का डिसीजन लें और फिर उसमें से ये चीजें क्लियर करें उसको कि कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आपके लिए उसमें प्रमोट करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करके मैंने बताया कि ये जो कृति इसमें दिए हैं तो यूनिकोड देखो ये यहाँ पे दिया है, ये कृतिदेव है। अगर आपके पास कृतिदेव मंगल में करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए, इसका उल्टा करना तो आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, तो ये कृतिदेव दे देगा। ये दोनों काम कर सकते हैं आप इसमें से, ठीक है। और फिर आप अपना सिंपल उसमें टेक्स्ट में कर सकते हैं। ये ग्रामरली चेकर है, गैप्स भी करता है। ये न्यू फ्रॉम रिवर्स, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसका एक मैंने थोड़ा क्लिप दिया कि आप देख लें कैसे, कि फ्रेंच है, रशियन है, इंग्लिश है, ये सारी चीजें दे रखी इसमें। स्पेल चेकर है, ग्रामर स्टाइल एंड स्पेल चेकर लैंग्वेज टूल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है। अभी हम सारी चीजें आपको स्केडर्ड आपको लग रहा होगा कि सब पूरा फैला हुआ बता रहे हैं, है ना। इसको समाप हम बाद में करेंगे, अभी कैसे करते हैं ये देखना, यही रिसर्च में करते हैं। तो हमने जो टाइटल था ना उसको फ्रंट पूरा फैला दिया है उसको, अब इसको समअप कैसे करेंगे। तो रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो डिस्क्रीट साइंटिफिक एंडेवर है टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। ए सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, जो एक कुछ क्वेरी होती है, जैसे गवर्नमेंट कुछ कराना चाहती है कि जैसे जवाहर रोजगार योजना है या मनरेगा है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करेगी उसके ऑब्जेक्टिव बना के, और फिर उसको उसके आधार पे वो डिसाइड करेगी कि ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये दिस में भी कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। तो किसी लॉजिक आधार पे, मतलब तर्क संगत आधार पे और सिस्टमेटिक वे में उसको लाता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हुआ, इसमें मतलब टाइम जो है ना, स्टार्टिंग और इन डेट दोनों का टाइम फ्रेम फिक्स होता है इसमें। जबकि आपकी जो ओपन रिसर्च होती है, जो जैसे आपको पीएचडी का है, उसमें टाइम फ्रेम दिए यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये आपको
किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्वयं डिफाइन करता है, इसमें आपको डिफाइन करना है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, इसमें डेटा कलेक्शन में इतना, रिपोर्ट राइटिंग में इतना, ये तो इसमें दोनों का टाइम होता है, क्रोनोलॉजिकली बाइंडिंग होती है इसमें। रिसर्च प्रपोजल जो है वो दो पार्टियों के बीच का एक प्रस्ताव होता है कि वो क्या कराना चाहते हैं और हम क्या करके देना चाहते हैं, और दोनों के बीच में निगोशिएशन होता है, वैचारिक भी और फाइनेंशियल भी। अगर वो आगे बात होती है, एक्सेप्टेबल होता है तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। तो ये हम लोग इसीलिए जो प्रोफेसर हम लोग देखते हैं ना कि अप्लाई करते हैं, प्रपोजल जाता है एजेंसी को और वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, तो वो यही है कि दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट अगर सक्सेस होता है इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो दैट कैन बी सस्टेन्ड in terms of time. Many more variables may be added to that proposal. So this is the way we define a proposal and research project. तो रिसर्च एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का जो बार बार ये कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि जो आज रिसर्च आ गया वो कल के लिए और के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है उसके फर्दर के लिए, तो उसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, ठीक है ना, फर्दर रिसर्च। अब रिसर्च प्रपोजल का जो की सेगमेंट है वो क्या होता है, जो मेन चीजें होती है वो क्या क्या हम देखते हैं, वो देखते हैं कि चाहे वो रिसर्च प्रपोजल हो, ये बहुत सारी चीजें सब में कॉमन ही होती हैं। तो रिसर्च प्रपोजल जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग सेगमेंट्स। इंट्रोडक्शन, अब सिनॉप्सिस बनाते हैं उसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, कॉमन हो गया। अगर हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, सब में इंट्रोडक्शन कॉमन हो गया, ठीक है ना। रिसर्च प्रपोजल जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग सेगमेंट, इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। तो कंटेक्स्ट भी और बैकग्राउंड ये सभी जो है ना, हम जितने भी तरह की रिसर्च होती है सभी में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। लिटरेचर रिव्यू भी सब में कॉमन है, चाहे हम प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं, एक्सपर्टाइज रिसर्च हो, या लर्नर्स रिसर्च हो, या बिगिनर्स रिसर्च हो, है ना, तो उन सभी के लिए सेम है। लिटरेचर रिव्यू भी दोनों में ही होता है, या अगर हम रिसर्च पेपर लिखते हैं दोनों क्या है, मल्टी फॉर्मेट में बोले हम, कि चाहे हम वर्किंग पेपर लिखें, सिनॉप्सिस लिखें, या थीसिस राइटिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सभी में लिटरेचर रिव्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना उसके हम वो बेस है हमारा, क्योंकि बेस के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आपका भूतकाल का वो नहीं होगा, संसाधनों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो यू मस्ट गो थ्रू लिटरेचर रिव्यू। अब एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि पहले लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए या पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, या पहले टाइटल होना चाहिए? आप लोग इस पे विचार करें कि लिटरेचर रिव्यू पहले करना चाहिए या पहले टाइटल थीसिस का जो है वो पता लगाना चाहिए, सर्च करना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग आपस में डिस्कस भी करना, पर मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ कि सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू के आधार पे फिर आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ गैप्स हैं, कहाँ गैप्स नहीं हैं, और उसके आधार पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं हमारे टॉपिक के लिए, और वो टॉपिक कितना सुटेबल है हमारे लिए, क्या हमारा एक्सपर्टाइज है कि नहीं है, क्या हमारा इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं है जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू मुझे लगता है कि पहले लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, और इसके बाद में सारे लेवल सेकेंडरी लेवल पे ले जाना चाहिए। फिर इसके बाद में रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी भी सभी में यूज करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन भी सभी में यूज करते हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव भी सभी में होते हैं, और रेफरेंसेस भी, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस का यूज करते हैं। लिस्ट में भी आर मे नॉट बी, अगर कोई लगाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बिब्लियोग्राफी में लगाता है, पर वो हम जो उसका सेट फॉर्मेट है उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, पर ये सभी यूज होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज सबमिटेड एट द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। जब रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, मतलब काम, रिपोर्ट क्या है, उसकी एक्टिविटी है, काम कैसे काम किया गया, जो हम A to Z कहते हैं कि व्हाट यू से यू डू। रिपोर्ट ये है कि जो जो आपने कहा है, जो जो आपने किया है, वो सारी चीजें डिस्क्राइब करना है, तो वो सारी आपकी रिपोर्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट बेसिक चीज है, तो उसमें फाइंडिंग्स होती है, एनालिसिस है, कंक्लूजिंग है, कमियां क्या है, क्या रिकमेंडेशन हो सकती है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है ना, वो अगर हम
एज ए स्टूडेंट हैं और यूज करते हैं तो थीसिस डिसर्टेशन के फॉर्म में हो सकती है। लेकिन पहले सिनॉप्सिस हो गई, इधर प्रपोजल था तो आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। अगर उधर सिनॉप्सिस है तो इधर आपको थीसिस और डिसर्टेशन लिखना है। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि एक सिनॉप्सिस और प्रपोजल में डिफरेंस क्या है, जो एक स्टूडेंट और एक गाइड में डिफरेंस है कि जब आप जब आप मेच्योर हो जाते हैं, जब आप एक पीएचडी कर लेते हैं, तब आप यू आर एबल टू डू प्रोजेक्ट। ठीक है? और तब आप इंडिपेंडेंटली आप हैंडल कर सकते हैं उन चीजों को। So research reports are usually longer than the research proposal since they contain step-by-step process of the research. तो longer in the sense कि उसके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारी पीएचडी कितने पेज की लिखूं, ये है वो। तो उसके लिए मेरा कहना ये है कि पेज जो है ना वो मायने नहीं रखते हैं। आप सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उतना आप लिखिए उसमें। और अगर 100 पेज की भी होती है या 25 पेज की भी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी साइंटिफिक रिसर्च है या लिटरेचर रिसर्च है, बेस्ड ऑन द क्रिटिक है, किस तरह की है। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेजेस पे। तो आप पहले से माइंडसेट को इस तरह का मत क्रिएट कीजिए कि मुझे इतने पेजों में लिखना है, और इसको ओपन रहने दीजिए। अब एक रिसर्च पेपर जो है वो किस तरह का होता है आप देखिए, उसमें क्या क्या रिसर्च पेपर में होता है। टाइटल कंक्रीट मतलब एक ठोस, जिसमें कोई कमियां ना हो। मतलब एक टाइटल ऐसा जो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, आपके इंटरेस्ट का हो, जिसमें आपकी समझ हो, है ना, जिसको आप अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को। तब आप उसको कहें कि जिससे मैंने बोला कि एक लड़का है जो स्टार्ट करता है सोशियोलॉजी मैथमेटिक्स ये, और धीरे धीरे करके उसका मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स में उसको फिर फजी और ये सब चीजें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, कैलकुलस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको वैदिक मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। तो फिर वो कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हमको रिसर्च करना है। तो वो मतलब अब अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे करना है तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको सारी चीजें आना चाहिए। तो जो टाइटल फिर वो जब ढूंढ के सर्च करके लाएगा तो वो लाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसको कहाँ यूज करना है, तो वो उसको देगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन वैदिक कीड़ा, है ना। तो फिर वो देखेगा उसमें क्या है। तो एक इस तरह से अपना टाइटल बना लिए। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसमें क्या 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 होता है कि फर्स्ट पैरा जो है वो इंट्रोडक्टरी और समरी होती है विद कीवर्ड्स। जब हम पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर टाइटल आता है, टाइटल के बाद में फिर एक छोटा सा ऑब्स्ट्रैक्ट, कोई समरी की जगह कोई ऑब्स्ट्रैक्ट जर्नल में लिखा होता है। तो ये फॉर्मेट अलग अलग जर्नल अपना अलग अलग मांगते हैं, सबका अलग होता है। और उसी के नीचे कीवर्ड्स रहता है। अब कीवर्ड्स के लिए हम पहले बात कर चुके हैं हम लोग कि कीवर्ड्स कौन से होना चाहिए, जो जिसका कुछ मीनिंगफुल जो हो टाइटल का, या जो आपके कंटेंट है, जो थीसिस के जो कंटेंट है उसमें ऐसे वर्ड जो मेजर मीनिंग रखते हो, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो, मेजर मीनिंग हो, वो चीजें कीवर्ड्स में आती है। अगर सब आपके टाइटल में वो चीजें जिनका कुछ मीनिंगफुल इंप्रेशन हो, अगर ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं आता और आपने उसको कीवर्ड में डाल दिया, या वो उसका यूज ही नहीं हुआ और आपने कीवर्ड में डाल दिया। तो कीवर्ड, ये भी लोग पूछते हैं कि कीवर्ड्स कौन सा होना चाहिए। कीवर्ड्स मीनिंगफुल इंप्रेशन होना चाहिए, वो सब लेना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम वही लिखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया है, कि कोई चीज किस कॉन्सेप्ट पे तैयार हुई है, कहाँ कहाँ से आपने रिव्यू करके जो लिखा है, जो बनाया है, कि जो टाइटल से संबंधित है उसके बारे में आप बताएं उसको कि किस किस तरह से यूज करना है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप लाइब्रेरी साइंस में, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि यूजर सर्वे करना है आपको, तो यूजर सर्वे आपको कहाँ करना है, इंटरनेशनल लेवल पे करना है या नेशनल लेवल पे करना है या लोकल लेवल पे करना है। तो सारी प्रायोरिटीज अलग हो जाएंगी। लिटरेचर की जो कंटेंट है वो भी डिफरेंट होंगे। सपोज यू आर कंडक्टिंग सर्वे ऑन लोकल लेवल, तो आपके भोपाल की जो लाइब्रेरीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में वर्णन होगा। उनके जो यूजर्स हैं उनके बारे में होगा कि वो यूजर्स किस के हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और एजुकेशन पॉलिसी भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह की है, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं होगी, जब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि भाई उनका जो सर्वे कर रहे हैं कि
वो जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं कि जिस जो हम उन चीजों से पूछने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, कि हम उनसे बोलेंगे कि भाई कि आप इसकी कोई अच्छी किताब रिकमेंड कर दीजिए, और आपने कभी की कि नहीं की, तो वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे, रिस्पॉन्स सही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़े नहीं है। तो ये हमको देखना होगा कि कौन सा है, और यूजर की कैटेगरी क्या है, यूज किस तरह से करता है, कि जैसे बुक का उपयोग लाइब्रेरियन भी करता है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स भी करते हैं, और यूजर भी करता है। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया, ये अलग हो गया दोनों। तो ये चीजें डिफाइन होना चाहिए। फिर आपके जो टॉपिक, मेन टॉपिक है, उस पर फोकस होना चाहिए, है ना। और सबसे ज्यादा जो टॉपिक से जो वेरिएबल निकलते हैं, ठीक है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, उस पेपर जो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसकी में इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे जो अडॉप्ट किए जाएंगे आपके पास में। सर ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन, हेलो, तो हम सुन पा रहे हैं आपको जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ जी, हाँ, वो मेरे पास एक ब्लिंक करते हुआ एक आइकन आया था कि ये डिस्क, सो हेलो रिसर्च, हाँ जी, हाँ जी, सर, सो हाँ मैं ठीक है, ठीक है, बात करता हूँ ओके, आपका। हाँ जी, मैं वीडियो 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ताकि जो ऑडियो है वो बच्चों के लिए क्लियर रहे, सब पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लियर रहे। मैं हाँ कर अभी के दीजिए, लिए आपकी वीडियो हटा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन सबको दिख पा रही है, और हाँ ठीक आपकी है, ऑडियो है वो और क्लियर आएगी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। ठीक, ओके। तो रिसर्च मेथड्स मेजर करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं। पायलट टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बहुत सारे लोग रहते हैं, ये बोलते हैं कि सर हमने सर्वे कर लिया और उसका रिजल्ट इस तरह का आता है। तो अब एज ए एक्सपर्ट हम ये बोलेंगे कि जब आप सर्वे करके पहली बार सर्वे करके लेके आ जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि बहुत सारी वेरिएबल्स छूट गई हैं। तो आप इसके पहले आप अगर पायलट सर्वे करते हैं तो आपको मालूम होता है कि हमको ये चीजें और शामिल करना चाहिए था, ये वेरिएबल्स और शामिल करते तो ये और अच्छा हमारा रिजल्ट आता उसका। ठीक, फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, ओवरऑल मेजरमेंट्स, जो काई स्क्वायर टेस्ट है या कोरिलेशन रिग्रेशन, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो यूजिंग वेरियस डिवाइसेस, एसपीएसएस या एक्सेल या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनका उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद में फाइंडिंग्स है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, कंक्लूजन में इम्प्लीकेशन, स्कोप, फर्दर रिसर्च, लिमिटेशन, सारी चीजें लिखना है, रेफरेंसेस यूज करना है, और रेफरेंसेस को हर चैप्टर के लास्ट में देना है। अभी हम बताएंगे उसको कि कैसे रेफरेंसेस यूज करना है आपको। और फिर इसके बाद में जैसा कि अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि चेक फॉर प्लेगरिज्म के लिए भेजना है आपको और सबमिट करना है, और अगर पॉसिबल तो पब्लिकेशन के लिए बाद में सबमिट करने के बाद में जहाँ भी आपको जो भी पब्लिकेशन अथॉरिटीज है वहाँ पे अगर भेजना चाहते हैं तो करते हैं। उसकी भी बात हम करेंगे कि अगर आप इसको पब्लिकेशन के लिए आप अपने आप को कैसे एडवर्टाइज करें जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एक पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी में क्या 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 चीजें होती हैं, कि जो पीएचडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसे है, कि फ्लो ऑफ टॉपिक क्या होना चाहिए, है ना। रिगरस इंट्रोडक्शन जो है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिगरस इंट्रोडक्शन इसमें इसलिए है क्योंकि बिल्कुल पिन पॉइंटेड होना चाहिए, रिलीवेंसी होना चाहिए, एग्जैक्टनेस होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी आपने लिख के तैयार कर दिया 20 पेज का, बोले हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसा कि पेपर में होता है वैसा यहाँ पर भी है, सेम चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विद रेफरेंस एंड रिसर्च स्किल्स। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि लोग अभी भी मैं देखता हूँ कि जो रिसर्च मेथोलॉजी लिखते हैं तो उसमें पूरा लिख देते हैं कि सैम्पलिंग क्या है, क्वेश्चनर क्या है, जबकि ये नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि आपकी रिसर्च की मेथोलॉजी क्या है, आप अपने रिसर्च में कौन सी स्टेप किस किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपकी मेथोडोलॉजी है। आपने कौन से टूल्स टेक्निक्स लिए हैं, आपने एक्सेल यूज किया है, आपने एसपीएसएस यूज किया है, काई स्क्वायर यूज किया है, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि कुछ नया ऐसा होता है, इंटरव्यू शेड्यूल ये होता है, लोग पूरा का पूरा इसी में पूरा एक चैप्टर ही बना देते हैं इसका। तो ये चीजें हम लोगों को अवॉइड करना है। थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग,
जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने एनालिसिस किया है, उसके बेस पे जो आप कुछ डिसीजन देंगे, जो कुछ डिस्कस देंगे, जो कंक्लूजन देंगे, वो सारी फाइंडिंग्स हैं। फिर उन्हीं की उसका स्पष्टीकरण, व्याख्या, कंक्लूजन उसका देना है, ठीक है ना। और उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, आपने जो रिसर्च की है उसका कोई इम्प्लीकेशन भी है कि नहीं है, कि आपने करके पीएचडी हो गई या आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया या पड़ा है। अब वो अलग मैटर है कि आपका प्रोजेक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने कराया और वो उनके फेवरेबल नहीं है, रखते हैं नहीं रखते हैं, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन आपकी तरफ से तो बहुत ऑनेस्टी ऑनेस्टली ये चीजें की जानी चाहिए। और इसीलिए एक चैप्टर इसमें होता है कि रिसर्च एथिक्स जो है वो ठीक होना चाहिए, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप बायस नहीं हो, ये सब चीजें हैं। और बाकी चीजें फर्दर छोड़ देना चाहिए। फिर लिमिटेशंस विद सेल्फ क्रिटिक अप्रोच, जो आपने लिखा उसकी खुद ही आप आलोचना करके देखें, तो आपको आपकी खुद की कमियां समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं आता तो आप अपने कलीग्स को एक बार दिखा लीजिए, कई बार अपनी गलती नहीं पकड़ में आती है तो कोई दूसरा देख सकता है। आप उसकी जो भी आपकी रिसर्च है उसको फ्यूचर से लिंक कीजिए, और फ्यूचर के लिए नए प्लेटफॉर्म दीजिए, कि अगर नई जनरेशन आती है तो वो भी आप उनको फोरम की भाई हम, क्योंकि रिसर्च तो बहुत बड़ी होती है, हम एक छोटा सा पार्ट करते हैं, तो जो नहीं कर पाते तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमने ये काम किया है और बाकी ये काम बचा हुआ है, तो जो भी आगे कोई करना चाहे तो ये उसके लिए ब्रांचेस हैं, ये इस पे काम कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको वो आगे एक्सटेंड कर सकता है। एंड रेफरेंसेस, अब यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन रिसर्च, जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज, कौन से इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो किस रिसोर्स का किस तरह से यूज कर सकते हैं हम, वो होता है कि जैसे अगर आपको टॉपिक एक्सप्लोर करना है तो आप क्या कीजिए, शोध गंगोत्री या शोध गंगा में देखिए, वहां से आपको एक कुछ आउटलाइन मिलेगी, आपका इंटरेस्ट वहां से मिलेगा कि मेरा ये इंटरेस्ट है, उसमें से कुछ चूज कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज कि आपके यूनिवर्सिटी न्यूज है, आप उसमें देखिए, तो आपको टॉपिक वहां से एक्सप्लोर हो जाएंगे। ठीक है, जब आपका टॉपिक मिल जाए, आपका समझ में आने लग जाए कि मुझे मेरा ये इंटरेस्ट है, तो फिर आप उस पर कुछ रिसर्च क्वेश्चन पूछिए, अपने मन से पूछिए, कुछ करिए। फिर आप ये बताइए कि आपकी रिसर्च स्टडी उससे कैसे अलग होगी, कैसे रेशनल होगी, कैसे आप बताएंगे कि जो अभी तक हुई है हमारी स्टडी उससे बिल्कुल अलग हटके है। ठीक है, उसके लिए क्या आपकी रिसर्च मेथड्स होंगे, किस तरह से करेंगे, तरीके क्या होंगे, है ना। रिसर्च को करने के लिए क्या उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी उसकी। फिर इसके बाद में आप उसका लिटरेचर रिव्यू कीजिए। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का पर्पज ये होता है कि जो आपके बीच में गैप है उस गैप को पूरा कर दिया जाए। जो थ्योरीज हैं, वो कॉन्सेप्ट है, जो भी हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करता है कि जो रिलीवेंट, जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके रिलीवेंट कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, वो सारी आपके उसमें कहीं आप एक नोट करते जाएं उसको, तो बाद में फिर उसको एक लिंक के माध्यम से, या हम जो मेंटलेस सॉफ्टवेयर है अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उसका यूज करके भी आप कुछ कर सकते हैं इस तरह का। अब सोर्स ऑफ, अगर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ही आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, तो यह सोर्स ऑफ इन्हीं का उपयोग आप मेंटले में भी कर सकते हैं, इनको सारे उसको कलेक्ट करके और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें रेफरेंस में बुक्स है, जैसे बुक्स में टेक्स्ट बुक है, स्पेशलाइज्ड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स हैं। तो टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है फॉर द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो मूल ज्ञान से परिचित कराती है, बेसिक आइडियाज होते हैं। ट्रीटीज जो होती है विशिष्ट विषय का वर्णन प्रस्तुत करती है। मोनोग्राफ्स हैं, किसी एक विषय या अथवा वस्तु पर विशिष्ट कृति होती है। रिप्रेजेंटेटिव बुक्स होती हैं जो किसी वर्ग की कृति को डिफाइन करती है। स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, इनका स्थायी महत्व होता है, ठीक है ना, विषय की अथॉरिटी माना जाता है, वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। क्लासिक बुक्स होती हैं, जैसे प्लेटो है, कालिदास है, सोक्रेटिस है, इन लोगों के। फिर कुछ संदर्भ के होते हैं, डिक्शनरीज है, इंसाइक्लोपीडिया है, जियोग्राफिकल सोर्सेस हैं, ईयर बुक है, एल्मनेक है, बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरीज हैं, एजुकेशनल रेफरेंसेस रिसोर्सेज हैं, डायरेक्टरीज हैं, हैंडबुक है, मैनुअल है, सीरियल है, पेटेंट्स स्पेसिफिकेशंस है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, बिब्लियोग्राफीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं,
इस तरह के बहुत सारे लिटरेचर है जो ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। कुछ आपके पास में भी होती है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज है, तो जब आपको लिटरेचर रिव्यू करना है तो आप उस जियोग्राफिकल एरिया के इंस्टीट्यूशंस हैं और जो उनकी लाइब्रेरीज है या जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो अब अगर हम बोलते हैं कि आपको सर्च कैसे करना है, कि जर्नल्स आर्टिकल्स पब्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का किसी फील्ड का है या ग्रे लिटरेचर है, ये सारी चीजें हैं। तो जब हम सर्च करते हैं सर्च में हमको क्या है कि टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। उसमें से हम क्या निकालेंगे सर्च स्टेटमेंट में से कि उसमें से हमको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा ये है कि हम लोग अगर चूंकि पहले लिटरेचर इतना ज्यादा नहीं होता था, अब लिटरेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पुस्तकें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन के कारण। तो अब हम लोगों को पहले 1-2 किताबें 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 किताबों में से हमको ढूंढना पड़ता था। अब हमारे पास अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो अब हमको क्या है कि कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो जिसके कारण हम उस जो सर्चिंग स्ट्रेटजीज हमारी उसको डिलिमिट कर सकते हैं, उसको लिमिटेड कर सकते हैं। तो हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, है ना। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अपने जो काम की किताबें हैं, जो हमारे इंटरेस्ट की किताबें हैं, उसके बारे में हम बुक्स और पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में अदर रिसोर्सेज भी जो है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या सपोज अगर आप सोशल साइंस में कर रहे हैं तो आईसीआर की वेबसाइट पे चले जाइए या सारी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए। अगर आप कोई इकोनॉमिक उस पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं तो आईएमएफ की वेबसाइट देख लीजिए, उनकी लाइब्रेरी देख लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके, उनको भी आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में जब आपके पास इतना सारा मटेरियल आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कलेक्ट कर लिया तो उसका इवेल्युएट कीजिए कि आपके काम का क्या है, उसको एक सही फॉर्मेट में लाइए। इसके बाद में पेपर लिखने के लिए और उसके बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट के लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार करें कि जिससे आप इजी वे में उसको कर सकें। फिर इसके बाद में जब आपके पास में जो टॉपिक आपने दिया है तो सर्च टर्म आपको मालूम होना चाहिए कि किस सर्च टर्म अगर से मिलने से आपका लिटरेचर पूरा मिल सकता है। नहीं है तो फिर आप उसके सिनोनिम्स ढूंढ लीजिए और सिनोनिम्स के माध्यम से उसको सर्च कीजिए तो आपका रिलेवेंट लिटरेचर मिल सकता है, ठीक है ना। तो सर्चिंग विद एग्जैक्ट, कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट फ्रेजेस, जैसे एजुकेशन है तो इंडियन एजुकेशन पे अगर आपको कोई किताब चाहिए तो केवल इंडियन एजुकेशन इन्वर्टेड कामा में लिख के भी कर सकते हैं। या कोई चीज ऐसी है जो आपको आधा याद आधा नहीं है तो आप एस्टेरिस्क करके एक स्टार लगा के पूरा एजुकेशन लिखा और स्टार लगा दिया तो वो एजुकेशन, एजुकेशनल, इस तरह की चीजें भी यूज कर सकता है। एंड आर शब्द जो बूलियन ऑपरेटर्स में यूज होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप सर्चिंग में। तो ये सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट हेडिंग में, बूलियन लॉजिक और साइटेशन सर्चिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास में वो वर्ड्स हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। फिर अगर हम आते हैं कि अगर हम रिसर्च को टॉपिक वाइज देखते हैं कि भाई किस चीज में हम कैसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल वे में हम बात करें तो टॉपिक ऑफ रिसर्च अगर हम करते हैं तो यूनिवर्सिटी न्यूज और इन्फील्ड से जो वेबसाइट है उसमें जाके हम देखते हैं और अपना वो कर सकते हैं। अगर हमको इंट्रोडक्शन लिखना है थीसिस का या उसका, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ब्राउज एंड रीड, मेक ए कॉन्सेप्ट फॉर द रिसर्च, ये चीजें आपको करना है। क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपको क्लियर करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है भाई, है ना। फिर आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होता है ना। तो उस सब्जेक्ट में से पर्टिकुलर फील्ड को चुनना कि भाई मेरा ये स्पेसिफिक टॉपिक है, उसकी पहचान करना और उसकी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ तक हैं, क्योंकि रिसर्च तो पूरी फैली हो रही होती है। आपको समेटना है कि भाई हमको इस दिशा में नहीं जाना, इस दिशा में नहीं जाना, केवल इस दिशा में ही जाना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपको एक स्टडी करना है जो मध्य प्रदेश की करना है, तो आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र
ये सारे स्टेट्स आपको बाहर करने पड़ेंगे, केवल उसी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशंस जियोग्राफिकल हो गया। ऐसे और दूसरी भी लिमिटेशंस पैरामीटर्स हो सकते हैं जो भौगोलिक के अलावा भी दूसरी चीजों को डिलिमिट करते हो। फिर जो भी आपके पास में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद में जो लिटरेचर आपने ढूंढा है उसको बार बार पढ़िए, तो उससे आपका बार बार पढ़ने से फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि इसमें ये चीजें, जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी और आप उसका एक कॉन्सेप्ट नोट इंट्रोडक्शन बन जाएगा आपका। फिर ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सर्वे, इसके लिए भी आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जो यूज करना होंगे, वो आप कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के लिए हाउ टू रिव्यू, अगर आपको ये देखना है कि रिव्यू कैसे किया जाता है तो एक इस पे भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन भी, और वैसे ऑफलाइन जो है वो बुक रिव्यू करके एक मैगजीन आती है, वो जो भी लेटेस्ट बुक्स रिलीज होती हैं उन सब के बारे में रिव्यू करके वो देता है। दूसरी एक और बिब्लियो नाम का एक जर्नल आता है, वो भी जो लेटेस्ट बुक पब्लिश होती है उन सब का वो रिव्यू देता है। तो इसके अलावा भी आप वेंडले, जोटेरो, इनका भी यूज कर सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, वो अभी हम थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करते हैं। For research analysis, you can use SPSS, Excel, etc. अब एक बहुत कॉमन चीज है जो लोग बार बार पूछते हैं कि जो टेबल होती है, टेबल को इलुस्ट्रेट भी करते हैं, उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी करते हैं और उसका टेबल भी बनाते हैं। जो डेटा है उसकी टेबल भी बना देते हैं, उसके ग्राफ भी बना देते हैं, और दूसरे अदर मोड ऑफ जो डिपिक्शन हो सकते हैं वो भी यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन, अदर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन भी यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए केवल एक ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरा मानना है कि जिसकी आपने अगर टेबल दे दी है तो उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ग्राफ क्यों बनाते थे? इसलिए बनाते थे कि जो जैसे कोई एक टेबल है, उस टेबल से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि भाई इसका इतना परसेंटेज है, इसका इतना परसेंटेज है, इस वर्ग का इतना परसेंटेज है ना। बुक्स, एक लाइब्रेरी में बुक्स का नंबर ये है, जर्नल्स का ये है। लेकिन कुछ अगर हमको किसी लेमैन को दिखाना हो तो उसी प्रेजेंटेशन को हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये हमको डिसीजन लेना है कि हमको कि कहाँ पे ग्राफ देना है, कहाँ पे ग्राफ नहीं देना है। अदरवाइज आप टेबल भी देते हैं, ग्राफ भी देते हैं, तो अननेसेसरी आप पेज बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप उन चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। तो अब हम बात आगे करेंगे कि एक्सेल, एसपीएसएस यूज करें, एक्सेल करें। अगर सर एक बार प्लीज चेक करिएगा कि क्या आप का करेक्ट स्लाइड दिख रहा है सामने? नहीं, मैं तो स्लाइड देखने बंद कर दिया मैंने तो। देखूं? नहीं, आप देखिए कि आप स्लाइड कौन से पे हैं, ताकि क्योंकि कुछ नोट्स जो ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स उनके लिए थोड़ा आसानी रहेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर आप देखें कि आप उसके साथ ये तो हो गया है सर। आगे हम एसपीएसएस पे थे तो जी। ये मैंने बता दिया, ये बुलियन जो ट्रिक्स यूज करना है ना, ये अगर चाहे तो देख लें कि अगर हम सर्च करते हैं तो बुलियन ट्रिक्स और इस तरह की यूज कर सकते हैं। एक ओसीएलसी क्लासीफाई भी है जो अगर जैसे हमको देखना है कि चाणक्य की किताब है और उसका हम बहुत लाइब्रेरी एक्सपर्ट नहीं है, तो ओसीएलसी ये इसकी वेबसाइट है, तो उससे यूज कर सकते हैं। और वो सभी लोगों को यूज करना चाहिए, लाइब्रेरी के जो लोग हैं, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे लोगों के बीच में, जो भी टाइटल का हम लोग क्लास नंबर बनाते हैं। अदरवाइज क्लासीफाइड की ऑटोनॉमी होती है तो क्लास नंबर अलग अलग बन जाता है। अगर एक ही नंबर रहेगा तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो अगर यूज कर सकते हैं तो इसके अलावा भी है, पर ये यूज कर सकते हैं। अब ई रिसोर्सेज के लिए मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट और एनजीओज हैं, सेवरल अदर बॉडीज हैं, जहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कमर्शियल पब्लिशर्स हैं जो इल्सवेयर है, साइंस डायरेक्ट है, स्प्रिंग वर्लेग है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, पर सोर्सेज आप कर सकते हैं। ये अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये स्लाइड है उसकी, कि जब आप टॉपिक रिसर्च लेते हैं तो यूनिवर्सिटी न्यूज इन्फॉर्मेट की साइट देख सकते हैं, वो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए।
अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, लिटरेचर ब्राउज कीजिए, उसको रीड करिए ताकि आपकी हैबिट बन जाए और कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकें और फिर उसकी रिलेवेंसी बने और इंट्रोडक्शन आप सही फॉर्मेट बना सकें। तीसरा था ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। जब आपका टाइटल बन जाएगा तो उसी बेस पे आपकी हाइपोथेसिस बनेगी, उसी से रिसर्च क्वेश्चन बनेंगे, उसी से वेरिएबल्स आएंगे और वो वेरिएबल्स के आधार पे क्वेश्चनर बनेगा और वही रिसर्च सर्वे में आपका काम आएगा। ये इसकी रिलेवेंसी हो गई। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हाउ टू रिव्यू, मैंने बताया कि जो बुक रिव्यू और बिब्लियो जैसी पत्रिकाएं हैं जो केवल स्पेशली बुक रिव्यू निकालती है, जो लेटेस्ट बुक पब्लिश होती है, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। मेंडले जुटेरो का यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको अभी। राइटिंग एंड इम्प्रूविंग, अगर आपको जो है आपने जो लिखा है उसको कुछ यूज करना है तो ये ग्रामरली सॉफ्टवेयर है। और रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी के लिए मेनली यूज कर सकते हैं। अब एक वर्ड मैंने यूज किया है कि जो हम लोग बहुत पहले यूज करते थे, रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, इसमें शायद आगे होगा। रेफरेंस जो है ये पहले आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो अर्लियर स्पीकर्स जो हैं उन लोगों ने भी बात की है इसकी, कि रेफरेंस जो है वो बुक या टाइटल के बारे में जानकारी बताता है कि उसका सोर्स ऑफ साइटेशन कहाँ है, कहाँ से। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं और उससे कोई पैराग्राफ या कोई वर्ड लिया है तो वो आपको साइट करना पड़ेगा। तो साइटेशन जो है वो रिफर करता है, तो उसको रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये है कि रेफरेंस क्या सभी चीजों को रेफरेंस किया जाना चाहिए या किसको रेफरेंस किया जाना चाहिए, है ना। रेफरेंस की सीमा क्या होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर ये कहता हूँ कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये क्या जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया। तो जब जनरल नॉलेज की बात आती है तो वो ऐसी चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। या ऐसी चीजें जैसे इतिहास की कोई तिथि है, ठीक है ना, कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसको हमको साइटेशन की जरूरत नहीं है, इसको क्वाट करने की जरूरत नहीं है ना। जो साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं उसको हमको क्वाट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट को हमको क्वाट करने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज को क्वाट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो रेफरेंस है वो यूज किया जाना चाहिए जो कॉमन नहीं होते हैं, जो जो अनकॉमन होते हैं। जैसे किसी का ओपिनियन है, थ्योरीज है, स्टेटमेंट्स है, कोई क्लेम करता है कि ये मेरा है, वो चीजें आपको क्वाट करना है। कोई स्टेटिस्टिक्स है, कोई पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है जो उसका पर्टिकुलर आइडिया को देता है, पॉपुलरिटीज है, कोई फिगर है, फाइनेंशियल डेटा है, इस तरह की चीजें आपको रेफरेंस में यूज करना है, ठीक है। इस साइटेशन और रेफरेंस में थोड़ा सा अंतर क्या रहता है कि साइटेशन जो होता है, जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, जो पैरा लिखते हैं, पैरा के बीच में कुछ नंबर 1 नंबर 2 डाल देते हैं, तो वो साइटेशन, ऑथर का नाम लिख के और फिर ईयर डाल दिया है, जो भी पैटर्न होता है अलग अलग स्टाइल्स का, तो वो कर देते। तो साइटेशन क्या है, देयर आर टू एलिमेंट्स यूज इन रेफरेंसिंग, ए साइटेशन इन द टेक्स्ट ऑफ द असाइनमेंट, a citation in the text of the assignment also known as in-text referencing as citation। जो एक पैरा के अंदर जो हमने citation यूज किया ना, उसको जब हम रेफर करते हैं तो वो in-text referencing कहलाता है। और एक जब हम टेक्स्ट के बाहर लिखते हैं, जब लास्ट में सबसे लिखते हैं, तो एन एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट ऑफ द एंड ऑफ द टेक्स्ट, जब हम पूरा टेक्स्ट पेपर पूरा हो जाता है और लास्ट में रेफरेंस लिखते हैं तो वो असाइनमेंट रेफरेंसिंग कहलाता है। तो ये रेफरेंसिंग के तरीके हो गए, ठीक है। फिर अब जो हम लोग लाइब्रेरी साइंस के तो देखते थे पहले AICTE और इस तरह की यूज करते थे, AICTE CCC, जो बहुत टफ होती थी, जिसमें हम लोग कामा कोलन ये वो, और हम लोग बहुत कंफ्यूज होते थे उसको करने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप ये यूज करते हैं, मेनली सॉफ्टवेयर जो है यूज करते हैं, तो हमको जो भी हम फॉर्मेट चाहते हैं उस फॉर्मेट में बना के देगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ मुझे लगता है कि मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया है, पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे APA स्टाइल है, 1929 में इसका यूज स्टार्ट किया गया था इसका, MLA 1985 में, और शिकागो जो है वो टर्बियन स्टाइल है 1906 में की गई थी। अब इसकी शिकागो स्टाइल की विशेषता क्या है कि फुटनोट्स जो है ना वो इन टेक्स्ट साइटेशन कहलाता है। इसमें अपर राइट कॉर्नर पे इसमें पेजेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे कोई पूछ भी सकता है कि जो शिकागो स्टाइल है उसमें फुटनोट्स जो है
वो इंटेक्स्ट साइटेशन में होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि शिकागो स्टाइल में फुट नोट्स जो है वो इंटेक्स्ट साइटेशन में होते हैं और अपर राइट कॉर्नर पे पेजेस नंबर डाले जाते हैं। एपीए में जो है वो फुट नोट्स यूज नहीं होता है, वो केवल ओनली इट यूजेज टेक्स्ट साइटेशन, केवल टेक्स्ट साइटेशन, इसमें फुट नोट्स यूज नहीं होता एपीए स्टाइल में। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई फुट नोट्स एपीए में यूज होता है कि नहीं होता है, तो आपको क्या बताना है कि एपीए जो है ना वो फुट नोट्स यूज नहीं करता है। ठीक है, क्लियर, एम आई राइट? अब मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जिससे मेरा ही नाम है और मैं बताता हूं कि तीनों स्टाइल में अंतर क्या होता है। एपीए, एमएलए और शिकागो, ज्यादातर यही यही यूज होती है हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी में, इसलिए हमने 3 लिए। और ऐसे तो स्टाइल्स नंबर ऑफ हैं भी, अभी हम जब मेंडले खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी है। तो जैसे मैंने मेरा नाम लिया चंदेल, एस चंदेल कामा एस डॉट एस ब्रैकेट में 2018, टाइटल जो भी टाइटल हो, और इसमें टाइटल को इन्वर्टेड कामा में नहीं करते हैं, जो एपीए स्टाइल है उसमें इन्वर्टेड कामा टाइटल में नहीं लगाते हैं। जनरल नेम, जनरल का जो भी नाम है वो, और जनरल की संख्या जैसे वॉल्यूम नंबर 9 तो केवल 9 लिखेंगे, और ब्रैकेट में अगर उसके नंबर वॉल्यूम खंड 5 है तो ब्रैकेट में 5, और इसके बाद में कामा पेज नंबर 80 41 से 50 तक, ये एपी स्टाइल हो गया डेस लगा के। अगर हम इसको एमएलए में करते हैं तो चंदेल सुनील, चंदेल कामा सुनील, फिर इसके बाद में टाइटल को इन्वर्टेड कामा में लगाएंगे, फिर नीचे लोअर कामा, फिर जनरल नेम, और इसमें वॉल्यूम नंबर 9.5 जो उसमें ब्रैकेट में बनाया था एपीए में, इसमें पॉइंट करेंगे, और ब्रैकेट में इसमें ईयर, उसमें ईयर नहीं लिखा था, ईयर पहले नाम के पास में आया था, इसमें जो है वो किसके पास में आ जाएगा, वॉल्यूम के पास में 9.5 2018, और कोलन लगा के 41 to 50। ये आपको गूगल में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख लेंगे कि उसकी स्टाइल क्या है, या अभी हम यूज करेंगे मेनली तो आपको बता देंगे। तीसरा है शिकागो, तो शिकागो में चंदेल कामा सुनील कामा इन्वर्टेड कामा में टाइटल, फिर जनरल नेम, फिर कामा, फिर 9 वॉल्यूम का, केवल 9 वॉल्यूम नहीं लिखना है, फिर नंबर 5 2018 ब्रैकेट में 41 to 50, ये शिकागो स्टाइल है। तो ये इस तरह से स्टाइल्स हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंसिंग में। अब हम एक थोड़ा सा एक आपको व्यू दे देते हैं कि किस तरह से हम कट पेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद उस पर आते हैं। देखिए ये हमने मेनली, आप लोग मेनली सब, मुझे लगता है कि ये मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों को आता है कि कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे उसको यूज करना है। तो हमने क्या किया, पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसकी एक वेबसाइट है www.mendeley.org, mendeley.com। अगर आप गूगल में जाएंगे mendeley.com लिखेंगे तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उससे इसको इंस्टॉल करना, कुछ 1-2 टिप्स रहती भरनी रहती है कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, आप चाहें तो उसका पासवर्ड वही यूज कर सकते हैं जो आपका ईमेल है, और चाहे तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका ये इस पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा इस तरह का, देखो। जी सर, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना? जी जी जी। नहीं, मैंने शायद बंद कर दी सारी स्लाइड्स। सर थोड़ा सा स्लाइड्स से डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब आप जो बात कर रहे थे वो हम देख नहीं पा रहे थे स्लाइड्स में, बट अभी हम ये मेंडले का स्क्रीन देख पा रहे हैं। मेंडले का स्क्रीन आ रहा है, पर ये हमारे पास ही मिनिमाइज हो गया, इसको हमको कैसे करना है? आपका शायद फ्रीज हो रहा है या थोड़ा लैग है। मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे रिमोट कंट्रोल दीजिए। हाँ जी, वो डिसअपियर हो गया हमारा जो। जी जी, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। आपका ये शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन हैंग कर गया है। अब मुझे क्या करना है? आप एक बार जी और, जी, आगे, हाँ। अब एक बार और स्क्रीन शेयर करिए प्लीज।
जूम में जाके स्क्रीन शेयर करिए। हाँ जी। मेरा आपसे अनुरोध है सर कि अगले 7 से 10 मिनट के अंदर प्लीज थोड़ा सम अप करिएगा। जी। काफी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे और हमारा अगला सेशन 4 बजे है जिसमें अभी 20 ही मिनट बाकी है। कितने मिनट और बाकी? 20 मिनट ना? हाँ जी, हाँ जी, तो आप प्लीज इसको 10 मिनट में सम अप करने की कोशिश कीजिएगा। 5 मिनट हम क्वेश्चंस के लिए रखेंगे और उसके बाद 5-7 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम नेक्स्ट सेशन पे मूव करेंगे सर। जी। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए चंदेल सर। सर अब अभी हम आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहे। हाँ हाँ, मुझे जी, अब एक एक्सेल खुली हुई है हमारे सामने। हाँ, एक्सेल खुल गई। नहीं नहीं, वो गलत खुल गया है मुझसे। कोई बात नहीं। ये है, ये मेंडले है जो है, ये मैंने इसमें कुछ जो है ना ये पिकअप किए हैं, क्योंकि जल्दी समाप्त करना है। तो ये पीडीएफ फाइल जो है ना आप यहाँ से अभी ऐड हम करेंगे। एक्सेल ही देख पा रहे हैं, आई एम सॉरी बट अभी हम एक्सेल ही देख पा रहे हैं बिकॉज आपकी अच्छा। स्क्रीन पे जो है ना, आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मत सिलेक्ट कीजिए, आप पूरा डेस्कटॉप शेयर कीजिए। मतलब फर्स्ट विंडो जो होगी आपकी शेयर के टाइम पे वो आपसे पूछता है कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए तो शायद हम नो कर दीजिए जी। हाँ, अभी आ रहा है क्या? नहीं 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 सर, आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना, आप सिर्फ अपनी एक्सेल शेयर कर रहे थे। जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो इंटायर डेस्कटॉप शेयर करिए प्लीज, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करके। हाँ, नहीं हुआ क्या? अभी हम मेंडले देख पा रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो मेंडले ही शेयर किया। जी ठीक है ना, तो आप इसमें से क्या है कि जो भी आप पिकअप करते हैं इसमें, तो ये कोई अगर आप बाहर से एक फाइल लाना चाहते हैं गूगल से या आपके इसमें है, तो ये आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगी इसमें, ये ऐड फाइल्स ये, ठीक है ना। और अप टू 2 GB तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये आपके पूरे साइटेशंस जो है ना वो करेगा। इसमें आप इसी में से जो आप जैसे मान लो ये फाइल मैं खोलता हूँ ये, तो इसमें जो भी आप पढ़ना चाहें तो इसमें आप ये पेन ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी, और इस मैटर को आप इसमें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं काम करेगा ना यहाँ पे? करेक्ट कर रहा है क्या वर्ड का? हेलो मोहित जी, जी सर, जी सर। ये वर्ड आपके इसमें डिस्प्ले हो रहा है क्या? हाँ सर, हम अभी एक मेंडले के अंदर एक यूनिट 7 डेटा प्रेजेंटेशन वो अच्छा खुला अच्छा, हुआ है। ये दिख रहा है। अब मुझे इस मैटर को कट करके यहाँ से कुछ कॉपी किया और वर्ड में ले जाना, वहां पे पेस्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से स्क्रीन तो शेयर करना सर पड़ेगा? आप जब शेयर करते हैं ना स्क्रीन, आप हाँ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं, आप इंटायर डेस्कटॉप शेयर करिए प्लीज, तभी ये ठीक चलेगा सर। तो आप जो भी करेंगे अपने डेस्कटॉप पे वो पार्टिसिपेंट्स देख पाएंगे। आप जब शेयर स्क्रीन करते हैं, मैं एक बार बंद करता हूँ आपकी स्क्रीन शेयरिंग। अभी आप जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप प्लीज इंटायर डेस्कटॉप शेयर करिए, कहाँ पर है सिर्फ इंटरनेट? मेंडले मत करिएगा, वो पहली स्क्रीन होगी ये इंटायर फर्स्ट वाला डेस्कटॉप। ये? हाँ हाँ, एक मिनट देखते हैं। अभी मैं आपको ये डेटा प्रेजेंटेशन ही देख पा रहा हूँ अभी तो इसमें। हम्म। अब दूसरा कोई सॉफ्टवेयर खोलिए अपने डेस्कटॉप पे। नहीं अच्छा, सर, मुझे हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ मेंडले ही देख पा रहा हूँ अभी भी। आपके आपको पास इंटायर डेस्कटॉप शेयर हाँ, करना होगा। मेंडले तो आ रहा वहां है पर मेंडले। लिखा होगा। अब मुझे जो है मेंडले से जो है ना ये कुछ मैटर इसमें से कॉपी करके और वर्ड में पेस्ट करना है। हाँ सर, वो वर्ड में आप पेस्ट कर सकते हैं, बट वो वर्ड हमें तभी दिखेगा जब आप इंटायर डेस्कटॉप शेयर करेंगे। आप वो अभी हमने सिर्फ मेंडले को शेयर कर रहे हैं इसको आई थिंक। मिनिमाइज कर दूं क्या? करिए जरा, तो शेयरिंग बंद हो जाएगी मेरे को ऐसा लगता है। नहीं अभी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी यूनिकोड ऐसा मुझे ये दिख रहा हाँ है हाँ, यूनिकोड। ये आ रहा है, यही आ रहा है सर हाँ, जी। तो अब क्या करना है मुझे? आप वर्ड वर्ड वाले पे जाइए, वर्ड सॉफ्टवेयर खोलिए अपना, जहां पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं। ये तो स्क्रीन ही ब्लैक है ना मेरी, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो केवल ये दिख रहा है। चलिए सर, हम इसको अभी आई थिंक अभी स्किप कर सकते हैं फिर।
हाँ चलिए इसको इसको छोड़ देते हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको ओरली, ठीक है? जी जी प्लीज प्लीज। ये इसमें आ जाए वापस, मेंडले सर पे मैं यूनिकोड शिफ्टेड टू वर्ड फाइल ये देख पा रहा हूँ बस। नहीं, मुझे तो वापस उसमें आना, आप मुझे वही ला दीजिए। हाँ ठीक है, क्या करना है इस? I can only see Unicode shifted to Word file, sir. That's all I can see right now. ये आ गया ना, मेंडले आ गया ना? जी सर आ गया। तो आप अब मैं उसमें मुझसे पेस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप उसमें जाएंगे ना तो ये सारा मटेरियल उसमें पेस्ट हो जाएगा, और जितनी भी स्टाइल की आप चाहेंगे उतनी भी स्टाइल में आप उसको कन्वर्ट करना चाहें, जितना भी मटेरियल आपको इसमें से कॉपी करना हो और वहाँ पेस्ट करना हो वो सारा वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप रेफरेंस जो है ना वो साइड कर सकते हैं, तो आपका उतना पूरा लेवल बच जाएगा, और आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा पेपर का पूरा। ये इसका बेनिफिट है। दूसरा ये है कि बहुत सारी बात हो रही थी कि एच इंडेक्स की। तो एच इंडेक्स बेसिकली क्या है कि मैं थोड़ी सी उस पर भी बात कर दूं हिंदी में। जैसे अब कोई व्यक्ति है, अगर उसने 5 पेपर पब्लिश किए हैं, पहला पेपर उसके साइटेशन 8 हुए हैं, दूसरे के 10 हुए हैं, तीसरे के 2 ही हुए हैं, चौथे के 15 हुए, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका सीरियल क्या होगा। आप तो ये देखो कि जो सबसे ज्यादा बार हुआ उसको पहले लिखो, फिर एक टेबल बना लो कि एक तरफ आर्टिकल लिख लीजिए, दूसरी तरफ साइटेशन नंबर लिख लीजिए। जो सबसे ज्यादा बार पब्लिक साइट हुआ है उसको सबसे 1 नंबर दे दीजिए, उसके बाद जो होगा उसको दूसरे नंबर पे दे दीजिए, उसके बाद जो होगा उसको तीसरे नंबर पे दे दीजिए। तो क्या होगा कि जो आर्टिकल नंबर है और जो साइटेशन नंबर है उन दोनों के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि जैसे एक पहला पेपर जो है ना वो 33 बार हुआ, दूसरा पेपर 30 बार हुआ, जो आपने लिस्ट बनाई है, तो 30 जो है वो 33 में इंसर्ट है ना। फिर तीसरा पेपर जो है वो 20 में है, तो 20 30 के अंदर इंसर्ट है, फिर उससे छोटा नंबर हो गया। तो वो नंबर जैसे अगर छठे नंबर पे आता है तो एच इंडेक्स 6 होगा, तो वही उसमें डिफाइन किया। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते एच इंडेक्स पे। जब आपका मुझे ऐसा बताया कि भाई आपका इसमें टेस्ट भी होगा, तो इसमें एच इंडेक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यूज होती है और उसको किस तरह से वो करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समाप्त करना चाहिए मुझे, मोहित जी। जी सर हम पार्टिसिपेंट्स के देख लेते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है तो। मैं थोड़ा सा पूरे उसको समराइज कर दूं जो पूरा उसका था एक बार, प्लीज सर ताकि प्लीज। है। हाँ जी प्लीज सर। देखो हमने अभी जो बात की वही की कि जो टूल्स टेक्निक्स हैं उसको रिसर्च में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो भी रिसर्च के पैराडाइम्स थे, जो उसकी स्टेजेस थी, उस स्टेजेस को क्लासीफाई किया, और उस स्टेजेस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं वो सारी बात आपके सामने हमने रखी है। ठीक है, कि अगर आपको एनालिसिस करना है तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना है, अगर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सी टेक्निक यूज करना है, अगर आपको मेथोडोलॉजी लिखना है तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो लाइक दैट इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें शेयर की है आपके साथ में, और मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक रिसर्च पेपर अच्छा बन सकता है। मुझे लगता है कि टाइम कम था हमारे पास, अदरवाइज हम इसको पूरा एक डेमो करके बताते हैं कि एक पेपर कैसे लिखते हैं और प्रपोजल कैसे बनाते हैं। सो आई थिंक, थैंक यू सो मच। चंदेल सर अब बहुत आप मुश्किल बताएं। है मतलब 2 घंटे में एक रिसर्च पूरा प्रोसेस समझाना, बट आपने बहुत सारे रिसर्च से जुड़े हुए जो की एलिमेंट्स हैं, जो प्रोसेस के जो पार्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी, और उसमें जो रेलेवेंट टूल्स टेक्निक्स जो यूज हो सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है साइटेशन के टाइम पे, किन किन बातों का ध्यान रखना है लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे, टॉपिक सिलेक्शन से लेकर रेफरेंसिंग तक आपने एक रिसर्च प्रोसेस कवर करा, और जितनी सहजता से और सरलता से आपने हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करी, आई एम श्योर कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये बहुत
एक इंसाइट मिली होगी। काफी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अभी पीएचडी में शायद एनरोल्ड हो गए या होना चाह रहे होंगे, उनके लिए काफी यूजफुल रहा होगा सेशन। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी अगर उनका क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चैट अलाउ कर रहा हूँ, आप प्लीज अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम जी भाई। जी सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है। सर, साइटेशन, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है? रिसर्च वर्क में इनका यूज कैसे और कहाँ कहाँ करें? देखो, साइटेशन जब आप किसी बुक का कोई पार्ट लेते हैं तो उसको कहीं जहाँ पे आप लिखते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन दे रहे हो जहाँ पे, तो वो उसको आप साइट करते हैं। तो जैसे आपने कोई एक पूरा पैरा लिया और पैरे में जैसे कोई सिल्वर डेविड मैन, ठीक है ना, उसका कुछ आपने एक पार्ट लिया आपने, तो उस पार्ट में वहाँ पे लिखना पड़ेगा सिल्वर डेविड मैन, और इसके बाद में उसका ईयर, और इसके बाद में वो चूंकि वो साइटेशन है और उसको रिफर कहाँ करना है, सबसे लास्ट में लाके जहाँ पे आप रेफरेंसेस करेंगे, जो ये मेंडले अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि साइट रिफर करता है तो दैट इज रेफरेंसिंग, साइटेशन जो है वो साइट करने का पार्ट है, तो साइटेशन रिफर करता है। रेफरेंसेस में केवल वही चीजें आती हैं जो आप रिफर करते हैं, जो आप चाहे रिसर्च पेपर हो, चाहे थीसिस हो, या चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, जो भी आप रिफर करते हैं दैट इज रेफरेंसेस। जो भी साइट किया है उसका रेफरेंस है, वो रेफरेंसेस है। बिब्लियोग्राफी में ये अंतर होता है कि जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो ऑन एंड अबाउट भी हो सकता है। आपने अगर रेफर नहीं भी किया है लेकिन आपने पढ़ा है और कुछ आइडिया आया तो वो बिब्लियोग्राफी में जाएगा। वो बहुत क्लियर है तीनों चीजें। अगर आप साइट करते हैं, साइट के बाद में जहां पे आप लिखेंगे उसको कि उसका सोर्स क्या है, तो वो रेफरेंस है, ठीक है। और जब रेफरेंस जितने भी साइट होंगे उसका केवल रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस जो है वो केवल साइटेशन बेस्ड होता है। जबकि बिब्लियोग्राफी में आपका जो भी रिसर्च है वो उससे थीम से मिलता जुलता भी है, आपने उसके दौरान अगर आपने यूज किया है या पढ़ा है तो ऑन एंड अबाउट भी है, वो दैट इज बिब्लियोग्राफी। क्लियर? जी सर। सर, डॉक्टर आशीष बिल्लोर पूछ रहे हैं कि पायलट स्टडी किस प्रकार से की जाए? पायलट स्टडी पहले जो भी आपका टाइटल है उस टाइटल के बेस पे जो भी आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जो भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं, उनको ले जाके पहले पहले सपोज मान लें आपने 5 गांव लिए हैं, तो 5 गांव में से एक गांव में जाएं आप, जो भी बेनिफिशियरी है पूछेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने एज्यूम नहीं किए होंगे, उसके भी वो उत्तर वो दे देता है, तो वो क्वेश्चन आप इंसर्ट कर लीजिए, इसके बाद में फाइनल आप तैयार कीजिए, वो पायलट स्टडी है। पायलट स्टडी मतलब आप मेन सर्वे के पहले की जो सर्वे करते हैं दैट इज पायलट स्टडी। जी सर। सर, एक शुभम पटेल ने, हालांकि ये ऑलरेडी आस्क्ड है क्वेश्चन, बट फिर भी पूछूंगा मैं। हाँ हाँ, शुभम ने पूछा है पूछे। कि और इंडेक्स। मोहित जी, और किसी को पूछना हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकता है, मेंडले जोटेरो या जिसे मतलब इस संबंधी कोई बात हो तो कभी भी पूछ सकता है। जी सर। हाँ, इसके अलावा शुभम अदर पटेल देन जी का ये क्वेश्चन है सर कि अगर एक बार आप आई इंडेक्स, 10 इंडेक्स, एच इंडेक्स, इसमें हाँ, फर्क बता दें, और एच इंडेक्स को विशेषतर रूप से थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो आसानी। देखो, आई इंडेक्स क्या है कि गूगल ये कहता है कि जो आर्टिकल कम से कम 10 बार साइट किया गया हो, दैट इज I10, इसलिए वो लिखता है कि वो I10 इंडेक्स है। कम से कम आपका आर्टिकल 10 बार साइट किया गया हो तो वो आई इंडेक्स हो गया गूगल का, और वो केवल गूगल के लिए ही है। और एच इंडेक्स में क्या है, मैं थोड़ा मुझे उसमें बनाना था फिगर, पर वो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ इसमें, तो कभी अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा किसी और माध्यम से, कि उसको मैं समझाना चाह रहा था पर मुझे उसमें करना नहीं आ रहा है आपके पावर पॉइंट पे। सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ हाँ और एक पावर पॉइंट खोलता हूँ, आप प्लीज गाइड कीजिए मुझे। जी। सभी पार्टिसिपेंट्स आई एम श्योर मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, हाँ तो मैं आपकी मदद करता हूँ, हाँ बताइए। बिल्कुल।
हाँ, इसमें क्या है जी ये, जैसे कोई व्यक्ति है, एक अथर है, आप दो दो कॉलम बना लीजिए। एक में लिखिए, आप अथर लिखिए, जी और एक तरफ लिखिए, नहीं अथर सॉरी, एक तरफ आर्टिकल्स लिखिए और एक तरफ लिखिए साइटेशन नंबर्स, आर्टिकल्स और साइटेशन नंबर। जी ठीक है, अब मैंने लिखा है कि अगर नंबर 1 करिए, एक अथर में आर्टिकल में 1, आर्टिकल के नीचे 1 जी और इसके नीचे 33, ये मैं इसी गूगल का ही ले रहा हूँ एग्जांपल, इसके नीचे 33 है। जी ठीक है जी जी। नंबर 2, जी, एक सेकंड सर, सॉरी हाँ, नंबर 2 पे 30, सर। लेट्स से ये आर्टिकल 1 है और आप कह रहे हैं कि इसमें आर्टिकल 1 में 33, हाँ आर्टिकल 1 में 33, जी आर्टिकल 2 में 30, इसी के नीचे आएगा। जी 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 जी, आर्टिकल 2 है, इसके है 30 जी हाँ, आर्टिकल 3 है 20, जी जी आर्टिकल 4 है 15, जी आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 जो भी है 5 6 तक कर दीजिए, आप 6 तक कर दीजिए, फिर 5 6 7 कर 7 तक, हाँ बस 7 कर दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। हाँ जी, ये लेट्स से ये है। हाँ, अब इधर आप कर दीजिए 33, 20 के बाद 15, जी 7 6 5, जी सर, ये 20 के बाद 21 हो सकता है क्या? हाँ एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। जी, लेट्स से ये है जी। ठीक है ना, ये ऑर्डर, अब ये है कि एक अथर है जिसका एक आर्टिकल जो है वो 33 बार साइट हुआ है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना इसको। एक कोई अथर है जिसका एक आर्टिकल, वो किसी भी नंबर का हो सकता है, वो पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, कोई भी आर्टिकल जो पहला एक नंबर पे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल का नंबर कुछ भी हो सकता है कि वो अभी उसने पहली बार पब्लिश किया हो, लेटेस्ट हो, तो वो 33 बार हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार जो पब्लिश हुआ है उसको पहले लिखेंगे, है ना, इसको फिर इसके बाद जो दूसरा हुआ उस 33 से जो कम नंबर है उसका ले लिया है ना, इसको डिसेंडिंग नंबर में लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर तीसरा नंबर का आर्टिकल है वो 20, अभी इसमें उल्टा कर दिया आपने, 21 ऊपर होना चाहिए, 20 नीचे होना मैं चाहिए, वही कह रहा था सर, तो क्योंकि ऑर्डर इसका डिसेंडिंग होना चाहिए ना। 22 कर देते हैं हाँ जी। 22, ठीक है, तो तीसरा आर्टिकल उसका 22 बार हुआ है, चौथा आर्टिकल उसका 21 बार हुआ है, पांचवा आर्टिकल उसका 15 बार हुआ है, और छठा आर्टिकल उसका 7 बार हुआ है। तो अब आप देखो कि 7, इसमें होता क्या है मालूम, कि इसका जो वो होगा साइटेशन एच इंडेक्स होगा, वो किस में आएगा, 7 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो 6 जो है ना, 7 इसमें भी आता है, ये इसका जो है ना एच इंडेक्स सर इसमें 7 बनेगा इस एग्जांपल में, am I हाँ, correct? ये एच इंडेक्स इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका। नहीं नहीं, आपने क्या इसको 7 कर दिया, हाँ इसको 7, इसको 6 कर दिया, तो एच इंडेक्स इसका 7 होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ साइटेशंस होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिए हुए हैं वो एक के अंदर, जैसे 33 है ना, तो इस 30 इसमें कंटेंट हो रहा है, 22 है वो 30 में कंटेंट हो रहा है, ये 21 22 में हो रहा है, 15 इसमें हो रहा है, ठीक है ना, और 7 जो है वो 15 में हो रहा है, 6 7 में हो रहा है, लेकिन जो इक्वल टू किसके है, वो 6 के इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये आर्टिकल 7 इसमें आएगा, एच इंडेक्स 7 होगा। अगर और ये सर 6 यहाँ पे आप होता इस तो एग्जांपल में एच इंडेक्स 10 हो गया इस ऑथर का, राइट? इसमें एच इंडेक्स 10, 6 इज ग्रेटर देन, नहीं 10 इज ग्रेटर देन 6 नहीं, में सर। 7 ही रहेगा ना, क्योंकि आपका 6 यहाँ पे आ रहा है ना, जो लोएस्ट होता है वो होता है ना, अच्छा जी, तो 6 कहलाएगा ना, 6 जो है अच्छा, वो सब में शामिल है, ओके ओके 6 जो है ना वो 6 10 में भी है, 15 में भी है, जी 21 में भी है, 20 ये जो नंबर है वो सब में शामिल होना चाहिए। जी 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 ओके। क्लियर हो गया? जी जी, सो बेसिकली इस एग्जांपल में भी 6 एच इंडेक्स है, और अगर मैं ये 7 होता तो भी सर तो भी 6। 6 ही रहता है, क्योंकि 6 जो है वो सब में शामिल है। ओके 6 ओके, 6 जो है ना, जो वो नंबर जो सब में कंटेंट हो, जो सब में समाहित हो, मैं समझ गया सर, ठीक है। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सभी पार्टिसिपेंट्स को भी,
अगर फिर भी इस पे कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इसी पे अभी और क्वेश्चंस नहीं है। एक अभी हमारे अभी लेक्चर में सबसे ज्यादा साइटेशन एच इंडेक्स पे हुआ है। सबसे ज्यादा पढ़ाया भी यही गया है, जी इसलिए साइटेशन सबसे ज्यादा इसी का हुआ। तदेर सर, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जानना चाह रहे हैं। अगर आप आप लोग, अनुमति हो तो आपके आप पास नहीं, आपके पास नहीं है क्या? सर मेरे पास है, अगर आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, अगर आप मैं लिख देता आप लिख दीजिए। हूँ। जी, अगर आप बताइए तो मैं लिख देता 940 हूँ। एस एस चंदेर, डॉक्टर चंदेर, और सर 940 666 जी, 0834 और सर ईमेल एड्रेस आपका chandel02@gmail.com। CH सारे स्मॉल है, चंदेल CHNDL02@gmail.com। ठीक है सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अगेन ये बताना चाहूँगा कि अभी ये सेशन का एंड हो गया। हमने 2 सेशन एक साथ किए हैं, सेशन 7 एंड सेशन 8। मैं इन दोनों सेशंस का फीडबैक लिंक और अटेंडेंस लिंक जो है वो अभी ग्रुप में मैंने डाला है, चैट में डाला है, 7 का भी और 8 का भी। आपसे अनुरोध है कि आप दोनों सेशंस की अटेंडेंस मार्क करें, सेशन 7 की भी और सेशन 8 की भी। आई विल ओनली गिव यू 5 मिनट्स टू डू दैट। और हमारे साथ ऑलरेडी डॉक्टर नीरज चौरसिया सर जुड़ चुके हैं, उनका सेशन ऑलरेडी डिले हो गया है, हम ऑलरेडी 5 मिनट आगे चल रहे हैं। सो आई ओनली गिव यू 5 मिनट्स टू फिल आउट द फीडबैक फॉर्म number 7 and number 8. It is in your chat box, number 7 and number 8. Make sure that you fill out these both the feedback forms. सो मोहित, थैंक यू। मैं छोड़ सकता हूँ, लीव कर सकता हूँ? जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच एंड पार्टिसिपेंट्स टू। Thank you so much, sir. It was a really informative session. Thank you. Thank you so much. Participants, you only have 5 minutes. So at 4 p.m. 4:05, we will start the next session with Dr. Neeraj Chaurasia ji. And it's a very, very important topic, the next one.
Okay, so we'll begin with the next session. We already have Dr. Chaurasia sir with us. Sir, please unmute your system once. And if possible, you can also start your video so participants can see you. For any technology to be successful in services industry like education, like libraries, there are two things which are, I mean, there are two key drivers apart from the problem statement. मतलब कितनी चाहे कितना भी recognized problem हो, but until and unless there's a government mandate or there's an actual need or pressure from faculty, no technology actually picks up. So that is there is another example of a technology like this, which is remote access. I mean, it has been available in India for about 8 to 9 years now, or probably more than that. So Easy Proxy came back a lot late before 2012. So 2011 say there have been availability of remote access services, but we have seen a major development and major adoption of that technology in last year in the COVID-19 period. So I request Dr. Neeraj Chaurasia sir to please explain various aspects related to remote access services available as a choice to for libraries, and what can be the what are the various factors to look into while choosing a service. Dr. Chaurasia, if you can disable participant annotation, it will be nice. Just a minute. Just next to share button, there will be a more button on which you need to click. Oh yes, no share. Yes. Disable annotation from others. Disable. I think you have clicked on your annotate button, right? Oh yes. That might be the reason. Yes. So you can stop share and it will. Yeah, I think this is much better. Have you disabled annotation from others, sir? Yes. Yeah. Thank you, sir. Can you see now? Yes, sir. Perfect. Yes. Okay. So should I start now? Yes, sir. The platform is all yours. Thank you. Yeah. So very good afternoon to everyone. Wish you all a very happy Republic Day. And at the very outset, I would like to thanks to RGBP, Dr. Chaurasia ji, for inviting me as a speaker for this 1 week training program. I would like to congratulate him for this great initiative. I'm sure that the attendees will be benefited with the lectures delivered by the galaxy of professionals during this program. I was listening to Dr. Chandel in previous session, so he was discussing something related to the H index and other things. So I think there are a number of sessions on same topic, a similar kind of topic. So if you don't have any understanding, because there was similar kind of topic yesterday where I have delivered the lecture. So if you have any issue related to that, you can also put questions on that. It may be H index, it may be I-10 index, or any similar kind of issues. If you don't understand yesterday, you can also put your questions related to that. So basically the topic for today's presentation is remote access tools for accessing the library resources and overview. So basically my presentation will be, it is just an overview about the resources, about the remote access tools which are available for accessing the library resources from off campus. Okay, so this was the topic which was given by RGPP for this session. So before starting my presentation on remote access, I would like to highlight some of the impacts of COVID-19 on libraries, because this is very much related to this remote access tools. So we all are witness that all of a sudden the world has changed forever due to this COVID-19.
our lifestyles, practices, processes, preferences, perceptions, and perspectives all are changed because of this COVID-19, completely changed. In a highly connected world, जहां हम पूरी तरह से connect होते थे, we are made to live in a totally disconnected manner for some time, like during the lockdown or during this COVID-19. Library, if you talk about the libraries, COVID-19 blindsided academic libraries in the world, not only in India, in the world. Libraries were either restricted their services, completely closed due to this pandemic. Libraries around the world are facing hard choice which service they should offer to their patrons and how they should offer, because everything has changed. Last couple of months, you might have seen that libraries are slowly opening their services in new normal. This is not normal, this is now new normal. They are, instead of returning to normal, libraries are returning to a new normal. So now there are little bit of issues, which services we should offer and in which way we should offer. So this is the situation in current time. And in-person services, the services which we were supposed to provide in person, those services or instructions may no longer preferred. If you see the users, they want now more things online. Since they are not coming to the libraries, number of users, they are not coming to the libraries because they are not in the campus and the classes are going online. So they want material online. So as a librarian, what kind of services we can provide them to make their the resources and services on their desktop or on their laptop or mobile. So this is a big challenge for the librarians. Access to physical material is a barrier now, as I have already discussed in new normal. How we can leverage this crisis in new and innovative library collection and services to the users. This is the big challenge before the libraries and librarians. So remote access is one of the important service which is required for providing the services to the users. And because we are spending a lot of our budgets on subscribing the journals, subscribing the ebooks, subscribing the books and databases. So how we should provide all kind of resources to the users, this is one of the challenge before the librarian. But as a librarian, this is our major responsibilities because we are spending a lot of our budgets. So whatever collection we have, it should reach to the users. So remote access is playing a great role in this direction. Okay. So if you talk about this, Neeraj sir, sorry, we can only see the first screen right now, the title slide. Yes, I will be just moving. Okay. Okay, so I was just checking. Okay, go ahead, sir. Sorry. Yeah. So I will be talking about in my presentation. I will be talking about what kind of remote access tools are available, what kind of open off-campus access tools are available, why these tools are required, and what are the access methods? What are the benefits? What are the rules for remote access? And also various open access or tools or commercial tools available. I will be giving you an overview about all this. So if you talk about the current situation, off-campus or remote access facilities playing a very crucial role in providing the seamless access of the resources which are available in our libraries. If you talk about this COVID-19, some of the libraries which were not having the remote access facilities earlier, they have implemented the remote access facilities and now providing the resources and services. आपने देखा होगा कि जब कोविड शुरुआत हुआ तो हम प्रिपेयर नहीं थे, हमें ये पता नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज ने उनके पास रिमोट एक्सेस फैसिलिटीज थी, बट बहुत सारी लाइब्रेरीज के पास रिमोट एक्सेस फैसिलिटी नहीं थी। उन्होंने इस पीरियड में जो लॉकडाउन का रहा या उसके बाद जब स्लोली लाइब्रेरीज ओपन हुई, तो हमें इस चीज़ का पता चला कि इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी इसेंशियल। सो हमने फिर
कोई ना कोई टूल के बारे में सोचा कि हम कौन सा टूल इम्प्लीमेंट करें ताकि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूजर्स के पास तक पहुंचा सकें. So some of the libraries which were not having the remote access tools, they tried to implement those some of the tool and start providing the remote access facilities. But still there are a number of libraries, they don't have any kind of tools for accessing the resources. So during this time, actually, number of publishers or subscription agencies, what they did, they opened their complete collection. They opened their complete collection for certain time. कि ये हम अपना पूरा कलेक्शन ओपन कर देते हैं ताकि जो यूजर्स घर में बैठे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है उनके साथ, वो एटलीस्ट उसको यूज कर सके. सो फॉर सर्टेन टाइम पब्लिशर्स ने कुछ अपना जो रिसोर्सेज था उसको ओपन कर दिया और they help a lot to the librarians to integrate the resource, because what is happening whenever you are implementing any remote access or off-campus tool, there are integration is required for all kind of resources which you are subscribing. So the publishers or subscription agencies, उन्होंने काफी help किया. They help a lot to integrate their resources with the remote access tool. Various remote access facilities are available, which are implemented by the institutions. What they did is some of the publishers, they given magic words. उन्होंने कुछ मैजिक वर्ड दिया कि आप यूजर नेम पासवर्ड की जगह पे ये मैजिक वर्ड डालिए और हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करिए. कुछ पब्लिशर्स ने क्या किया, उन्होंने अपना आईपी का जो रिस्ट्रिक्शंस था, बिकॉज यू माइट बी अवेयर दैट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल आइदर थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड or through IP range. So some of the publishers, they remove the IP restrictions for providing the access of their resource. So this was big help for some of the institutions which were not having some of the resources because they have removed the IP restrictions. So libraries were enjoying the access of that particular resource. Some of the publishers, they provided the login ID and passwords. They provided the credentials for accessing the electronic resources because they wanted that users who are sitting at their home, they should learn, they should start using the resources. So the resources can be integrated with any of these remote access tools like Easy Proxy, RemoteX, VPN, Shibboleth, OpenLatency. There are a number of softwares which are available. So this is our responsibility as a librarian to integrate any of the remote access tool to provide access of our resources and services to our users. So first thing is, what is remote access? If you see this remote access is if you talk about the in layman language, remote access tools means just TeamViewer or AnyDesk or LogMeIn or sometimes Zoho Assist or remote desktop manager, but it is beyond that, because we are providing services or the resources which we are subscribing. So remote access in simple language is the ability to access a computer or server remotely through a network connection. एक बार जब हम अपने कंप्यूटर को या सर्वर को रिमोटली एक्सेस करते हैं तो वो बेसिकली रिमोट एक्सेस होता है. Users have the leverage to work remotely away from the institutions while remaining access to distant computer or network. जो भी चीज किसी दूसरे कंप्यूटर पर पड़ी है, जब हम उसको रिमोटली घर बैठ करके उसी चीज को हम यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में पड़े हुए कोई भी मटेरियल को, तो वो बेसिकली एक तरह का रिमोट एक्सेस हो जाता है. रिमोट एक्सेस कैन बी एप्लीकेबल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज LAN, wide area network, WAN, and virtual private network. These are open access. This access can be applicable for LAN, WAN, or VPN. Now, yes. So there are some controlled method in this remote access. So first one is direct or physical line. Through the direct line, control can be implemented between a computer and the institution LAN. This network is much faster but more expensive. When you talk about the direct or physical line, it is more expensive.
Then VPN, that is virtual private network. It connects to remote site through the internet with encryption and tunneling techniques to access the institutional network. Then a third one is Microsoft Remote Desktop Service, that is also known as RDS. And there are some other methods as well, like digital network, wireless networks, or integrated services. So these are some of the remote access control methods which are available. Now, when we talk about the remote access tools for accessing the library resources, there are two types of software, or you can say the tools available. First one is open source software, other one is commercial softwares. So open source softwares like VPN or Shibboleth, both are open source, and commercial software like EasyProxy, RemoteX, OpenAthens, and there are a few more. So as a librarian, we can implement any of these tools for providing the access of our resources to our users. So what are the benefits of having the remote access in library? It is anytime, anywhere access. If your user is not available in the campus, sometimes our faculty members, they are overseas on overseas assignments, they are not in the campus. So remote access helps a lot because they can access the resources from where they are. There is no need to be in the campus. If you have any remote access facility, remote access facility के थ्रू आप कहीं से भी अपना जो मटेरियल लाइब्रेरी का है वो एक्सेस कर सकते हैं. Second thing is enhanced usage of electronic resources. जब आप कोई भी रिसोर्स का एक्सेस 24/7 प्रोवाइड करते हैं तो यूजर उसको एक्सेस कर पाते हैं इजीली, एंड आपका यूसेज भी पर अच्छा होता है बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू आर सब्सक्राइबिंग एनी रिसोर्स, our first aim should be the usage. It should be used properly by the users for whom you are subscribing. So if they are not in the campus, even they are in the campus, this facility is very important. And if they are using it, your overall usage of your institution will enhance, which will help you to review the resources whenever you are going for renewal next year. Ultimately, the pattern satisfaction, this is important because the user will be satisfied if you have access of your resource up to their laptop, up to their desktop, or any device. So I would like to say that remote access is not a supplement. It is add-on. It is an add-on. It is not for discouraging the use of library. Basically, this is addition to your services. This is add-on on your services. So it will definitely encourage the users to use the library facilities. Now coming to the proxy server, this you should know about this because number of times it will be used while you are talking about the this remote access services. So what is proxy server? Proxy server acts as a gateway between users and internet. It means whenever you are searching anything and if proxy server is there, it will authenticate you. It will authenticate, and after that you will be able to search the things whatever you want, and completely log will be maintained whatever you are searching. Okay, so proxy server provide a varying level of functionality, security, privacy, depending on your case to case need or company policy. For the users or client, proxy server is invisible. It is not visible, it is invisible. One thing we need to know that proxy might be part of firewall or can be separate based on the network. So this is very important to understand what is proxy server. Now I will be talking about some of the tools which are there for the libraries to accessing the resources. So first one is VPN. VPN is a virtual private network, which is an encrypted connection over the internet from the device to a network. It is encrypted connection helps to ensure that sensitive data is safely transmitted. It is very much safe. It prevents unauthorized people on the traffic and allows the users to connect, work remotely. VPN technology is widely used in corporate environment. Now it is also used by a number of government agencies and also government agencies
VPN is alternative to the proxy server of for off-campus access to the library for electronic resources. VPN client will allow you to securely connect to databases from off-campus location by routing your activity through the campus network. Once connected, this will let you operate in the same way you would be there in the office or in the campus. So it helps a lot. Now, number of institutions, number of libraries, they are using this VPN for providing the access of their off-campus access or accessing the electronic resources. These are some of the key features which are there in VPN, like authentication, access control, confidentiality, and data integrity. These are 4 features which makes VPN more secure, which are sometimes not available in some other tools or software. So these 4 key functions are making secure VPN. This is one of the screenshots which is taken from the internet. It will provide you how this VPN works. Now, what are the advantages? It can be easy and low cost to set up, can provide information about how users within the institutions are authenticated and accessing the resources. You will get complete information. Many discovery services support proxy URLs, widely supported by the publishers, because this is very important, because whenever you are integrating the resources, support from publishers are very essential, because if you are not getting support from the publishers, it is not integrated with your remote access tool, it will not be accessible. So integration is very important for any remote access tool or software, whatever you are implementing in your library or in your institution. Now, next one is Shibboleth. This is one of the open source software, and INFID, I also mentioned INFED. This is the Internet Access Management Federation. I will also talk about this INFED because both are linked. This INFED is using this Shibboleth. Shibboleth is a standard-based open source software package. It is a web-based single sign-on system, which is also known as SSS. It is a single sign-on system made up of 3 components. We need to set up an IDP. IDP means identity provider, who is responsible for user authentication. Your IDP server is authenticating the users and providing the user information to the service provider. So IDP need to be set up when we are implementing this Shibboleth. Located at the home organization. Suppose you want to, if you want to implement this Shibboleth or INFED, the server will be in your organization. So in which the organization maintains the user account. Suppose you are implementing, so the server will be in your custody. Open source software that provides single sign-on infrastructure. It is usually installed and managed by the institutions. Now talk about the this INFED, which is known as Internet Access Management Federation. This federation has adopted Shibboleth, which is the standard-based open source software for authenticate the authorized users from the institutions. आपके institution में जो भी user authorized है, उनको authenticate करेगा और उनको जो भी आप services provide करना चाहते हैं, उनके लिए permit करेगा. It provide the seamless access of electronic resources. The main objective of INFED is to allow users to access the internal and external resources seamlessly using the single institutional control identity. So this is the main objective of this INFED, and currently Internet is the authority who is helping and supporting to implement this INFED system in the institutions. So how they are supporting? They are supporting to install IDP, and then SP installation, which is service providers means publishers, hosting services, server space and installation, and also the configuration to the institutions and libraries. These are the 3 things which are supported or helped by the Internet Center Gandhinagar. Now, we have implemented this INFED in our institutions. So
What are the steps which are involved? First one is connect to Internet Center Gandhinagar and check the eligibility, because all institutions are not eligible to get the help or support from them. So you have to find out whether your institution or your college you are eligible for getting the services or not. So first thing is that. Second one is you need to, if you are eligible, then what to do is you need to see where you are going to install your server. So IDP installation is important. It may be on cloud or it may be physical server. Third one is contact publishers for integration. If you are subscribing 30 resources from 30 publishers, you need to contact to individual publisher and get the required details which are required for integrating that particular resource, because they the Internet Center, they have some standard fields, some standard criteria which are and the information is required from the publishers to integrate the resource. So that information need to take from the publishers. And next one is integrate that resource with the IDP with the help and support from the internet. In this, these three or four steps, you need to take help from some of your computer person, because if you are installing a server in your college or in your institution, to set up a server, and for 30 resources, you need to mention all kind of guides how they should access the resources, and convey that details to the users, how they should use that infed you have to convey to your users. So these are some of the steps. This is one of the screenshot which is from the parichai.implement.ac.in, which is the website from where you can go through how you can take the help of Internet Center Gandhinagar. And this is also one of the screenshot from that site only. Currently, there are 171 institutions which are using this infed with the help and support from the Internet Center Gandhinagar. Whenever you implement this infed system in your institution, you will be able to find all kind of logs, all kind of logs, who is using which resource or from which ID, which IP. You will be able to maintain complete logs. You will also be able to find out the usage reports for the resources which you have integrated with the infed system. You will be able to find out the usage reports as well. Now, who can join? They have three categories of users who are eligible. First one is universities and CFTIs, or the institutions which comes under 12B or 12F under the UGC Act 1956, or IITs or NITs or ICERs, means complete CFTIs. They are eligible for getting the membership of this infed system from Internet Center Gandhinagar. Second one is colleges. All the government colleges, government-aided colleges under 12B and 12F section of UGC Act 1956. They are also and they are getting the resources from Analyst program of Internet Center. They all are eligible for the membership of infed. And third one is private university or colleges. So this is depending on them whether they will be providing access or not, but most probably they are giving the access after getting the approvals from the authorities. Next one is yes, how to join. Now you visit this website, which I have already discussed, this parichai.implement.ac.in. So this is mentioned over there. You visit this website, you will get the details, how to join, how to apply for membership, what are the rules. If you got the membership, you need to sign some agreement with the Internet Center Gandhinagar. These are some of the screenshots from different publishers. It looks like that whenever you are
visiting of any publishers will show you like that, like Siboleth, Open Athens, or whenever you search by login of your institutions, it will show you the different federation, and InFed will also be there. Like the publishers website of one publisher is Xavier. Whenever you visit them, their website, you will see the various options of remote access, and if you search India, you will also get all the libraries which are there connected with the individual remote access tool. You can see this slide. I mentioned two screenshots. One is from IIT Delhi, second one is IIT Madras. There are a number of institutions which have implemented this InFed system. IIT Guwahati is also implemented. There are the institutions which have already implemented this InFed system for accessing the resources, subscribed resources, or some of the other resources from this IDP page. These are the resource login page. Whenever you click on individual resource, you will find this kind of resource login page, and here user need to fill their credentials. They need to fill the username and password, because it will authenticate first. If they are not putting correct username and password, it will not take further. And if they are the authorized user of the institution, it will take to the access of the particular resource. So this was overall about the InFed system. Now next one is EasyProxy. Now thousands of libraries are using this EasyProxy to facilitate the seamless access of reliable access to electronic resources. This is the product of OCLC, a middleware that authenticates the library users against the local authentication system. It provides remote access to licensed content based on the user's authorization. System is almost same, because all systems are first authorizing the user, whether user is authorized user or not. So system is almost same in all kind of remote access tools for authorization of users. It allows libraries to deliver e-content to the users simply, effectively, and securely, no matter whether you are in the campus or not. You are in the campus or not, or whatever you are searching. It is no matter. Built for libraries to protect user privacy, making it trusted user resources, access, and authentication solution for nearly 20 years. It connects users to e-content with single login. EasyProxy features are like it makes authentication easy, keep subscribed library content secure, maintain library control and trust, and ensure access with less overhead. These are some of the important features of EasyProxy. It's a turnkey service that extracts, enrich, and transforms complex data into simple virtual dashboard, making it easy to better understanding, connect users to the single login system, SSS. So it is very easy to connect if you are using EasyProxy. So this is the overall system of EasyProxy. It has three components: the library network, EasyProxy server, and content provider. So how it is connecting this screen showing how the query is moving, and finally the user is getting the results. So first thing is user is putting the query, then request from full text is going, it authenticating the EasyProxy servers is authenticating the users, then checking the IP address, etc. And finally, it is going to, if it is matching, then it is the publisher website or content provider website is providing the content to the users. And finally, it is moving to the users. These are the modules of this EasyProxy. First one is resource management, second one is user management, and third one is usage statistics. So you can manage the resources, you can manage the users, you can manage the usage. So if three things are managed, then it is a complete module of accessing the resources. This is the screenshot from OCLC. There are a number of analytics which are
which can get from the Easy Proxy analytics. Like you can see this, there are beautiful charts you can get out of this Easy Proxy analyticals. These are some of the institutions which are currently having this Easy Proxy, like the Ambedkar. Now, next one is Open Athens. This is also one of the remote access facility which is widely used. Open Athens is an identity and access management service from GISC, which is a British company. And identity provider, which is IDP organizations, can keep username into cloud or locally. There are both options. You can keep your server on cloud as well as in physical mode. Over 2,600 organizations are using currently Open Athens software across the world, equating to worldwide network of millions of end users. Open Athens offers a single sign-on. This is also SSS authentication service to access the library's subscription-based content. Open Athens is delivered as a cloud-based solution. These are some of the features of Open Athens. It is easy access with one username and password. User can log in from anywhere. Once user accounts are set up, administrators have access to all easy-use dashboards to manage users and access. So there is seamless of access of account management, secure access. You can get number of usage statistics reports or data. That is very important now. So all these features are there in this Open Athens. This is one of the screenshot how it looked like when you log into any publisher page. You will see the institutional access methods. So Open Athens, Subunit, or other methods are showing by the publishers. So if you have Open Athens access, just click on Open Athens and put your username and password. There are a number of institutions which are using this Open Athens, like AICTE Trivandrum, IIM Kasipur, and also AIMS New Delhi. These are some of the institutions, like IIM Lucknow is also there. So these are some of the institutions which are currently using this Open Athens facility for providing the remote access facilities to the user. Now, next one is RemoteX. RemoteX is also one of the remote access facility, commercial facility, which has ability to provide secured access to scattered e-resources of the institutions. This RemoteX brings all the resources under one umbrella. You can integrate all the resources which you are subscribing, also the subscribed and non-subscribed, all kind of resources, along with the subscribed journals, ebooks, and all kind of other content that you anytime from anywhere you can access. These are some of the features, important features of RemoteX, like management of dashboard. You can manage all kind of activity on a single screen. Secure and dependable. It is very much secure and dependable. Reporting modules for decision making, like in other remote access tool. This remote access also having the facility to generate different kind of reports, which helps a lot while you are renewing the resource, because at the time of renewal, you require a lot of data to analyze it and finally go for the renewal. It may be dropped or it may be renewed. Integrated email services. It allows administrator to easily and send the system generated emails messages to the users. It is flexible, user category based resources, grouping and access to the resources. It is responsive, multimedia capability to provide SDI services. So this is one additional facility which is there in this remote access, RemoteX. Libraries and publishers can classify content to increase the resources usage by displaying videos, presentations, images, articles, document relevant for the specific category of users. So this facility is very important. You can, if you are using this RemoteX
facility, you can get benefit of this also. These are some of the screenshots of RemoteX. It is easy to use admin dashboard. It has comprehensive report modules, serve e-content from single portal. So these are some of the institutions which are currently using this RemoteX. I am Ahmedabad, I am Kozhikode, I am Udaipur, ISI Kolkata, I am Gurgaon, number of new ITs. And I mentioned few of the institutions. There are a number of institutions which are using this RemoteX facility for providing the off-campus access to their resources. This MyLoft is also one of the software which is providing you a single the library on fingertips and providing your resources from remotely. SpringShare is also one of the software which can be used for providing this remote access facility to the users. This is how this is authenticated. And there are certain rules which are very much required if you are using this remote access facility. So when you are making some usage policy, what kind of resources, how you should access the resources, how much download is allowed, all kind of points are included in electronic resources usage policy. So that policy will be there whenever you are either you are accessing the resources using remote access or directly from the library. So that usage, electronic resource usage policy will be there. It should not be, you should be very careful, and you should convey to your users that although you are accessing your resources from remotely, but that policy is there. So remote access is strictly personal and should only be used for personal study or research purpose. Commercial use of data, maybe systematic downloading. Sometimes systematic downloading is a big problem for the institutions. So you should always convey to your user that you should follow all kind of guidelines for usage, for using the electronic resources. Never share login credentials with anyone. You should not share. Use strong and memorable passwords. Preferably use only institutional email. If you have your institutional email ID, you should use your institutional emails for remote access. Should use only administrator profile to update profile or make system changes. So these are some of the rules which are there for providing this, helping the remote access. These are some of the references from where I've taken the data. Although I've already mentioned the links in my slides, but I'd like to express my sincere thanks to all the resources from where I've taken the data for preparing this presentation, because this is completely for academic purpose. So I've taken a number of screenshots from different websites, different sources. So I acknowledge all of them for the resources which I have used for making my presentation. So this is all about from my side on this remote access tools. There are a number of other tools I have not mentioned, but there are a number of tools which are available. And being a user, it is your choice. Whatever you want to implement in your institution, you have to analyze first. I would like to mention here that if you are going for any commercial remote access tool, first you should try to take the trial access of that. Actually, you should try to. It is not very easy, because you need to integrate all the resources. You should see whether that particular remote access provider is able to integrate all your resources or not. Because if they are not able to integrate all of your resources, it will be a problem for you. So you should always keep in mind that whenever you are choosing any remote access facility, because there are a number of facilities are in the market, so whenever you are choosing any facility for remote access, you should see whether they are able to integrate all your resources which you have in your library or not.
And secondly, you try to take you try to take trial access for certain time and try to get the overall usage, and you see how many features are there, what kind of features are there, whether that is helpful for you or not. So you should always try to take those things whenever you are selecting, you are going for any kind of remote access tool. So this is all about from my end. Now over to you, Mohit. Thank you so much, Dr. Chaurasia. This was really informative. We have covered everything from the basics of remote access to available solutions in the market. And I understand, I mean, some solutions you might have left out, but I mean, it's an open market, and the librarians must do their own research before deciding a solution for their library. But the solutions you mentioned, all of them are very stable, scalable, and reputed platforms. So thank you so much for the this quick overview. I request all the participants to please raise whatever questions you have, make full use of this opportunity. And I understand I did a very small poll yesterday in which I asked many librarians in this audience, those who do not have remote access service. And out of 26 librarians who are not a part of RGPV community, 14 don't have any remote access service installed so far. So I think this is the best time to ask any questions that you want to. Any questions? Otherwise, I'll ask mine. Okay, please type in your questions in the chat box, and I am allowing you to. Yeah. Okay, sir. One question. University subscribes to many resources, and then there are self-published or institutional e-resources available as well online on repository or through this e-library platform or even remote access. And users are using it from their home and mostly from locations that a librarian or any software for that matter cannot keep 100% track of. So that can lead to copyright violation. And is there anything that a library can do to prevent such scenarios? Anything that can be done? So, for an example, I set up. Let me put the user's question in context. Let's say I have set up remote access. I've given access to my users, and then they share their user credentials to their friends, right? So, which is in fact a copyright violation in terms of the access might go to users who are not affiliated to your university. So, what kind of preventive actions can be taken by the library? Now you see, I mentioned in my last slide that the guidelines for accessing the electronic resources is same, right? So I mentioned in my last slide that if you are having electronic resources, you should have the policy for accessing the electronic resources. And whenever you are implementing any kind of remote access tool, this would be the same kind of guidelines would be there. If you are providing the access of any resources. So basically, as a librarian, what we should do is we should convey those guidelines, or we should train to our users. We should educate our users about the guidelines of accessing the resources. Because I can share one example of our institution. It was sometime in 2016, I remember. One of our user downloaded 15,000 articles from one publisher within 10 minutes of duration. Okay. Yes. Then when and the access of our resources were discontinued. It was a big publisher. Access was discontinued within 15-20 minutes of downloading. Yeah. That user has already downloaded about 15,000 papers from a single publisher, and within 10 to 15 minutes. Yeah. And then when this discontinuation was happened, one email was sent to us, to administrator, that this resource has been stopped for
sometime because of this illegal activity which doesn't come under your agreement, because whenever we are getting the access of any resource, we are subscribing the resource, we are signing agreement with the publisher. So they have given a form which says a lot of points, and finally when we start this finding out the people who has downloaded it, we found that one of the students, which was from one of our hostel, he has downloaded the complete 15,000 papers. We asked that student, and inquired the things. हमें पता चला कि वो उसने नहीं किया था, उसने अपने लैपटॉप में अपना प्रॉक्सी का जो सिस्टम का जो आईडी एंड पासवर्ड है वो डाल करके किसी अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिया था जो कि उसके यहाँ आया हुआ था. He started putting some metacrawler software and start taking the downloading the all kind of papers. So आप यहाँ पर देखिए कि हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना कुछ गाइडलाइन है. वो गाइडलाइन उसमें जो हमें लगा, जो उस टाइम पे हमें करना चाहिए था, हमने कुछ उसके ऊपर बैन किया, उस दिन के लिए लाइब्रेरी में बैन किया, कुछ उसके ऊपर और भी एक्शन लिए गए. क्योंकि ये whenever you are giving any kind of username password officially to any user, it is bound to have some of the policies. There are some of the policy that should be keep in mind. और सर का आंसर मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं I want to inform all the participants that no matter which remote access service you use, I mean as long as it's a credible and an established service, commercial हो या open source हो या Infinet हो, every one of these services have inbuilt provisions to track कि कहाँ से यूजेज हो रही है, किस हिसाब से यूजेज हो रही है, क्या अगर एक ही अकाउंट मल्टीपल आईपी से कभी भी यूज होता है, मल्टीपल लोकेशन से कभी भी यूज होता है, तो इट फॉल्स अंडर द इन द ट्रैकिंग. इट इज फाउंड वेरी इजीली बाय द सर्विस प्रोवाइडर कि ये अकाउंट यूज हुआ है, शेयर हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में या किसी बाहर वाले से, एंड करेक्टिव एक्शन कैन इजीली बी टेकन बाय द सर्विस प्रोवाइडर एंड द लाइब्रेरी. तो मैं सर की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ. उसके बाद सर कुछ क्वेश्चंस हैं. वन क्वेश्चन इज फ्रॉम is there any policy for private colleges to use remote access of government institutions without paying? I think this is in context of INFED कि जो private institutes है क्या वो INFED का लाभ उठा सकते हैं? मैंने उसमें मेंशन किया है, ईमेल आईडी भी है, आप parichai.imprimnet.ac.in पे जाइए and just try to just write an email. They will reply you whether you are eligible for that or not, because they have some eligibility criteria. If your institution falls under that, you will get the access, you will get the membership of that, and if you are getting the membership of that, they will help you to integrate your resources for setting up the INFED system institution. सर नीरज सर, हम आईआईटी के अंदर आपने कैसे निर्णय लिया और आप किस तरीके से रिमोट एक्सेस सर्विस अभी अपने यूजर्स को दे रहे हैं? व्हाट इज द प्रेफर्ड चॉइस इन आईआईटी? नहीं, देखिए, it was a sudden implementation because we were accessing some of we were discussing some of the facilities for implementing, but during the lockdown it was just decided within a 15 days time when this lockdown happened. So we just there was no time. We start this facility because there was this was available free of cost. So we have contacted this Internet Center. It was easy. They have helped a lot, and publishers supported a lot. And finally, we could implement all these resources, and it is very successfully running. It is very successful. Okay. Wonderful. So even the publishers which are not part of eShow Sindhu, they can be integrated and yes, very much. It could be ebooks, it could be journals, everything. Yes, everything. Wonderful. So one more question, sir, restriction लगा सकते हैं क्या user के लिए कि I think this is pretty easy to answer. Sir, बताइए please. Yes, there are number of things. If you go through the desk, if you're talking about any individual, like in RemoteX or other commercial software, there are a number of facilities. If you go through the desktop, dashboard, there are a number of facilities for the administrator. You can manage according to yourself.
So Shubham, you can actually implement restrictions like कि एक दिन में कितना डाउनलोड हो सकता है रिमोटली, कर सकते हैं, कौन सा यूजर कर सकता है, कौन सा नहीं, कौन से रिसोर्स पे रिमोट एक्सेस देना है. इनफैक्ट सभी इन्हीं सॉफ्टवेयर में आप यूजर्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड फॉर ईच ग्रुप यू कैन हैव अ डिफरेंट रिमोट एक्सेस पॉलिसी. सो इट इज most of these softwares are designed like that to give the administrators all the flexibility they need. ओके, जयंत देश पांडे जी ने इस टॉक से थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा है सर, अगर आप थोड़ा उस पर रोशनी डाल सके. व्यू फाइंड के बारे में वो पूछ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सप्लेन व्यू फाइंड ऑल्सो. देखिए आप अभी डिस्कवरी की बात करेंगे तो डिस्कवरी, क्योंकि व्यू फाइंड की जब बात करते हैं तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. मीन्स आप उसमें जो भी ई रिसोर्सेस है कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, from trial access up to discontinuation. So there are number of steps which are involved in complete life cycle of electronic resource. आप स्टार्ट करते हैं जब डिसीजन से लेकर के क्या रिसोर्स आपको लेना है, इसके बाद आप उसको ये एनालाइज करते हैं, ट्रायल एक्सेस लेते हैं, ट्रायल एक्सेस के बाद में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसका लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, इसके बाद इनवाइसिंग करते हैं. तो देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड in subscription of a individual resource, electronic resource. So Viewfind will provide you the facilities to manage it electronically, because if you are missing any of the step out of your this life cycle of electronic resource, then you will be in trouble. So the Viewfind or any other software will provide you all kind of steps in a computerized manner. So it is automatic kind of software which will provide you to manage the complete life cycle of any resource. Okay, so let me just once check कि और कोई questions ना हो, and then we will end this session. काफी लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया. एक सर पीपीटी मांग रहे हैं, तो उसके लिए हम एक पॉलिसी डिसीजन इंटरनली बाद में लेंगे. ओके, वन क्वेश्चन. हाँ, प्लीज. यू वर सेइंग समथिंग सर. अगर कल का है कुछ, कल का भी पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी कुछ डाउट्स हैं. ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम कल बात कर रहे थे, एच इंडेक्स हो, आई10 इंडेक्स हो, कोई भी हो, जैसे चंदेल साहब बता रहे थे. तो अगर कल का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ रह गया है, तो दे हैव टाइम टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज है अगर क्वेश्चन कोई तो उसका वही अभी जवाब दिया जा सकता है. अगर कोई भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सर, अलग से है वो, मुझे नहीं लगता कल के सेशन से है, बट एक क्वेश्चन है कि अगर हम ओपन एक्सेस रिसोर्सेज अपनी लाइब्रेरी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो डू वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम दीज ओपन एक्सेस पब्लिशर्स? मेरे ख्याल से नहीं, बट आप बताइए. No, it is not required because it is already available in open platforms. So what you are doing, you are just giving the links of already available, and you are not commercializing it. It is purely for the academic purpose. So I don't think any kind of. तो आपको मेरे ख्याल से ये जया भारती जी का क्वेश्चन था, जय भारती कश्यप जी का. तो जय भारती जी, आप अगर उस साइट के नीचे देखें, फुटर में ना हमेशा कॉपीराइट स्टेटमेंट लिखा होता है छोटा सा. तो अगर वो सीसी है, क्रिएटिव कॉमन्स बाय एनए है, तो सिर्फ आपको उसे अपनी वेबसाइट पे डालना है, बट नाम जरूर दे दीजिए कि मैंने ये सोर्स कहाँ से लिया. अगर आपने प्रोजेक्ट गुटनबर्ग से लिया तो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग को क्रेडिट दे दीजिए. अगर डीओजे से आपने कोई जर्नल लिस्ट किया है तो डीओजे को क्रेडिट दे दीजिए. जब तक आप क्रेडिट ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, 99.999% ऑफ द टाइम कोई भी चैलेंज नहीं है. नहीं कर सकता जी. सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आज की प्रेजेंटेशन के लिए. एक चीज मैं सब यूजर्स को बताना चाहूंगा, मैं होस्ट हूं तो मेरी मर्यादा मुझे नहीं अलाउ करती कि मैं कुछ प्रमोट करूं, बट फिर भी सर ने जितने भी सॉफ्टवेयर्स बताए, इसके अलावा 2 और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो रिमोट एक्सेस के साथ साथ और भी सर्विसेज का एक्सेस आपको मिल जाता है, जैसे कि रिमोट एक्सेस प्लस डिस्कवरी प्लस मोबाइल ऐप प्लस ओपन एक्सेस कंटेंट. तो आप आरजीपीवी ई लाइब्रेरी की जब हम इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे, तो मेरा सभी से अनुरोध है, इंक्लूडिंग चौरसिया सर, आपका जरूर उसमें पार्टिसिपेशन चाहिए, बिकॉज आपका फीडबैक हमें आगे लेके जाएगा. हमने जो भी अचीव किया है उसमें हमने भी रिमोट एक्सेस सेटअप किया है. एंड दिस इज माय कंपनी रेफीड सॉल्यूशंस. तो वी आर रनिंग इन अबाउट 400 campuses right now,
and we have implemented remote access on more than 288 publishers as on date. So as on date, we have never faced an issue with any publisher. In fact, some really tricky ones, जैसे कि legal databases थोड़े से मुश्किल होते हैं सेटअप करने, हमने उनके लिए भी फेडरेटेड सर्च प्लस रिमोट एक्सेस सेटअप किया है. एंड आई एम श्योर डॉक्टर नीरज चौरसिया सर को भी मैं हमारा थोड़ा सा लिटरेचर भेजूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भी उसे क्रिटिकली एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये प्रेजेंटेशन दें तो you can also critically review us and see if we are good enough to be a part of the presentation or not. Right. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद Right. करूंगा. Sure. और आपके चैट बॉक्स में if you see there is a feedback link for session number 9, Neeraj Chaurasia sir's talk. Please fill out that form. Please use it as we'll be using it as your attendance for the session. So please submit your feedback for this particular session, and whatever queries you have related to remote access or otherwise also, I am sure Dr. Neeraj Chaurasia is very accommodating. You can reach him on his official email address and ask for his suggestions, for his feedback, for his guidance on how to take such initiatives forward. Otherwise, I think this talk was wonderful, and we will be connecting tomorrow. Neeraj Chaurasia sir, again, on the behalf of RGPV, on behalf of refereed AICTE, we thank you so much for taking out the time, and we hope you will be attending sessions, coming up sessions as well. Especially the one in which we will be demonstrating RGPV library. We will need your august presence and your feedback. Sure. Thank you so much. So the link is already in the chat box. Please do fill that out. We will be closing this meeting after 5 more minutes. Thank you so much, sir. Thank you. So we are closing the session now. Thank you all the participants, and we will come back tomorrow at 10:30 a.m. You will have the Zoom meeting link on your email by between 8 to 9 p.m.
Thank you so much for your participation today. See you tomorrow.